once again wishing everyone all the very best for all the cricket players, all the cricket teams participating in this cricket tournament. Good morning, everyone. And along with me, I have my long-time commentary partner as well as my best friend, Mr. Gopi. He will be the commentary partner for day number 2 of this prestigious cricket tournament. So everything is ready here. The match just coming back to this tournament, and the rules and regulation of this cricket is concerned. Both the teams need to be follow the rules and regulation for this JD Boys Trophy 2023. The match will be of 6 overs, and 6 overs. The 2 overs will be the power play. Hello. Welcome to King Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. The signal, please note the time. Hello. Because the time sense is always key here for the success. And 9:41. So 9:41 is a time which is noted, and that means the team need to complete their the quota of 6 overs within 27 minutes. The first ball outside and on back stump, batsman going for the drive, missing it completely. The wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. Taslim is one of the most popular as well as very experienced campaigner for Team Matrix. Outstanding career he has got. And he's bowling away from us. Right arm over the wicket, going for the sweep shot, missing it completely. Good start there from Taslim as always. The experience is definitely going to count it here. It's not easy to come and bowl in the power play overs, especially in this particular cricket ground. And it's definitely going to be a little bit of encouragement in the morning session for the bowler. Here is Taslim again. Right arm over the wicket, drives that one down to mid-wicket region. Protection has been given in the deep mid-wicket so that batter have to settle for the single. With that single, they started their journey. It's one without loss of any wicket in the over number first in progress. So for the latecomers, you are watching the match number 1 of this day number 2 of this prestigious cricket tournament. Sporting guys Arla are batting fast here. This time outside the run break stump. Batsman tried to flick that off his legs, missing it completely from the bat. But umpire not missing to get the first exercise of the morning as he signals leg bye. So with that leg bye, scoreboard now moves on to 2 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Taslim again bowling with a short run up. Away from us. Right arm over the wicket, delivers. Going for the drive. Almost looks like he will going to drag the ball into the stumps. But it is luckily that ball just missing the stumps.
Little bit movement of the feet. Taslim just testing the batsman with that line, with the off stump. Little bit going outside the line of off stump. Batsman not quite able to get that right from the middle of the bat. He's got a little bit inside edge of the bat. No problem whatsoever as far as the fourth ball is going to start here. Again, that going to be a wide, second wide of this correction, second extra of this over. The first wide of this over. Leg by wide call by umpire. With that extra score, Namuzan to 3 on the board without loss of any wicket. Taslim again bowling away from us. Right arm over the wicket delivers. This time bowler's back drive, but not for run. Not enough power behind the stroke. Not enough timing in that shot. Fantastic over there from Taslim. The first over itself is right on the money, right on the target. 3 runs which is conceded in the first over, and all that 3 runs which is came in the form of leg by, and 1 which is a wide, but only 1 which is a batsman scored. Nawaz, and we have one more commentator for this cricket tournament, and local hero, very experienced commentator, Prashant Bantwal. Yes, good morning to Prashant Bantwal to welcome for this cricket tournament. Next one is outside the line of off leg stump, in fact, and it's a little bit morning exercise here from the bowler as well as from umpire. As the bowler not really getting that line in the first ball itself, it's going to be a warm-up delivery from Nizam, and one more run is added to total. 2 more to the added to total, because 1 + 1 they're going for the extra run. With that couple of runs covered, Namuzan to 5 on the board. Nizam bowling away from us. Right arm over wicket balls, boys. But this time batsman going for the drive. Wide call by umpire. That ball is just going a little bit away from little fractionally. That ball, the line of that ball, the wide line which is marked in that pitch ball, just going away from that ball line, and rightly so umpire called it wide. Going for the drive, and this time again he didn't got enough bat onto that. That got a little bit outside edge of the bat. And the wicket keeper off stop. There is no chance at all for any run. Score remains on 6 on the board without loss of any wicket in the over number second in progress. Nizam once again back to his bowling mark. Right arm over the wicket passes umpire Mohan Yade. Again that ball is going away outside the line of off stump. It's going to be a shackling start here for the bowler in the second over as he bowls 1 more wide, so that Sporting getting some runs in the form of extras. So with that extra score, Namuzan to 7 on the board without loss of any wicket in the over number of second in progress. Nizam with the short run up, bowling away from us. Right arm over the wicket, balls beautifully bowled, perfect one in the irrigation. Just an whisker, that ball just missing the stumps, isn't it? That ball is not too far away from the stumps. Luckily that ball got a little bit missing the wicket, and there is no chance at all for any run. Nawaz a little bit struggling to get his natural rhythm. Now he's just changing his bat. Not happy with that the bat, so he's changing his bat. Wait and see after changing the bat. Will any in fact for the strategy for the batter and technique of the batter. Wait and see. So Nizam again bowling away from us. Right arm over the wicket balls. This time drives that one down to deep long on region for a walkable single. So with that single, Skabad moves on to 8 on the board. 8 without loss of any wicket. Very steady start from these opening batters. Especially they came back strongly in the second over. And that's only because of the bowler mistakes as they bowl some wide deliveries, extra deliveries. And because of that, runs are coming in the second over. It's 8 on the board. Now he's changing his angle. He wanted to come around the wicket to the left-hand batter. Mansoor drives that one beautifully right in the gap towards a deep mid-wicket boundary for 4 runs. First boundary of the day number 2 of JD Trophy 2023, and Mansoor is getting that one right from the middle of the bat. Beautifully driven. Nothing much wrong with the line, but you know exactly where the fielder is. Even the mid-wicket fielder is there, and he's just finding the gap. They're playing that one just wide of that mid-wicket region, almost in the wideish long on region, and with that boundary score jumps into 12 on the board. Appeal for leg before wicket. Umpire not interested, rightly so. Ball just missing. Leg by call by umpire.
One more addition to total. Good comeback here by both the batters. Sporting getting some good start in the second over, even though they failed to contribute in the first over of the power play, but they managed to get the runs in the second over with the extra, with the bat. And scoreboard is 13 on the board without loss of any wicket. Here is again bowler balls. Right arm over the wicket. Going for the reverse sweep. And luckily that ball just last moment is got a bat, the Mansoor, otherwise that ball going to hit the stumps, and luckily he survived from that ball, and after completion of over number 2, searching for the right track. Of course they are in a good track. Sporting guys Arla managed to get 13, that means 10 runs which is came from that over. The 3 in the first, 10 in the second, altogether 13, which is the total score of Sporting. And in 2 overs. Please note the fielding team, just like mentioned about, please note that you have to complete your 6 overs quota within 27 minutes, and that's the time which is extra already given. More times, 24 minutes I think is more than enough to complete the 6 overs, but at the same time the 2 minutes were given for as a grace time for you, so that I request the fielding team to make it past. No, don't waste the time. Tasleel will be the bowler. Now after that power play, the fielding restriction is off, so that we can see that 5 fielders in the deep, one at deep backward square in the deep square leg in front of square for the left hand, one at deep mid wicket, long off, long on is there, long off is there, deep extra cover, short third man, backward point, short cover point, short fire leg. Tasleel balls, cuts at once. Oh, misfield by the fielder. What could be a certain dotted delivery? The misfield by the fielder, so that the batsman picked up a single here. With that single, scored numbers on to 14 on the board without loss of any wicket. Sporting has really got a good start here from these 2 opening batters, especially the batter Nawaz and Mansoor. The Mansoor is the one who got a boundary. He's in non-striker zone, and Nawaz will go in to strike the strike. Driven that one nicely down to deep long on. Beautifully played it down to long on. Of course, that was sharp incoming delivery, but negotiated very well by the batter Nawaz. So with that single score, Namuzan to 15 on the board without loss of any wicket in the over number 3 in progress. Taslim once again back to his bowling mark. Team Matrix, they came into this tournament as one of the... It is back in the pavilion at the score of 16. It's the 16 for the loss of 1 wicket. Partnership is just broken by Taslim, one of the most experienced campaigner as far as the bowling department is concerned. And they're coming back to the Team Matrix. And last Sunday, the tournament which is played at UCG Cricket Ground, the Team Matrix actually done a great job, but unfortunately didn't qualify for the finals. But the performance is so good from Team Matrix, but unfortunately they are not able to convert that one into the, especially in the semi-final, they couldn't manage to perform very well. But the performance is so good. Taslim is the one is really outstanding in that tournament from the bat and ball. Now he's just continuing the performance in this particular match of this JD Boys Trophy 2023. Taslim once again back to his bowling mark. Meanwhile, I call upon 2 teams for the second match, KFC Kannur as well as Bedra Friends. Please report here immediately to sign the official chart. The first call for both the team. Appeal for leg before wicket, and is gone. Absolutely plumb in front of wicket. The batsman little bit across the line, tried to flick certain of his legs, and absolutely it might be the... So far there is no hat-trick in this tournament. Sinan is the batter. The hat-trick delivery here from Taslim. He can be the first hat-trick getter of this tournament. Right arm over the wicket, bounce. Beautifully balled. Equally well played there by Sinan. Right in the play. Good placement and good piece of fielding even, but not quite enough to stop the couple of runs. They're going for the... Oh my goodness! Chance of run out. But I think the fielder, little bit absence of mind. Opportunity was created in the non-strikers end, because the non-striker is really running towards the strikers, and that time striker is not responding. Sinan is going towards non-strikers end, but the fielder tried to hit the stumps in the strikers, and 3 valuable runs in the last delivery of that over. So 3 overs completed after completion of over number 3.
searching for the right track. Sporting got the good start here. 19 without loss of any wicket. And before the next over going to start, it's the time to change in commentary box as well. I would like to invite my friend Mr. Gopi after 1 year, especially in this SBS cricket ground, because we are always having a sweet memory of having sharing a mic in this prestigious cricket tournament. JG Boys Trophy is always going to be a prestigious tournament and prestigious moment for all of us as well. So welcome Gopi. Once again, it's going to be a fantastic cricket tournament, and 19 in the first 3 overs. That means Sporting Japa has got a good start and by losing 2 wickets. And if it same run rate, if they're going to progress, they will going to get some competitive total against very formidable team Matrix. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, सारे दर्शकों का मैं को भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो निस्संदेह ठीक 1 साल बाद इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला जेडी बॉयज 2023 में हमारी मुलाकात यहाँ पर हो रही है। निस्संदेह यहाँ पर रब चौथी ओवर की पहली गेंद, यहाँ पर गेंद को उछालना चाहता, गेंद पैर पर टकराया। जैसा कि आपने फरमाया सतीश, बिल्कुल सही बात है। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट जेडी बॉयज 2023, जेडी बॉयज ट्रॉफी 2023, और इसका शानदार तरीके से इस श्रृंखला का आयोजन किया है जेडी बॉयज़ ने। और निस्संदेह यहाँ पर एसवीएस हाई स्कूल के मैदान के साथ मेरे कई पुरानी यादें यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और निस्संदेह यहाँ पर कमेंट्री देना, आंखों देखा हाल सुनाना एक विशेष अनुभव देता है। इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑफ के दिशा में, फील्डर गेंद के नीचे आते मिड ऑफ पर, मिस जजमेंट की बदौलत यहाँ पर बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। लॉन्ग ऑफ के फील्डर दौड़ कर आए थे, मिड ऑफ से भी फील्डर दौड़े, लेकिन आखिरकार यहाँ पर फील्डर समझे कि दूसरे फील्डर कैच पकड़ेंगे, और लॉन्ग ऑफ के फील्डर सोचे कि एक्स्ट्रा कवर के फील्डर कैच लपकेंगे, और इस बीच गेंद उन दोनों के बीच टिप्पा खाते हुए, और बल्लेबाज के पास इस बीच मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 22 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। गेंदबाज एजाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा शॉर्ट टर्न की दिशा में 2 कदम जरूर आगे बढ़ाए, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि वहां पर फील्ड की जा चुकी है, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। मैच नंबर 1 जेडी बॉयज ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत यहाँ पर शुरू हो चुका है इस श्रृंखला का, इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन, और इस वक्त मुकाबला यहाँ पर जारी है। यह गेंद इस बार गेंद समझो पर टकराई शायद, लेकिन बेल्स ऑफ नहीं हुए। सरप्राइजिंगली इस वक्त आश्चर्यचकित रह गए विकेट कीपर कि गेंद लगने के बाद भी बेल्स क्यों वहां पर डिस्टर्ब नहीं हुए। तो भाग्य इस गेंद पर बल्लेबाज का साथ देता हुआ, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 22 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक सवाल है, मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया था कि फॉर्मिडेबल बैटिंग लाइनअप जो है टीम मैट्रिक्स, तो उनके खिलाफ अगर गेंदबाजी करनी है तो उससे पहले बल्लेबाजों को एक लंबा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना होगा, और यहाँ पर कोशिश जारी है बल्लेबाजों द्वारा। स्पोर्टिंग गाइस, और इस बीच अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, गेंद नॉट क्वाइट मिडविकेट एट द लास्ट मोमेंट, इन फैक्ट ही गेट्स एन सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और 1 रन के साथ कुल स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। तो यंग बॉयज अरला इस वक्त बल्लेबाजी करता हुआ, स्पोर्टिंग गाइस माफ कीजिए, अरला इस वक्त पहले बल्लेबाजी करता हुआ, और इस बीच गेंदबाजी अपनी आगे बढ़ाते हुए इस ओवर में अंतिम बार एजाज की गेंद को खेल दिया, इस वक्त स्कूप कर दिया है कि डीप कवर पॉइंट पर गेंद पहुंची। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दूसरा रन बल्लेबाज यहां पर पूर्ण कर चुके, तेज रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा। Just completed a single run very quickly and come back for the second run very safely in the end, and because of that the batsman got a couple of runs for that stroke, and over number 4 has been games to an end। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 25 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर, और कुल मिलाकर अब उनकी पारी में 2 गेंदें बाकी है। एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच, the next match will be played between KFC Kannur versus Bedra friends, and because of that I request all the players of these 2 teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ KFC Kannur ಹಾಗೂ ಬೆದ್ರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು। सो 5th ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स, 5वां ओवर शुरू होता हुआ, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए हकीम, जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए मंसूर, नॉन स्ट्राइक रेट पर मौजूद सिनन, और ओवर की
पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार हकीम गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और फील्डिंग में इस वक्त जमावट चलती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर 5 खिलाड़ी ठीक सीमा रेखा के पास तैनात लंबे स्ट्रोक्स रोकने के प्रयत्न में ये गेंद इस बार एक्स्ट्रा क्विकर गेंद बहुत ही बेहतर तरीके से आई थी इस वक्त और जिस तरह से इस श्रृंखला इस टूर्नामेंट के लिए पिच इस वक्त बनाई गई है निस्संदेह काबिल तारीफ दाद देने होगी पिच क्यूरेटर की। और देखिए किस तरीके से तेज रफ्तार के साथ गेंद इस वक्त बल्लेबाज की ओर आ रही है। देखिए इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट बेहतर स्ट्रोक इस वक्त बल्लेबाज का और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। मिस जजमेंट कवर पॉइंट फील्डर द्वारा गेंद तक पहुंचे थे लेकिन आखिरी मौके पर गेंद पर अपनी नजर हटा। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले एक्चुअली व्हाट वाज हैपेंड एट द मिडल ऑफ द पिच एंड ही ड्रिवन दैट वन बट एट द लास्ट मोमेंट slight bit of misjudgment and because of that the batsman got a boundary for that और इस चौके के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। तो जैसा कि मैंने और सतीश ने फरमाया था स्पोर्टिंग का इस आरला को अगर यहाँ पर एक चुनौती भरा लक्ष्य खड़ा करना है तो बेहतर बल्लेबाजी देनी होगी क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाजों को। और फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त यार बाएं हाथ राउंड द विकेट ये गेंद चिप गया स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड इनटू द गैप एंड अ 6 runs into the account of the batsman. He just caught that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style between long off and a long on at straight hit area and he's got a maximum for that. Have a look at this in the replay. Just caught that one right from the middle of the bat and scooped it that one in a style over straight hit area between long off and long on and because of that he's got a maximum for that। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर। मंसूर के बल्ले से छक्का इस वक्त लग चुका है बेहतरीन बल्लेबाजी एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार मंसूर। हकीम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट ये गेंद इस बार गेंद को चिप किया लॉन्ग ऑफ पर लेकिन इस बार फील्डर मौजूद नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ कुल स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 36 रनों पर 36 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर प्रगति यहाँ पर करता हुआ स्पोर्टिंग गाइस आरला। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का तो हकीम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं बाएं हाथ राउंड द विकेट स्वीप किया इस वक्त नॉट क्वाइट मिड विकेट है लास्ट मोमेंट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। रन्स आर कमिंग क्वाइट फ्रीली नाउ फॉर स्पोर्टिंग गाइस आरला। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए हकीम बाएं हाथ राउंड द विकेट ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा गेंद इस वक्त टकरा चुकी है स्टंप्सों पर इनसाइड एज ऑन टू द स्टंप्स अपने स्टंप्सों पर गेंद को खींच लिया था जस्ट ड्रैग्ड ऑन टू द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट और एक बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है यहाँ पर मंसूर का। Have a look at this in the replay. Actually क्या हुआ था he's got an inside edge on that and the ball after being hitting his inside edge it stuck to the stumps. Belts are disturbed and that is the wicket number 3 and a fantastic innings from Mansoor has been came to an end and third wicket down and now they are 37 for the loss of 3 wicket. Mansoor ने बेहतर 20 रन बनाए थे scored 20 runs into his credit and a fantastic innings of him came to an end. Sarfraz, the number 5 batsman, is now coming out to the middle. और इस वक्त ओवर की समाप्ति हो चुकी है 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है अंतिम ओवर का खेल बाकी और गेंदबाजी इस वक्त नंबर 22 के जर्सी पहने हुए गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए मुस्तफा और फील्डिंग में इस वक्त जमावट चलती हुई एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट इस वक्त तैनात 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर इस वक्त मौजूद। ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार मुस्तफा स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए सिनान और दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार एक्स्ट्रा क्विकर लेकिन गेंद को फेंकते ही जमीन पर फिसल कर गिर पड़े इस वक्त। हालांकि वहां पर जब कभी भी मैदान पर मौजूद कंकड़ या पत्थर पिच में आता है तो पिच अपने आप फिसलने लगता है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से पिच को सजाया गया है बनाया गया है तो वहाँ पर कुछ भी धूल मिट्टी आने की वजह से मिट्टी कहना पड़ेगा आने की वजह से वहाँ पर पिच जो कि गेंदबाज पिच पर फिसलने लगता है और यहाँ पर पहला निदर्शन इस टूर्नामेंट में हमने देखा इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर और एक वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 38 रनों पर। किंग स्पोर्ट्स द्वारा एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है इस श्रृंखला का इस टूर्नामेंट का और फिर से एक बार मुस्तफा गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद चिप गया एंड दिस इज अ क्लीन हिट आई थिंक सो इट्स अ बिग
He just got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style of a long offense for a huge one. Have a look at this in the replay. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंद थी और मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया और डिस्पैच कर दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर. बेहतरीन स्ट्रोक सिनान के बल्ले से और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 रनों पर. 44 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. फाइन प्रोग्रेसिंग हियर नाउ फॉर स्पोर्टिंग गाइस अरला. अगली गेंद ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर एक्स्ट्रा क्विक कर रहा है. कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी. मांग जरूर की लेकिन अंपायर ने कहा कि इशारों से कहा कि जी नहीं, गेंद ऑफ स्टंप पर कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी. 2 गेंदें बाकी. मुस्ताफा एक बार फिर से तैयार सिनान के लिए. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए 7 से 8 बार जमीन को टिप्पा खिलाने के बाद और अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को झाला. स्क्वायर ऑफ द विकेट इनटू द गैप एज वेल. इट गेट्स अ ट्रीज कपल फॉर दैट. इनफैक्ट इट कट्स इट ऑफ जस्ट इनसाइड डिफेंस. बेहतर फील्डिंग वहां पर और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का. तीसरा रन चुराते समय रन आउट होकर बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट चुके हैं. देखिए स्टेपिंग आउट करके स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त उछाला था इनटू द विकेट गैप और जब तक डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड किया जाता और गेंद को ढकेला जाता और थ्रो किया जाता. बल्लेबाज 2 रन पूरा कर चुके थे और तीसरा जोखिम भरा रन चुराने के प्रयास में अपना विकेट यहां पर गवा बैठे हैं. तो 46 रन स्कोर, 4 विकेट्स डाउन, लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स. इनफैक्ट इट्स 2 बॉल्स रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स. 2 गेंदें बाकी और एक वाइड इस वक्त फेंक चुके हैं. तो इस वजह से 2 गेंदें बाकी इस ओवर में और सिनान इस वक्त आक्रामक रवैया अपनाए हुए अंतिम ओवर की दूसरी अंतिम गेंद का इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. मुस्ताफा सिनान के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार. अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी. ड्राइव किया स्ट्राइट ऑफ द ग्राउंड लेकिन स्ट्रोक में ज्यादा रफ्तार नहीं. 1 रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचा और इससे पहले कि स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. काफी ऊंचा थ्रो. अगर नॉन स्ट्राइक रन पर थ्रो करते तो शायद वहां पर कुछ बात जरूर बन सकती थी लेकिन स्ट्राइक रन पर थ्रो करना मुनासिब समझा फील्डर ने लॉन्ग ऑफ किया. तो इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. 48 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. मुस्तफा सिनान के लिए इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सिनान इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस वक्त गेंद को उछालना चाहा, पैरों पर टकराई. बेहतर गेंद थी गेंदबाज की. गेंद पहुंची शॉर्ट गली पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और 1 रन यहां पर हासिल होता हो बल्लेबाज को. और इस 1 रन के साथ इनिंग्स इज अप. देयर स्टिपुलेटेड ओवर्स आर कंप्लीटेड. स्पोर्टिंग गाइस अरला आफ्टर बीइंग तो स्पोर्टिंग गाइस अरला पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवर में 49 रन उन्होंने बनाए और ठीक 50 रनों का लक्ष्य इस वक्त उन्होंने रखा है. दे स्कोर्ड 49 रन्स इन द स्टिपुलेटेड 6 overs for losing 4 wickets and they set a competitive target of 50, exactly 50 in the stipulated 6 overs. And as far as the required run rate is concerned and it's going to be 8.34 runs per over, the required run rate for them at this situation. With the help of 10 wickets they have to score for victory. The present equation shows for them and let's see can they reach the target or not. 50 out of 36 मॉनिटर पर इस वक्त दिखाया जा रहा है. रन रेट रिक्वायर्ड 8.34 और देखते हैं वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं नहीं. तो उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होगी. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ जब टीम मैट्रिक्स की पारी की शुरुआत यहां पर होगी. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. Hello.
For the next match, I request all the players of KFC Kannur and Bedra friends, please approach. Box, huh? Okay, unchange. For the signing, in the signing sheet, all the players, KFC Kannur and Bedra friends. The next match will be between KFC Kannur and Bedra friends. I request all the players to immediately come to the signing dais and have your procedure. Thank you very much, Gopi. And it's all about that target we are talking about. The target is 50, and I think it's a good target. The morning session, even they lost the toss, asked by the opposition to bat first. I think the batters of Sportings really did a great job to getting that 50. It's not so easy to get 49, and I think the batters are doing a great job to get that 50. And thanks to the innings of Mansoor, who scored 20 valuable runs, and then of course Sinan who scored 15 valuable runs. Because of their contribution, the time will going to be noted here from our scorer. The time is exactly 10 past 11, and here is the first ball. So 27 minutes, the fielding team have to complete their 6 overs as per the rules and regulation of this cricket tournament is concerned. First ball, short third man. There is short point, in fact, one is backward point, short cow point, short mid off, and short mid on, short square leg, short fine leg, deep wideish long on, almost in the mid wicket, and one at deep long off. For the first ball, Sadiq is a very good striker of the ball, will go into face his first ball, and bowler Nasir will go into ball his first delivery. Round the wicket, pass umpire Arish Padil going for the sweep shot. Good start from the ball here from Nasir. The batsman Sadiq wanted to play that his favourite slog sweep shot. Of course, not a bad shot selection because the part of this cricket ground is concerned. As Squalag is a little bit shortest part of the ground as far as the dimension of this cricket ground is concerned. And that's why that ball, of course, the batter tried to hit the ball in that direction. But the bowler is so clever, seeing that batsman is going for the slog sweep shot. His ball outside the line of off stump, and there is no chance at all for any run. Second time in this over, bowler Nasir will get ready to bowling to the right-hander batsman Sadiq. This time again nicely bowled. This is the one area. The batsman Sadiq need to be very careful because he's the one who loves to play the big shot. He loves to dominate the bowler, but sometimes they need to see the bowler. The bowler is attacking in a line that absolutely on the midline off stump, not bowling to his strength, but of course bowling with the weakness of the batter. And here is Nasir again. Round the wicket balls, beautifully balled, perfect one. Misjudgment by the bowler. It's a couple of feet, not a single feet. It's a couple of feet that ball inside the line, and misjudgment by the field. Misjudgment by the batter. And thought it might be wide, but is total misjudgment, and scoreboard is remain yet to open the account. Nasir balls this time again. That time definitely going to be a wide. That was angling across, bowling round the wicket, bowling just going away from that line. Rightly so. This time umpire Arish Padil rightly so signaled it's wide. The first run came here for Team Matrix. They started their journey, and we didn't see how difficult and how easy this journey is going to be for Team Matrix. Again, a nice little one right in the gap, down to deep cow pointage, and fielder changing the ball. Ball will going to stop a little bit because of little bit upper side, isn't it? It's not a ground. We can see that it's stable. That might be a little bit up and down, especially in the cow point region when you're hitting the ball down to cow point region. Ball is passing along the ground. It might be very difficult to cross the boundary if you're not having enough power in the stroke. But a couple of runs here for Sadiq.
Driven straight to the hands of fielder. This is absolutely a big wicket. Nasir really has got a big wicket. Danger man departs. Sadiq looking for the stroke which is try to clear the infield. Just have a look at that one in a replay. And that ball is in the middle stump. Batsman hoisting it over but not quite keeping it over the top of the fielder. That ball went straight to the hands of short mid-on. The wicket number first is back into pavilion. Team Matrix have lost a huge wicket here. Sadiq haven't got any impact in this innings after getting one classical cover drive, but couldn't manage to capitalize the start what he has got. But bowler Nasir is producing a very important breakthrough for sporting guys Arla. For the next match, I request once again, please both the teams, if you are completed your formalities of signature, please get ready for the toss. Please report to the toss. KFC Kannur as well as Bedra Friends, two teams captain. Outside the line of off Tampa, going to be a wide with that extra scoreboard moves on to 3 on the board. 47 more runs required for the victory. 31 balls remaining in the innings of Team Matrix. Driven nicely right in the camp. One bounce over the row for 4 runs. Mousin this time absolutely got that one right from the middle of the bat. It's been absolutely sheer timing in that shot, isn't it? Absolutely sheer timing. Ball just and missing that boundary line. Otherwise, it's going to be a flat 6 for Mousin. Mousin is also one more very good player for the side of Team Matrix, but he's a little bit out of the form in the last tournament which is played at Yuvaratna Trophy. But he's such a useful cricketer when he's get going. And after losing Sadiq, I think it's a responsibility for Mousin to get going for his team, especially in the 2 overs. Is going to be key for Team Matrix to get the huge total of 50 to win this match. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಡಿ. Driven firmly and he got the distance. Oh, what a shot that one. Absolutely magnificent strike. Just stand and deliver, Rizwan. Have a look at that one. This is a glorious shot. Is there nothing much wrong with the line, which is outside the line of off stamp, but he drags that one from outside the line of off stamp, hitting that one right from the middle of the bat, down to wideish long on for a 6. 8 without loss of any wickets. Straight away, the bowler under pressure. Again that, wow, the good piece of fielding there by the square, like behind the square. The fielder is just moving to his left, diving to his left, stopping certain runs for his team. The Samad is a bowler, is introduced to bowl the second over, but first ball itself has got a big treatment from Rizwan. Rizwan, can he capitalize that shot what he has got? Samad is bowling right arm over the wicket, going for the drive, missing it complete. The wicket keeper behind the stump did the rest back to bowler. Altogether what we are witnessing here is that the very good competition is going between these very good teams, Sporting versus Team Matrix. Good comeback here by Samad after 6. 4 time in this over. Driven that one, but protection is given in the deep, in the wideish long on. Just a single here for Rizwan. With that single score, Namuzan to 14 for the loss of 1 wicket in the over number 15. Little correction, 15 for the loss of 1 wicket in the over number 2. It is in progress. That brings Mousin into strike now. Long on and long off and wideish long on. The 2 fielders are in the deep for this time a total misjudgment of the line. It's always happening when the bowler bowling round the wicket. When the bowler is around the wicket, I think the bowler ball outside the line of off time. Little bit misjudgment. The second time, the batters of Team Matrix are misjudging the line. And one more dotted delivery. There's some driven. No need to run for that. That will a flatter 6. This is what I'm talking about. This is the one ground. If you are too intelligent, you can get the 6 quite easily. Have a look at that one. It's just fractionally outside the line of leg stamp. And Mousin just capitalizing at that one. Just then a roll of the wrist comes into play. Little bit power, but it's quite enough in this SVS cricket ground to clear the boundary line. Down to deep square leg in front of square. That ball travels
And that 6 will really brought Team Matrix strongly back in this game. 21 is the score now. 29 required from 24 deliveries. One more productive over. This comes to an end. Of course, compared to the previous over, this is a productive over. 13 came from that over. This is 29 for 29 required from 24 deliveries. Of course, those who are late tuned to your mobile and watching this JD Boys Trophy 2023 through one of the most popular, the fantastic YouTube channel King Sports. Good morning, everyone. This is your Satish Salian once again, wishing you all very good morning and even happy Shivaratri for each and everyone. The Shivaratri is celebrated all over the world. And this is going to be a fantastic day for cricket for each and every cricket lovers. The JD Boys, 2 days, today and tomorrow will be the really excitement day for cricket. The next one, it's going to be a wide. The first ball of the over number 3 starts with the warm-up delivery. And now Sporting need to be very careful. It cannot do that mistake of bowling extra ball and extra runs, considering extra runs for the opposition, because they came into the right position. 28 required from 24 balls. Nasir in his second over. Round the wicket to right-hander batsman Rizwan. Rizwan this time went for the reverse sweep, not really getting the ball from the middle of the bat, but enough for him to get the single. With that single, Skoba Namuzan to 23 on the board for the loss of 1 wicket. The wicket of Sadiq is back into pavilion. After that, these two batters really batted very well as per the condition required. Mousin is in strike. Right arm over the wicket ball. This time, helicopter shot. What a shot! This is an outstanding cricketing stroke there from Mousin. Unbelievable, isn't it? Just a roll of the wrist, isn't it? Did you have a look at that one? And unbelievable. And as far as this particular cricketing stroke is concerned, have a look at that one. This is a helicopter shot. And Mahendra Singh Dhoni is one of the master of playing that helicopter shot. But Mousin here in underarm cricket, of course, there's a lot of difference when you're playing that stroke in overarm cricket, season ball cricket. But tennis ball cricket is so different and so difficult to get the distance. But here is a Mousin getting the timing, unbelievable. Scoreboard moves on to 29 on the board for the loss of 1 wicket. Driven, good piece of fielding there by the field. That shot mid-off because Mousin drives that one powerfully. He's just galvanizing his level of confidence after that 2 sixes. He's seeing the ball very well, hitting the ball very well. This is a natural and perfect Mousin for you. I'm just mentioning about this time. One more. This is a better than the previous 2 sixes, but unfortunately that ball hitting the branches of tree and landed into the playing area. It's any ground, it's going to be a 6. Because that kind of cricketing stroke is played by Mousin, but luck which is not favoring him. And luck is favoring the fielding team and the bowler, because branches of the tree, it is just inside the boundary line. After hitting that branches of tree, ball is landing inside the boundary line. 30 for the loss of 1 wicket. Nicely place it down to square leg region for a single. What a fantastic comeback, bounce back here by the batter. These two batters really destroying the bowling attack of the opposition. 31 already on the board for the loss of 1 wicket. 19 more runs required for the victory. Bowler Nasir again. Bowles went for the big shot. Wicket keeper, absolutely fantastic shot. The entertainment innings which is comes to an end of Mousin. He played some enterprising cricketing stroke, but he did the job what he wanted to do. After losing Sadiq, he came into middle. Just like mentioned, he is out of form batsman, but he came into form with the fantastic batting display. And the batsman a little bit out of the crease. Absolutely, we can see that quality of umpiring here from Mohan Ayadi. Have a look at that one. He won the quality of wicket keeper, just waiting for the batter to go to remove his steps, and then he made the stump out. Absolutely is nowhere. And very good wicket keeping by the wicket keeper behind the stump. Over number 3, which is completed after completion of over number 3, chasing a total score of 50 to win this match. Is a 31 on the board, 19 to get Gopi. Outstanding comeback, and we thought that 50 is going to be the comfortable total to depend, especially in the morning condition in this SVS cricket ground.
But after losing Sadiq, the way that Mohsin as well as Rizwan changing the complexion of the match, it's unbelievable. And one particular shot I want to remember, the stroke of Mohsin, the helicopter shot, outstanding cricketing stroke. But I think it's the right time for the fielding team to tighten up the screw because Mohsin back into pavilion. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, इस वक्त वापसी करने का मौका जरूर है क्योंकि मोहसिन का विकेट पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर गिर चुका है और यहाँ पर पहली गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। जैसा कि आपने फरमाया सतीश, तो निस्संदेह मोहसिन की धुआंधार बल्लेबाजी की वजह से यहाँ पर स्कोर जो कि इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर और उनका अच्छा साथ इस वक्त निभाते हुए रिजवान, हालांकि मोहसिन का विकेट जरूर गिर चुका है लेकिन रिजवान इस वक्त क्रीज पर मौजूद। फुल टॉस गेंद बीमर गेंद थी और गेंद पहुंची इस वक्त छोटे मैन पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। तो इस बीच नो बॉल का इशारा और 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल और एक बेहतरीन प्रगति यहां पर करता हुआ टीम मैट्रिक्स, जहां तक सवाल है रनों के लक्ष्य तक पहुंचने का, तो इस वक्त एक सुस्थिति में नजर आता हुआ। सिर्फ चौथा ओवर शुरू हो चुका है और 34 रन यहाँ पर बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाइनात राउंड द विकेट, दाइनात के बल्लेबाज के लिए उठा लो इस वक्त मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा का जवाब 4 रनों के लिए। मिड ऑफ द बॉल गेंद को कनेक्ट करते हुए गेंद को उछाला इस वक्त मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए इस वक्त बल्लेबाज ने, देखिए किस तरीके से यहाँ पर उछाला था, परफेक्ट, एब्सोल्युटली स्टैंड एंड डिलीवर्ड और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 39 रनों पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, जस्ट 11 रिक्वायर्ड, इनफैक्ट जस्ट 10 रिक्वायर्ड, 40 द स्कोर, 10 रिक्वायर्ड ऑफ 16 डिलीवरीज और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा टीम मैट्रिक्स बिल्कुल सही राह पर इस वक्त जाता हुआ और गेंदबाज इस वक्त यार दाइनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार फुल टॉस हेलीकॉप्टर शॉट इस वक्त गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में। जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया था, हेलीकॉप्टर शॉट आमतौर पर महेंद्र सिंह धोनी खेला करते थे अपने क्रिकेटिंग डेज में और यहाँ पर 2-3 बार ऐसे शॉट को हमें देखने को मिला है इस मैच में। और जहाँ तक इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार तैनात ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद को हल्के से खेल दिया, बैकफुट पर जाने के बाद शॉर्ट कवर की दिशा में गेंद पहुंची और जब तक गेंद को वहां पर फीड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 42 रनों पर। 42 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए इस बार उछाला मिड विकेट पर लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। It just lofted that one but can't find the gap as well at the last moment and finally he finds the long on fielder and that is the wicket number 3 now for them. Have a look at this in the replay. Long on सीमा रेखा के अंदर गेंद को लपका गया था और इस बीच तीसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है लेकिन चिंता का कोई विषय नहीं है इस वक्त क्योंकि 42 रन यहाँ पर बन चुके हैं। सिर्फ 8 रन चाहिए विजय के लिए, 13 गेंदें अभी भी बाकी। तो जहाँ तक इस टूर्नामेंट इस श्रृंखला का सवाल है, जेडी बॉयज बंटवाल इनके सहयोग में ये क्रिकेट श्रृंखला इस वक्त जेडी बॉयज ट्रॉफी 2023 के नाम पर इस विशाल से सुंदर से एसवीएस हाई स्कूल मैदान पर इस वक्त प्रगति करते हुए, बेहतरीन प्रगति करते हुए और कुल मिलाकर इस श्रृंखला का आयोजन किया जेडी बॉयज बंटवाल ने और एक बेहतरीन तरीके से। और यहाँ पर यह गेंद बेहतर गेंद थी, पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 43 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 43 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 4 overs completed and still 7 more to get in their 7 more to score for victory in remaining 2 overs with the required run rate of exactly 3.5 runs per over। तो पहला इनाम 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और जेडी बॉयज ट्रॉफी विजेता को दिया जाएगा। द्वितीय स्थान यानी रनर्स अप को 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार और जेडी बॉयज प्रदान किया जाएगा और वैयक्तिक विभागों में कई इनामें यहाँ पर दी जाएंगे कल फाइनल मैच के बाद। और जहाँ तक सवाल है जेडी बॉयज बंटवाल का, तो न सिर्फ क्रिकेट बल्कि कई समाजमुखी सेवाओं में भी उन्होंने अपना हाथ बटाया है। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन क्लब जो कि जेडी बॉयज बंटवाल क्रिकेट के साथ साथ समाज सेवा में भी उन्होंने अपना योगदान काफ़ी हद तक दिया है और हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में इस संगठन का जेडी बॉयज बंटवाल इस संगठन का भविष्य उज्जवल हो। तो जहाँ तक सवाल है इस मैच का, तो इस वक्त स्कोर 43 रनों पर रुक चुका 3 विकेट के नुकसान पर
और फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए फयाज स्टार्ट्स अ फ्रेश प्रोसीडिंग्स और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बल्लेबाज नौशद और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त फयाज तैयार था। इन्हें ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए नौशद के लिए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड विकेट कीपर चूके 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 45 रनों पर 45 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर और सिर्फ 5 रन अब चाहिए विजय के लिए। 12 गेंदें बाकी। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार था। इनात ओवर द विकेट फुल टॉस गेंद को कट करना चाहा बैकफुट पर जाने के बाद चूके गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए। विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट जरूर उखाड़े लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 45 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 45 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5th in progress. In fact 5th in progress, 11 balls to go and 5 more runs now they have to score for victory. अंपायर विकेटों को सही करते हुए और एक बार फिर से खेल आगे बढ़ता हुआ और गेंदबाज फयाज इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। तैनात ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैनात के बल्लेबाज के लिए गेंद लेग स्टंप से बाहर नॉन सेकंड बल्लेबाज काफी आगे निकला है लेकिन यहाँ पर इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। तो तृतीय अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है। वाइड का भी इशारा हो चुका है। 1 रन उनके खाते में जुड़ेगा जरूर। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर बल्लेबाज क्रीज पर वापस लौट चुके थे या नहीं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर थ्रो पहुंचा था और यहाँ पर थ्रो को रिसीव कर चुके हैं तो काफी नजदीकी मामला। इट्स गोइंग टू बी अ क्लोज कॉल। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। तो इस वक्त स्टंप्स बिखेरे गए हैं और देखने वाली बात यह है कि बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। Just we are waiting for the decision of the third umpire. That was in a close call. Not out. The decision came from the third umpire. और यहाँ पर बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं तो 1 रन उनके खाते में जुड़ेंगे वाइड के रूप में। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 46 रनों पर। ये देखिए यहाँ पर जब विकेट चटकाए गए थे बल्लेबाज का बल्ला क्रीज पर पहुंच चुका था और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए। और अपनी अगली गेंद लेकर फयाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए 4 रन चाहिए। 11 गेंदें बाकी और फयाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था। इन्हें ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा पैरों पर गेंद टकराई। थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई गेंद का पीछा करते हुए फील्डर 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके और इन 2 रनों के साथ विजय के और निकट होता हुआ इस वक्त टीम मैट्रिक्स 48 रन जोड़ चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। 48 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट 2 रन्स टू गेट नाउ फॉर विक्ट्री। और एक बार फिर से गेंदबाज फयाज गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैनात ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई लेकिन ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। थोड़ी सी सफल होते हुए गेंद को साइड पर उछालना चाहा चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 9 गेंदें बाकी 2 रन चाहिए विजय के लिए। फयाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद इस बार उछाला और इसी के साथ ही फिनिश द मैच इन स्टाइल विद 6। Team Matrix registered a comprehensive victory by 7 wickets with more than 1 over to spare, and with that 7 wicket comprehensive victory they are through to the next round of this competition, defeating Sporting Guys Arla. So the first match of the day is now ended just short while ago, which won by Team Matrix by 7 wickets against Sporting Guys Arla, and the second match of the day is now coming up live exclusively right in short while between KFC Kannur versus Bedra Friends. And I request all the players of KFC Kannur and Bedra Friends to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart and also complete the toss procedure. Second match is now going to start, and we're just taking a short break, and man of the match of this match award goes to
So man of the match of this match award. The man who hit two sixes and a 1 boundary and scored a quick firing knock of 17 runs in 17 balls, in 7 balls in fact. He scored 17 runs in just 7 balls. Mohsin of Team Matrix adjudged the man of the match because of his quick firing knock of 17 of 7 balls. And I request Mohsin to please come onto the stage and receive the man of the match award from Mr. Mohsin, please come on to the stage and receive the Man of the Match award from the one of the organizer of our tournament, Mr. Pushparaj. I request Pushparaj to please hand over the Man of the Match award for Mohsin for his quick firing knock of 17 in just 7 balls. So first match of this day ended just a short while ago, the day 2 of JD Boys Trophy 2023, and the second match is now coming up live exclusively between KFC Kannur versus Bedra Friends. And KFC Kannur will take short Bedra Friends, and that match starts with just a short while. We'll be back right after the short break with Satish in English when the next match will going to commence. Thank you. Dhanyavad.
ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ KFC ಕನ್ನೂರ್ ಹಾಗೂ ಬೆದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ 9 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಘಟಕರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರಿತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ KFC ಕನ್ನೂರ್ ಹಾಗೂ ಬೆದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಬೆದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ as well as KFC Kannur, the players complete your signatures as soon as possible.
I request extra player of Better Friends, please report it here. Please report here immediately. Better Friends ತಂಡದ extra player ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. So KFC Kannur versus Better Friends. Before the innings will go into start of before the innings will go into start of KFC Kannur, I request Mr. Prashant Bantwal to take over the microphone in English. Thank you. Welcome and good morning to Prashant. Hello. So thank you, Satish Salyan sir. Second match about to progress of second day of this prestigious JD Boys tournament. Better Friends and KFC Kannur will play for each other for the next round. In between, even I for the next match, Jai Bharat Nandavar and Jolly Friends Bajal. When I request both the team players, if you are listening, please report at the signing pandal for the sign. ದಯವಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರ ತಂಡದವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇಳೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಮೀರಿದೆ. So Better Friends won the toss and elected to field first, having some plan against KFC Kannur team. So excellent ground being organized by JD Boys. They had a very lot of effort since more than 20 days before this match was announced. The date was announced to make the pitches and the outfield, which has been greenery. A big applause for all the members of JD Boys team to making such a wonderful ground and making the players available for this match. Once again, good lining, especially the pitch, which is being concrete, little bit refurnished this time. So the umpiring panel for this match, no doubt, Sriniket, a youngster, upgoing, very renowned umpire, not only in Dakshin Kannada, Udupi and Kasaragod, all over. He has been making a good mark in umpiring panel. Along with that, once again, not much to tell about because it is already known. Mr. Harish Padil, very experienced and very calm and quiet umpiring panel. Successive duo in the ground, in the umpiring panel. In between, in the fielding, Better Friends set their fielding and the opening pair just approaching from the side of a KFC Kannur team. Even KFC Kannur, if they have their 12th man, you can report at the comment at the end.
Okay. Afraid at the non-strikers and at the strikers and to start the proceedings for better friends from the side of SOS School and Sujana. What a delivery to start. Good piece of bowling. A local guy, a home ground for him. Regularly practicing. A youngster. He's been playing for a lot of Premier Leagues in his hometown. Now he's in JD Boys prestigious tournament. Once again, brilliant. Oh, that's been a big fumble. Big fumble by the keeper. One completed, going for second. Just been not satisfied by signal. Excellent delivery once again. Keep making a mess of it and providing a extra run in the form of buys. So Api at the strikers end and Afri at the non-strikers end. In between in the bowling mark, Srijan. Brilliant delivery once again, but finding somewhat rhythm towards onside. Protection being provided at deep mid-wicket region. Once again a single. With the single scoreboard moves to now 2 on the board. For time. Srijana, somewhat special time. Oh, what a striking! What a striking! He fit that from the offside. Brilliant striking. Looking like the ball was just angling away from that off-stump line. Batsman fetched it from far away. Perfect contact from the bat, and that resulted in the form of a maximum. So with that, excellent batting from this time Api. Once again, very well. Chance of run out. Chance of run out. It is a shy at the stumps. Unnecessary shy. Unnecessary shy it is. It should have been easily given to the bowler who can easily uproot the bails, but unfortunately a life been given for the batsman Api, who struck a maximum. Here continues Srijana to Afid. Slow and steady power play in progress. Second match of this second day of JD Boys tournament. Once again in the follow through, good one, good conclusion in the over. And after completion of first over, the scoreboard is exactly 9 runs. Good comeback, unless that was a mighty blow from 6. We can say somewhat a top edge. For the next match, I request Jai Bharat Nandavar and Jolly Friends Bajala. All the member players, please get into the signing sheet before the first innings being completed. Bowler name? Tanvir in the bowling mark. So now at the strikers end, Api, who hit a mighty blow of 6, will face the second over, will be proceeded by Tanvir. Tanvir round the wicket. Once again, cheeky play. Oh, that's been an easy catch. At little moment, we'll thought the fielder lost sight of the ball, but good conclusion in the end. Batsman premeditated stroke, wanted to scoop that over short square leg fielder, but unfortunately finding the fielder and the first wicket back in the form of Api, and that was crucial. The man who hit a mighty 6, somewhat proceedings was neatly going on, but at the right moment the partnership being broken. This is what required, breaking of partnership, getting into wickets in regular intervals. Surely
will have a booster for the fielding team. New man joining. Abba. Abba at the striker's end. Tanvir. Now changing the guard over the wicket. Excellent. Oh, what a striking. Fumble little bit. Wanted to pierce that gap between short covers region, but at a good conclusion in the fielding side. One more to the scoreboard. Scoreboard moves to double figure 10 on the board. Little bit heat been raising. Now the sun is coming somewhat 90 degree perpendicular to the ground. Once again, fine striking, piercing the fielder at a short covers region, but the short mid-on fielder was very quick to have a handsome dive and restrict the batsman. Once again, good bowling from the side of Bedra Friends. Good statistics from Bedra Friends. Oh, brilliant delivery. Brilliant delivery. Behind the stumps, John, the skipper for Bedra Friends, making excellent commitment in keeping. So 11 on the board. Power play in progress. Fifth time. Tanvir. Little bit run up from his bowling mark. Once again, steers the ball. Fielder is being exactly appointed there at a short mid-on region. So batsman is struggling to find PS of fielders even in the power play. So scoreboard has been put a full stop at 11 since the last two deliveries. Now once again Abba finding the same fielder. Result is the same. At last a dot ball. Over concluded after completion of 2 overs. The scoreboard is 11. 2 crucial overs of power play. This time coming in the favor of fielding team Bedra Friends. Excellent overs. Srijan and Tanvir making excellent bowling mark. Especially Tanvir, who made a well back in bowling mark, just given 2 runs and getting an important wicket of Api, who stuck in the first over a maximum. So especially according to the scorer, Mr. Hemant, who's been scoring for JD Boys every tournament especially, and in the last day he made a good attempt in scoring department, one of the renowned scorer found in Bantwal town and now just approaching towards the Mangalorean zones, a good young talent. So Nitin in the bowling mark. Ethan will bowl to Afraid. Third over, so fielding restrictions been lifted. Just 4 inside the circle. Once again, this is a bad start, especially when concluded 2 overs being looked after. So this is a very bad start. Straight away, we can say that was a spectra wide, very wide of that offside white tag. So 1 + 1 2 to the scoreboard. Extras flowing. 13 on the board. Once again, same result, but this time keeper gathered neatly. So extras been flowing a little bit suggestions with the co-players along with the bowler. Ethan has to find a good rhythm because earlier 2 bowlers made excellent over for their team. Ethan. Oh, once again, good stamp, good comeback. Wanted to loft that towards the onside, premeditated, shuffle a little bit towards the offside, but inside edge of the bat, concluded with the dot ball. Ethan. Oh, that is bad. Once again, spectra wide. So this is easily giving away runs without any effort to the opposition team, giving extra runs. This is a bad thing. Already all the effort put by the first 2 bowlers are going in vain. Just 1 ball been completed and already 5 runs been given. Now the scoreboard is 16 on the board.
Still 5 more to go in the over unless it is a legal delivery. Itaena. Oh, brilliant bowling this time. Brilliant bowling. This time good comeback. Little bit rhythm should have been found by Itaena instead of giving extras. Bowling line to line. Oh, chance of run out. Chance of run out. Bad throw from the deep. The youngster patrolling inside that of the 30-yard circle at short mid-on region. If it was a good throw towards the bowler and it will be surely a trouble. Ethan continues to Abba. Going for a biggie. Once again keeper missed it. Excellent commitment by a short fine leg fielder. Good delivery. Keeper missed it. But what a backup. Surely saving a couple of runs. Otherwise once the ball is being crossed that 30-yard circle, it will just raise away to the boundary. The outfield is very, very quick at S West ground. Scoreboard 18 on the board. Once again, premeditated reverse stroke, light bit of a pale, a chance for a run out. A lot's been happening. Batsman's having ample time to cross over between the wickets for a single. Single to the scoreboard, 19 on the board. One more in the over. Leader, a very lengthy over by Eden with 5 wides. Here is once again, oh, good bowling, good rhythm, but once again, little bit after a fumble in the follow through, John making himself to collect the ball. 3 overs completed. So, of the innings of 3 overs been completed, the scoreboard is 19 on the board in the account of KFC Kannur. Slow and steady start, except that one maximum coming from the bat of Api. And the batsmen tried their best, but could not pierce that infield and have some good strokes like boundaries. But rather in the bowling department, effortless runs been given by the bowler Ethan, which will be little bit a juicy one for the batting side in the form of extras, especially 6 extras been considered in the over of that is Ethan in the 3rd over. 3 overs completed, 19 on the board. Jai Bharat Nandavara ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಜಾಲ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೈನಿಂಗ್ ಪೆಂಡಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂದಾವರ ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದೊಳಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ವೇಳೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂದಾವರ ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್. Amit will ball. The fourth over. Oh, leg spin been introduced. Outside a chance of a run out. Once again, lots been fumble. Lots of fumbles been seen. Surely at the shy at the wickets. Run out chances. Not a neat collection of a ball in the follow through. So extra runs been flown. 20 on the board. Amit. Oh, that's been a high full toss. No ball called by umpire. No ball compared by umpire, and that's a free hit. According to the rules and regulations, it's a free hit. So this might be somewhat a grace for the batting staff unless he will use the full use of this delivery. Abba at the striker's end. Brilliant delivery. Just a chance of run out. Once again, fumble by the bowler himself in the follow through. So as I said, lot of fumbles. The batsman's trying to have hard strokes from the bat. Getting the outside edge. Even fielders may been making a lot of fumbles. Scoreboard 22 on the board. Amit. Brilliant delivery once again. Straight as an arrow. Driven towards a long on. But excellent fielding at the long off by the long off fielder. Restricting the batsman just for a single run. So slow and steady. Partnership is good unless not a big strokes been seen. Strikes been rotated regularly. 23 on the board. Amit continues to Abba. Across the line, brilliant delivery. Once again, lots of fumble. Look at that might be fumble number 5. Fumble number 5 because all the fumbles been made were easy chances of getting wickets. Even John
This time making a big fumble. Back up third man fielder making a fumble. Lots been happening. 24 on the board. Down the track, once again, outside edge of the bat. This time, good fielding. Good fielding display. Somewhat recovery in the fielding. Somewhat booster for better friends. Amit in the bowling mark. Last one to go. 24 and fourth over in progress. Amit. There's been a shorter delivery. Pull the ball towards the square leg department. But fielder is exactly appointed there. Batsman will be really frustrated with that stroke. Inches away from that square leg, surely could produce more than a couple of runs. And that was not possible for the batting side. Finding good strokes but not piercing the gaps. So 4 overs completed, scoreboard is 25 in the account of Bidra friends. Meanwhile, once again I will give a call for Jai Bharat Nandavara and Jolly Friends Bajal. Please report at the signing pandal to have your signs in the signing sheet for the next match. Tanvir once again, the second spell of his quota. So Tanvir taking the guard over the wicket from high school end to Afrid. Once again, this time striking well. Once again finding fielder towards the covers region, getting some moment regularly. As I said, the partnership has been built, strikes been rotating regularly, but not a big strokes. 28 on the board. In the morning session, a scoreboard of above 45 will be par. As I said in the last match, 50 scored by Sporting Gaicharla was very easily chased by Team Matrix Mango team. So morning is a very good batting pitch unless batsmen time the strokes with sheer power. Once again lofted, but in the follow through, Taslim making a good attempt in the fielding. Attempt for a catch, but it was a shot just grounded in front of him. 28 on the board. Abba, I think he's one of the experienced player for KFC Kannur team. Has to produce some good strokes. Once again, that's been easy this time. That is somewhat a reflex keeping from John. At least something to cheer for a fielding team. Lots of fumble, lots of run chances been made shy of the wickets, not direct hits. But this time, batsman premeditatedly having a front foot 1 to 2 yards forward. And this time, John, look at the replay. Neat piece of collection and uprooting the bails. Surely Abba, not a big contribution from him. He is the key and experienced player for KFC Kannur team. Scoreboard stuck on 28. Unless the over of Ethane, somewhat productive overs being produced by better friends. Excellent overs by Amit, especially Tanvir, Srijan, only Ethane the man. Nasir, left-handed batsman. Surely some batting display should be seen by the left-hander batsman. It is at the morning, the ground is favoring the left-hand batsman. A shy or a good sheer timing, just raise away the ball over the ropes. But perfect bowling also required by the bowlers of Bantwala friends. So lot of spectators are about to start to flow into the ground. Expected as usual, prestigious JD Boys Bantwala. Once again going for the sweep shot, neatly swept. Oh, Fambala. Once again I said, overconfidence by the fielder, especially overconfidence because it was an easy ball having a low pace in the ground. Neat piece of collection could be done, but one-handed shy wanted to be done by the fielder and he missed it. So producing the second run. Scoreboard is 30 on the board now. Tanvir continues with his next delivery. Big appeal, big appeal. Oh, shy once again, shy. Lord's been shy and it's been given. Okay. Like before,
So that is plumb in front. Look at the replay. Look at the replay. It's been one of the finest bowling display. Tanvir. Oh yes, that is across the line. Across the line. No doubt. Plumb in front. Leg before. So another wicket back for KFC Kannur team. Wanted to sweep that ball. Fifth over completed, I think. Sorry. Yes. So 5 overs completed. Scoreboard is 30 on the board. Exactly along with the deliveries. Batsmen, though they hit a big 1-6, a lot of extras been given. But especially a good comeback by the bowlers like Tanvir, Amit and Srijan. ಅದೇ ರೀತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ, ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರರು ಅಥವಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿರಲಿ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತು ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಗೌಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಚೇರ್ ಹಾಕಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂಸ್ ಆದ ಬಾಟಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೆದು ಅದೇ ವೇಸ್ಟ್ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಶಾಲಾ ಆವರಣ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಧರ್ಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂಥ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಇಕ್ಕ ಓಕೆ, ಇಕ್ಕ ಇನ್ ದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್. Iqbal, yes, Iqbal, that is. Especially Iqbal, lot of short names being done to Ika. Going for a big once again, inside edge of the bat. Lot of time, this batsman, Afridi, who opened with the Api, tried his best to heave towards onside. So once again, Iqbal, brilliant delivery, once again missed by the keeper. As I said, a lot of extras, nearly more than 10 to 12 extras being produced, which will be grace runs and which will be a little bit trouble when the fielding team, better fans, will come into the batting side. Iqbal, down the track, a brilliant stroke, finding at the covers region, a fielder is there. Accurate fielding, a good throw from the deep. Harsha, the fielder, excellent run up, we can say. As soon as the ball was struck, fielder ran for the chase. Okay. Once again, a wait and signal that might be wide call by umpire. So that is 1+1 to the scoreboard. Okay, coming back to the tail end of this first innings, scoreboard is 36 on the board. Now another wicket being produced in the form of run out. Jolly friends Bajala, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಮನವಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜೈ ಭಾರತ್ ತಂಡದವರು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೆದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೈ ಹಾಕುವ ಮುಖೇನ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ಧಾವಿಸಬೇಕು ಸೈನಿಂಗ್ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹತ್ರ. Fifth time, brilliant delivery, quicker pace delivery. This time we can say from the pad, batsman will be satisfied with that single. Yes, that is leg by signal been given. Scoreboard moves to 37 on the board.
One more to go. Crucial one. After the very long stay in the crease, but not a big strokes. This time once again heaving towards the offside. Satisfied with that single. Wait and watch. That is a misunderstanding and once again bad display of fielding. Two more to the scoreboard. Scoreboard moves to 39 after completion of 6 overs. So now the target is 40 runs required in remaining 36 deliveries for Better Friends. As I said, Better Friends leaked a lot of runs in the form of extras. More than 13 extras been produced in their innings because Ethan bowler himself given in 1 over 6 extras and his fellow co-bowlers even produced altogether more than 7, altogether 13 extras. So with that, first innings been concluded. After completion of first innings, the scoreboard of KFC Kannur is 39, 40 runs required. Bajal ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಂದಾವರ ತಂಡದವರು ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಾವು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮುಖೇನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸೊಗಸಾದ ಚಾಲನೆ ಕಳೆದ ಆದಿತ್ಯವಾರದಂದು ನಡೆದಿದ್ದು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವಾರ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಕೂಡ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರವನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇವರಿಗೆ ಮೈಕನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. धन्यवाद माय डियरेस्ट फ्रेंड प्रशांत. तो जहां तक सवाल है इस वक्त दूसरे मैच का, तो इस वक्त मुकाबला जारी है केएफसी कन्नूर और बेतरा फ्रेंड्स के बीच में. पहले बल्लेबाजी करते हुए ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಂತ RX ಪೆರಿಂಜೆ ತಂಡದ ಸುನೀಲ್ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ JD ಬಾಯ್ಸ್ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುನೀಲ್ RX ಪೆರಿಂಜೆ ತಂಡದ ಸುನೀಲ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುನೀಲ್ RX ಪೆರಿಂಜೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಸುನೀಲ್ ಅವರೇ, ಓವರ್ ಟು ಗೋಪಿ ಸರ್. धन्यवाद प्रशांत. तो जहां तक सवाल है इस वक्त रन्स बनाने इस वक्त बेतरा फ्रेंड्स को 40 the target for Betra Friends in 6 overs set by KFC Kannur and batted first. They managed to score 39 runs on the board in the stipulated 6 overs and now the target is 40, exactly 40 for Betra Friends and their innings now going to start. The first ball of their innings is now coming up. पहले गेंद लेकर तैयार, ये गेंद स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ into the gap as well और गेंद बैकवर्ड को लेग सीमा मारेगा जब हर 4 रनों के लिए. खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त मोड़ा था बल्लेबाज हर्षा ने और आखिरकार गैप इस वक्त चुनते हुए देखिए किस तरीके से गेंद को मोड़ा था. Have a look at this in the replay. Absolutely perfect struck and he finds the gap as well.
और इस चौके के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है, 4 रन बिना किसी नुकसान के। और हर्षा एक बार फिर से गेंदबाजी सामना करने के लिए तैयार। आसिफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, पावर प्ले जो कि इस वक्त जारी। और आसिफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ड्राइव किया लेकिन फॉलो थ्रू में बेहतर फील्डिंग गेंदबाज द्वारा, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो पावर प्ले का फायदा उठाने का कोशिश यहाँ पर करते हुए बल्लेबाज हर्षा, करारा प्रहार जरूर था लेकिन फॉलो थ्रू में बेहतर फील्डिंग इस वक्त अपने पैरों के जरिए की गेंद को रोका इस वक्त फील्ड गेंदबाज ने, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और आसिफ अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, स्पेक्ट्रा वाइड, और इस बार फाइनल लेग फील्डर चूक चुके हैं, 1 रन मिलेगा। इस बार देखना पड़ेगा दूसरे रन के लिए तौर पर स्ट्राइक करने पर थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन प्राप्त करने का। वाइड का भी इशारा हो चुका है, 2+1 3 रन एडेड टू द टोटल। और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर, 8 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतर शुरुआत पहले ओवर में कर चुका है बिद्रा फ्रेंड्स 39 रनों के 40 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए। और गेंदबाज आसिफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलती हुई, कवर पॉइंट लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर और लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद, जबकि माफ कीजिए कवर पॉइंट और लॉन्ग ऑफ सिर्फ 2 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद, सीमा रेखा के अंदर मौजूद 20 गज के दायरे के अंदर 7 खिलाड़ी इस वक्त मौजूद है। अगली गेंद के लिए तैयार, लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर, 9 विदाउट लॉस। और गेंदबाज को कुछ टीम के अन्य खिलाड़ी समझाते हुए कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए। और इस बीच गेंदबाज आसिफ अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, राउंड साइड पर गेंद को खेला लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर शुरू हो चुका है और इस बीच कुछ हद तक फील्डिंग में तब्दीली करते हुए कप्तान KFC कन्नूर के, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज आसिफ गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को चाला मिड विकेट पर, इनटू द गैप पर, गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट मिड विकेट बट द बॉल वेंट फाइन एट द लास्ट मोमेंट बिटवीन लॉन्ग ऑन एंड द मिड विकेट and especially finds the gap as well. Just look at this in the replay, किस तरीके से गेंद को खेला था, लेकिन गेंद को खेलना चाहते थे स्ट्रेटर वर्जन पर, लेकिन स्क्वायरर, लेकिन गेंद गैप पर जाती हुई और 4 रन इस वक्त बल्लेबाज प्राप्त करते हुए। और एक बार फिर से गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी इस वक्त, ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और इस वक्त डॉट गेंद घोषित रन बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 14 रनों पर बिना किसी नुकसान के, पहला ओवर प्रगति पर। और आसिफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग गेट एट द लास्ट मोमेंट मिसफीड होती हुई, लेकिन बल्लेबाज ने रन लेना मुनासिब नहीं समझा। तो ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 40 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बित्रा फ्रेंड्स एक बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर कर चुका है, 14 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के। 14 रन स्कोर्ड बाय बित्रा फ्रेंड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर, चेसिंग द विक्ट्री टारगेट ऑफ 40 इन 6 ओवर्स। जहाँ तक जेडी बॉयस बंटवाल का सवाल है, तो क्रिकेट के अलावा कई समाजमुखी कामों में भी, कई समाजमुखी कार्यों में भी उन्होंने अपना हाथ बटाया है। निस्संदेह प्रतिष्ठित बंटवाल के प्रतिष्ठित संगठनों में से एक जेडी बॉयस इस वक्त मानी जाती है, कई समाजमुखी सेवाओं की बदौलत। और हम एक बार फिर से उन्हें बधाई देते हैं और उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में जेडी बॉयस बंटवाल हर फील्ड पर उनका भविष्य उज्जवल हो, खासकर समाजमुखी सेवाएं और क्रिकेट में और खेल में भी। तो यहाँ पर गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर बोला था, नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट, और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो
स्कोर रुक चुका है 14 रन। दूसरा ओवर शुरू हो चुका है। गेंदबाज अपी गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए स्ट्राइक ऑन द ग्राउंड एंड इट्स गॉन ओवर डिफेंस फॉर मैक्सिमम इज हिट दैट वन इन अ स्ट्रेटर वर्जन और गेंद सीधे हवा में डोलती हुई लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के सीढ़ियों पर इस वक्त टकरा चुकी है। हालांकि गेंदबाज गिर चुके थे। गेंद को फेंकने के बाद देखिए यहां पर किस तरीके से मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया, डिस्पैच किया इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। तो इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 20 रनों पर। बिना किसी नुकसान के बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है हर्षा के बल्ले से और इस छक्के के साथ वो अपने इरादों को और बुलंद यहाँ पर कर चुके हैं। अपी एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट लेकिन वहां पर स्टॉप किया गया गेंद को शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर फीडर द्वारा। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो एक बेहतरीन प्रगति बेद्रा फ्रेंड्स यहाँ पर करता हुआ हर्षा और अमित पारी की भागदौड़ को इस वक्त संभाले हुए और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त फाइन गेंद निकल चुकी है थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। He just played that one with a twisted bat and finds the gap as well in this situation. Have a look at this in the replay. देखिए किस तरीके से यहाँ पर गेंद को खेला था रिवर्स शॉट के जरिए। फाइन गेंद निकल चुकी थी शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर की बाईं ओर से और डीप थर्ड मैन सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 24 विदाउट लॉस। और फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। This time he can't find the gap as well. Hit that one pretty hard, but the placement was too wrong, and because of that, he paid the penalty for that. तो पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। हर्षा बेहतर पारी खेलने के बाद पेविलियन वापस लौटते हुए कुल मिलाकर उन्होंने 21 रन बनाई। स्कोर 15 रन उन्होंने बनाई। He scored 15 runs into his credit, and after playing a quick five knock of 15 runs, including 1 6 and 2 boundaries, he is back to pavilion. And good catch taken by the deep mid wicket feeder at the last moment just inside the fence in a flatter version. तो इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ जॉन इस वक्त क्रीज पर मौजूद और एक सुस्थिति में यहाँ पर नजर आता हुआ बेद्रा फ्रेंड्स। जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो अपी इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए जॉन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डर मिड विकेट पर एक फील्डर को पीछे भेजा जा रहा है और अपी और की अगली गेंद। यह गेंद स्वीप करना चाहा लेग स्टंप से बाहर लेकिन ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। बेहतर गेंद थी विकेट कीपर ने विकेट जरूर चटकाया लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। 2 ओवर की समाप्ति 2 overs completed and terrific progressing here now for Bedra friends chasing the victory target of exactly 40 in 6 overs. They are looking in a fantastic position 24 for 1 after 2 overs. Meantime, the next match, Bajal, I request Jolly Friends Bajal, all the players to please to be reported here to make a sign in the official chart. Jolly Friends Bajal ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂದಾವರ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. सो बैक टू दिस गेम और 16 रन चाहिए 16 दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। जैसा कि मैं फरमा रहा था जेडी बॉयज बंटवाल जो कि कई सोशल वर्क समाजमुखी कार्यों में उन्होंने अपना हाथ बटाया है। निस्संदेह यहाँ पर कुछ उदाहरण यहाँ पर उनके पैम्पलेट पर दिए गए हैं। तो निस्संदेह हर कोई संगठन को जेडी बॉयज बंटवाल की तरह समाजमुखी सोशल वर्क में हाथ बटाना चाहिए और लोगों का भला करना चाहिए इंसानियत के नाते एज फार एज द ह्यूमैनिटी इज कंसर्न्ड। और एक बार फिर से मैं जेडी बॉयज बंटवाल का अभिवादन करता इन समाजमुखी सोशल वर्क से के लिए। इस बार उछाला लॉन्ग ऑफ पर 6 रनों के लिए effortlessly played. This time he just got that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style over long off widest long off area for 6 runs. Have a look at this in the replay. And this time he dispatched it in his style over widest long offense for a huge one. Again 2 for Saudi off stump straight away. The pressure on the bowler. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ 31 रनों पर 31 for the loss of 1 wicket. And this is the 3rd over in progress in their innings. गेंदबाज सोहेल ये गेंद इस बार ऑन साइड पर खेला शॉर्ट मिड विकेट पर आफ्टर फर्स्ट बाउंस गेंद को कलेक्ट कर लिया गया फील्डर द्वारा। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और फिर से एक बार सोहेल
गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप पर आती हुई परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी और लेग स्टंप से कुछ ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा और रन से नहीं मिलेगा। तो एक बेहतर कमबैक सोहेल छक्का प्रदान करने के बाद कर चुके हैं और इस बीच अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट फाइन एंड इट्स गॉट अ बाउंड्री फॉर दैट, नो नीड टू रन फॉर दैट और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ द स्कोरबोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 35 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट just 5 more runs now they have to score for victory in remaining 3+ overs and at this situation the equation seems to be much easier now for them। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, सोहेल गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए पिछले गेंद पर चौका प्राप्त कर चुके हैं अमित। एक बेहतर रिवर्स शॉट खेलने के बाद डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर एक फील्डर को तैनात किया जा रहा है और इस बीच सोहेल तैयार अमित के लिए। धीमी गेंद थी, मोड़ा बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। सिर्फ और सिर्फ 1 रन चाहिए विजय के लिए और ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ औपचारिकताएं ही इस मैच में बाकी रह गई है। जस्ट फॉर्मेलिटीज नाउ रिमेनिंग इन दिस मैच। और सोहेल एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल बैक टू द बॉलर की दिशा में। मैच को जल्द से जल्द वो समाप्त इस वक्त नहीं करना चाहते हैं, कुछ हद तक बैटिंग प्रैक्टिस उन्होंने की अंतिम गेंद पर। 3 ओवर की समाप्ति, 3 overs completed, 39 for the loss of 1 wicket, 1 to get, 3 overs to go and ऐसा कहना पड़ेगा अब अपने विजय के द्वार पर आकर खड़ा हो चुका है बेद्रा फ्रेंड्स। चौथा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ, 4th over starts, फर्स्ट बॉल लेग स्टंप से बाहर डिफ्लेक्टेड, सिंगल रन एंड दैट्स इट। Comprehensive victory for Bedra Friends by 9 wickets with 11 balls to spare. In fact, with 17 balls to spare in their innings, they registered comprehensive victory of 9 wickets with 17 balls to spare against KFC Kannur, and with that victory against KFC Kannur, Bedra Friends are through to the next round of this competition. So match number 2 of the day 2 of JD Boys Trophy 2023 is now ended just short while ago. And now next match is coming up. Jai Bharat Nandawar will takes over Jolly Friends Bajal. I once again request all the players of Jolly Friends Bajal to please to be reported here for signing the official chart. Jolly Friends Bajal ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So man of the match of this match award goes to the man who hit 18 runs in just 9 balls and he captured 1 wicket for conceding just 6 runs in his 1 over, and because of this all-rounding performance he bagged the man of the match award. I request Amit of Bedra Friends, please go on to the dais and go on to the stage and receive the man of the match award from organizers. Amit of Bedra Friends adjudged the man of the match of this match. Jolly Friends will take over Jai Bharat Nandawar. One more good match is coming up और एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और इस छोटे से ब्रेक के बाद अंग्रेजी में मेरे काबिल दोस्त सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब मैच नंबर 3 की शुरुआत होगी इस जेडी बॉयज ट्रॉफी 2023 के अंतर्गत इस मैदान पर। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಂತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬೆದ್ರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ KFC ಕಣ್ಣೂರು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಬೆದ್ರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಮಿತ್. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಪೂಂಜಾರಕೋಟಿ ಅವರು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಅಮಿತ್ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಡಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಪೂಂಜಾರಕೋಟಿ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಇವರ ಜೀವನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
KFC ಕಣ್ಣೂರು ತಂಡದ ಓನರ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈನಿಂಗ್ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. KFC ಕಣ್ಣೂರು ತಂಡದ ಓನರ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಕಪ್ತಾನ ಈ ಕೂಡಲೇ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೈನಿಂಗ್ ಪೆಂಡಾಲ್ನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಂದಾವರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಟಾಸಿಂಗ್ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ತಡ ಮಾಡದೆ ಕಪ್ತಾನನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂದಾವರ ತಂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಜಾಲ್ ತಂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ 15 ನಿಮಿಷ ನಮಗೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ. ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಕಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ 9 ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. 1 ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಾವು 9 ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Thank you very much, Gopi and Prashant. And we are back to the match number 3 of this day number 2 of this prestigious JD Boys Trophy 2023, which is proudly organized by JD Boys Bantwal with the slogan of cricket for social service. Absolutely, you can't get better than JD Boys Bantwal, because so far from 2019, 2020, 21. They did a great job as far as the social work is concerned. They are helping the needies, of course, not only for helping for the poor, but even they're helping for talented students who are financially backward, and finding them and helping them. It's absolutely fantastic job so far, and helping hands for HIV patients, those who are suffering from HIV, and they are helping so far through their social service. And even during the time of lockdown, pandemic, and COVID-19 also, this firm is really done a great job. And certainly, because the organization is in the sense, it's not only for encouraging the crickets, but even along with that, they're doing a fantastic job, fabulous job as far as social work is concerned. So thank you very much. Hats off to all the active members of JD Boys so far, done a great job along with the cricket. Meantime, I request all the teams, please cooperate with the organizer, because organizing cricket tournament is not so easy. For 3 days of cricket tournament, 1 day and night, it might be the 3 days of cricket tournament, but I think it's more than 3 months of effort which is required to organizing such a big tournament. So your cooperation is much required, because they are organizing this cricket tournament only to all the teams to showcase their talent. But that's why the cooperation is very, very important. Cooperation in the sense is it's going to be a true game spirit is so important, and discipline is one of the main factor as far as a true spirit is concerned. If you're not having any discipline in your cricket, it's very difficult for you to come out. And not only in the field of cricket, but even in your life is also discipline is so important. So that we are requesting all the teams, please be in the time. The organizers given you to the just time for you to report. Just report to the ground before 15 minutes. And punctuality is one of the key for the success. And please cooperate with the organizers and be punctual, and give importance for the time. Please report to the ground before 15 minutes from your allotted time, and that will going to be so easy for the organizer to complete their matches in their scheduled time. And such a big tournament, JD Trophy, everybody knows that is a prestigious cricket tournament. So far, JD Boys Bantwal organizing this cricket tournament for a long time, and your cooperation is much required. And one more thing, please give priority for the cleanliness.
Don't throw the wastages here and there. There will be some plastics which is provided in the all around the ground. Please put the all wastages in that the plastics. Please don't throw that wastages, because you know that this is a premises which is belongs to school, and we are sending a strong matches, because underarm cricket definitely has got their own respect, and we need to keep that, isn't it? Don't throw the wastages anywhere. Please put the wastages in the plastics, which is almost in the all every part of the ground. Organizers kept there. Please cooperate with the organizer, and that's very important for the success of this cricket tournament. ದಯಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಬಾಟಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಲಿ, ದಯಮಾಡಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮೈದಾನದ 4 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಕವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Once again, back to this match, the match number 3 of day number 2. I request the extra player of both the team, please be reported here immediately. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂದಾವರ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂದಾವರ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So welcome back once again. After winning the toss, captain of Jolly Friends Bajal elected to field first, so that Jai Bharat Nandavar's opening batters came into middle. It's none other than one of the most the popular cricket. Of course, he's out of cricket for a long time in native place, in the sense underarm cricket is of course is after being left for Gulf countries for the sake of job. Then Parvez is the one who dominated underarm cricket. And definitely nice to see him after a long time in this Bantwala SVS cricket ground representing for his home team. And Parvez will go into open the innings, and definitely it's going to be a joy for the fans of Parvez and the fans of Jai Bharat Nandavar to watch him after a long time to back to cricket. As far as underarm cricket is concerned, he back to cricket, and hope we're going to enjoy that the days which he is going to spend, the leaves we're going to spend in India. He will going to enjoy the cricket, especially the underarm cricket, and one who is represented for young friends Suruva, and really grab the places in the heart of cricket lovers, will going to face his first delivery. Right arm over the wicket balls. This time a little bit outside the line of leg stump. Parvez wanted to flick that one off his legs, but in that occasion, ball missing his bat, but umpire not missing to signal the leg by, and first run in the form of extra. It's one without loss of any wicket. 500 rupees straight away for Parvez. If he hit 1-6, he will going to get 500 rupees. For the first 6 is a 500 already here in our commentary box. Shine Bantwal
New Shine Bantwal announcing that 500 rupees for Farways for 6, and afterwards every 6 he will going to get the 500 rupees from New Shine Bantwal. Asan bowling away from us. Again, nicely driven, downs the mid-wicket region for a single. With that single, his partner is off the mark, Aris. Little bit correction, Arafa Kota, they're announcing that 500 rupees, little bit correction. Arafa Kota is announcing the 500 rupees for every 6 from the bat of Farways. Bowler Asan from the commentary box and right arm over the wicket to Farways, away from us. Starts that one really going to be a far big wide, the Spectra wide ball pitching outside the line of left stump, off stump and going further away, and nothing much to do with the delivery, and with that extra score Namuzan to 3 on the board without loss of any wicket. Hassan again back to his bowling mark, right arm over the wicket to Farways. Farways going for the drive, but not really getting that one from the bat. That's one a big problem actually. Whenever you are engaged in a overarm cricket, tennis ball, soft tennis ball. Of course, in Gulf countries, most of the tournament is organized as a overarm cricket. So when you are coming to the underarm cricket, you take a little bit time to adjust, isn't it? That's what the Farways taking his own time to settle down. As Hassan again bowling away from us. Right arm over the wicket bounce. Farways this time going for the swing of the bat, but ball is just missing his bat. Well within the reach of the batter, and Farways just questioning over umpire with his eyes, and umpire says that ball is well within the reach of the bat, and of course in overarm cricket little margin for error, the batter will going to get a wide when the ball passing the leg, but in underarm cricket a little bit opportunity for the bowler to bowl little bit outside the line of leg stump, and there is no chance at all for any run. Right arm over the wicket, Hassan bows this time, lovely shot, beautifully driven down to deep, cow point bowling for 4 runs, no need to run for that. Just like I mentioned, it takes a little bit time for the batter like Farways to settle down for underarm cricket. Once you settle down, have a look at that one. Absolutely exquisite. Imperious cover drive there from Farways. You know exactly the width is offered in the outside the line of stump, and Farways knows that there is no cover point fielder in the deep, and he's setting that one between backward point and cover point for 4 runs. With that boundary scoreboard more than to 7 on the board without loss of any wicket. Hassan bowls again, pressure straight away into the bowler after seeing that cover drive there from Farways. He just a little bit wanted to ball outside the line of off stump too far, so that Farways will going to miss the ball. But that line is again going further away, so that wide call by umpire. It's 8 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Hassan once again back to his bowling mark, bowling away from us. Right arm over the wicket delivers again the same thing, identical mirror display of previous delivery. That is a really one more wide in the same line and same length. Looks like the bowler is struggling, get his line and length, and straight away the Naushad is a man who is really having some word with the bowler to bowl what kind of delivery to bowl. Don't see which batsman is batting in front of you, just to see the stumps you want to bowl. Maybe that was a suggestion coming from Naushad to Hassan. Right arm over the wicket bowls. This I'm going for the drive, beautifully bowled, extra pace in the occasion. Width is offered. Farways just a little bit missing that opportunity to get one more cover drive, but he just misses that ball. One more over completed. 9 came from that over. It's a steady start and a good start there for the opening batters of Jai Bharat Nandawar. Getting 9 runs in first over, always going to be a good start. But in this particular condition, of course, we are witnessing some fantastic batting display in the previous match, in the first match as well. The team matrix chased down the 50 runs quite easily. Even the second match, the batting second team is chased down 40 quite easily. So that Nandawar need to see that what kind of target will going to be enough, because it's very difficult to predict in this particular cricket ground which total will going to be good enough, because of that dimension of this cricket ground is concerned, especially in the morning. It's not so easy for the bowler. Of course, the batsman definitely going to dominate because some part of the cricket ground is very short enough. And just like we are in the international cricket ground, the New Zealand cricket grounds, where this dimension of the cricket ground is concerned, similar to this SBS cricket ground. Here is Farooq, right arm over the wicket balls. Batsman going for the right. Chance of run out in the strikers, and it could be a disaster if the ball hits a stump. It's all over for Farways.
It's all over for Waze, all over for Waze. If the fielder in the short point region, of course, the bowler himself is trying for the run out, and ball just fractionally missing the stump. And Parvez definitely is out of the crease, isn't it? He's definitely out of the crease. Just watching in the replay, you are looking at in the replay, of course, he's gone. If it is a direct, it is gone. Lucky here for Parvez, and we will see how he will go into capitalize. Farooq again back to his bowling mark, away from us. Right arm over the wicket, balls to Parvez. Parvez reverse sweeping the ball, but not really getting that one from middle of the bat. But enough for him to come back for the second. Little bit yes and no, but throw which is not good enough. If it's a good throw, if it is a good fielder there in the back point, definitely the Parvez once again a little bit under pressure to complete that second run. But wide throw, so that Parvez completed a couple of runs. So with that couple of runs, the scoreboard numbers down to 12 on the board without loss of any wicket in the over number second in progress. Farooq again bowling away from us, right arm over the wicket, balls near nicely driven, roll of the wrist comes into play to pick the misfield, absolutely misfield, disaster. What could be a certain single or more than single, means almost a couple, not more than that, but fielder in the deep wideish long on did a big mistake that he couldn't manage to catch the ball, missing it completely, and Parvez got his second boundary. So needed to be very careful, jolly friends, because these all runs are going to comes into play when you're going to chase those runs. Here is again a bowler balls. Batsman drives, beautiful looking drive, straight down the ground, down to deep long on, boundary for 4 runs. This is a typical Parvez for you. This is a typical cricketing stroke, one who are dealing with all format of games, whether it is overarm cricket and underarm cricket. This is one of the useful cricketing stroke where you can't keep the fielder, when the fielding restriction is on, and he's just sending that one right between long on and long off. Of course, down to long on region. The long on is inside the ring, and once it's defeat the infield, just like I mentioned earlier, SVS cricket ground, very difficult to chase once it's beat infield. 20 on the board for the loss of without loss of any wicket. It's a very good start given by Parvez. Once again, he's out of the cricket, underarm cricket for a long time, but doesn't look like that. He's out of underarm cricket. Looks like he's after getting a 1 or 2 balls, a little bit shackling start, but he's really back strongly, and one more magnificent stroke down to deep cover point, boundary for 4 runs. Glorious extra cover drive. Hat-trick boundary coming from the blade of Parvez. Have a look at that one. Just a bit is offered, and how good in it. Just have a look at it on replay. It's nothing wrong with the line of the replay, but Parvez know exactly where the fielder is. Just deliberately playing a little bit inside out cricketing stroke. Lofted that one with the timing, with the placement, and exquisite footwork as well in the occasion there from the batter Parvez. He's really getting some entertainment for the cricket lovers. Score jumps into 24 now without loss of any wicket. This time appeal for leg before wicket, and slightly that ball is going. Oh, that time they're appealing for the run out, but I think the right time Parvez putting his bat in the inside the line. Otherwise, going to be a chance here for the run out. And one more productive over which is comes to an end after completion of over number 2. It's absolutely expensive over is comes to an end. 3 boundaries altogether. 15 came from that over, 9 from the first, and total score is 24 on the board. Without loss of any wicket. What a fantastic batting display here from Parvez. Even though he got some cash money for hitting a 6, but he is a kind of batsman. He never looks what kind of cash we'll going to get, but he only looks the what kind of stroke we need to play, and even it's the kind of batsman who will going to play as the merit of the delivery. And so far the 4 delightful boundaries which came from Parvez, and wait and see how long we'll going to carry his business in this particular innings. After that power play, the 5 fielders will going to be the outside the circle. Looks like Parvez is a little bit tired here. It's not so easy.
Parvez might be saying that I am got little bit shoulder problem. Might be the condition of weather is not that much of suitable when you are coming for need to adjust to the condition here. It's not so easy. Hot 31, 32 degrees Celsius temperatures which is recorded here. 24 on the board. Rashid balls down the leg stump, going to be a wide, and with that extra scoreboard moves on to 25. This is coming back to Parvez in overseas countries. He's got a record of scoring a highest run 185 in overall cricket format. It's outstanding record for any batter. Every time I'm watching him in social media and the Facebook, he's updating every performance what he's doing in overseas countries. It's nice to see, isn't it? One more wide whenever the talents from our area, talents from our South Kenda district going there and performing and grabbing the opportunity. It's always going to be the good news. It's always going to be a proud feeling for each and everyone from the Mangalorean and for the South Kenda district cricket lovers. Not only for West, but so many cricket players who are played underarm cricket here. They're performing very well in overseas countries. Again, going for the big swing of the bat, but ball pitched outside the line of leg stump. When you are bowling round the wicket, it's very difficult to get the leg before wicket, and suddenly that ball pitched outside the line of leg stump. He want that ball going to hit the leg stump, but the fact that ball which is pitched outside the line of the leg stump, umpire is rightly so Mohan not interested, but he is interested to give the leg by. 27 without loss of any wicket. Rashid once again back this bowling mark. Right arm, little bit correction, left arm over the wicket. To Parvez drives that one up his sleeve in the gap, down to wide long on region. This time ball will not go into the boundary, but before the fielder from deep long on to run across his right to field the ball. Ample time for Parvez to complete that couple of runs. With that couple of runs, scored moves on to 29 on the board. And absolutely, when Parvez is performing in the middle, absolutely it is a prize to watch. Some cricketing stroke has been delightful. And again, bowler bowling from the commentary box, and Rashid left arm over the wicket to Parvez. Parvez this time a little bit making room to play the shot. That's why he couldn't manage to reach the ball. Just try to play that one away from his body, because the bowler bowling angling around the wicket, so that ball just going away from the right-handed batter, well within reach of the bat, and there is no chance at all for any run. Rashid bowling with a short run up, left arm round the wicket to Parvez. Parvez this time across the line is plumb. This time is plumb. This time ball pitched in a line, and Parvez across the line of the delivery swings that one. The beaten by the pace and finding himself. The fact that the bowler bowling left hand, so that ball just pitched in a line, and batter finding himself right in front of a middle stump, and entertainment innings which is comes to an end here from Parvez. He played some enterprising cricketing stroke in the sense. 20 runs is scored in just 13 balls, and in that he got four delightful boundaries of this innings. So thank you very much for that innings, and a good innings comes in, and a good wicket here for Rashid as well. He got a vital breakthrough in this over. Harris is a new batter in, replacing Parvez at 29 for the loss of one wicket. Over number 3 is in progress. The big score on the board. They need to restrict team Jolly Friends. Of course, Jolly Friends has got some good players in the side. Even in a Yuvaratna Trophy also, some players. This time, lovely shot. What a shot. That was a shot of the day. As far as the cricketing stroke in the onside region is concerned, one of the most difficult stroke to play in the books. Because ball pitched in a line, isn't it? Nothing wrong with the line of the day, but it's so good in that slog sweep shot. Have a look at that one. Across the line, but he's so confident, isn't it? He played it very fine down to fine leg boundary for 4 runs. With that found, his scoreboard moves on to 33 on the board for the loss of 1 wicket. 41 boundaries and 35 sixes scored already in this tournament. Again, pushing and running, chance of round and outside, and fielder misses the stumps. Batsman Harris survives. Harris Junior and Harris Senior are the 2 players out there in the middle. So one more over, which is comes to an end. 3 overs completed, but a big score on the board here for Nandawar. And they got Jai Bharat Nandawar got a 34 for the loss of 1 wicket after completion of over number 3. 11.33 runs per over. Run rate is progressing here, and wait and see how many runs they will going to score. And it's going to be a
testing time for the bowlers of Jolly Friends, how to restrict the flow of the runs. And Gopi, welcome back once again for this match. Especially we're talking about the Parvez. We still remember when he was performing for Young Friends Uruva. He's been outstanding performer. But very surprising to see that, Gopi. He won out of the cricket for a long time, because playing underarm cricket, after playing a long time, you're engaged in overarm cricket, and quickly you're coming back to underarm cricket. It's not so easy. But Parvez, for him, it's very so easy. That shows his talent, and he's really played a very good innings for his team. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने कहा, परवेज एक वक्त के बेहतरीन बल्लेबाज अंडरआर्म क्रिकेट के जाने जाते थे और आज भी वो कदर, वो छाप को बरकरार रख चुके हैं। और जैसा कि आपने फरमाया, इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। इस बार गेंद को स्वीप किया खूबसूरती के साथ, रिवर्स शॉट 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक एरिस के बल्ले से लगता हुआ, जस्ट प्ले दैट वन विद अ ट्विस्टेड बैट एंड फाइंड्स द गैप एज वेल। तो चौका यहां पर प्राप्त करते हुए, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, किस तरीके से गेंद को इस वक्त खेला था विद अ ट्विस्टेड बैट, और 4 रन इस वक्त प्राप्त करते हैं। जैसा कि परवेज के बारे में अगर कहना है तो निस्संदेह आज भी वो छाप, वो कदर, वो बल्लेबाजी में बरकरार रख चुके हैं। इस पारी को खेलने के बाद सबको मालूम इस वक्त पड़ गया है, और अंडरआर्म ओवरआर्म क्रिकेट खेलने के बाद तुरंत अंडरआर्म क्रिकेट मैच में अपने फॉर्म पर वापस लौटना उतना आसान नहीं है। और यहाँ पर परवेज ने दिखाया कि अंडरआर्म क्रिकेट खेलने की क्षमता उनमें अभी भी मौजूद है। 20 रन उन्होंने बनाए। और जहाँ तक सवाल है, इस SVS हाई स्कूल के मैदान में बेहतरीन पारियां उन्होंने खेली है। और एक वक्त के यंग फ्रेंड्स उरुवा, जो मंगलौर के प्रतिष्ठित टीमों में से एक जानी जाती है, उस टीम के अविभाज्य अंग थे हो, और कई बेहतरीन पारियां उन्होंने खेली है परवेज ने, और कई मैचेस में अपनी टीम को विजय उन्होंने दिलाई है। तो यहाँ पर वो कमबैक कर चुके हैं, और जितने भी दिन वो यहाँ पर रहेंगे, मंगलूर में रहेंगे, निस्संदेह हम उम्मीद अपेक्षा करेंगे कि कई बेहतरीन पारियां उनके बल्ले से और निकले। तो यहाँ पर जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए फारूक का एक गेंद इस वक्त फेंक चुके हैं, अपनी ओर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 39 रनों पर पहुंच चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक सवाल है एक बेहतर स्कोर का, तो इस वक्त जय भारत नंदावर एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद पल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट टर्न पर रन के लिए दौड़ पड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर खतरा, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज दौड़ कर आए थे दूसरे छोर पर, वहां पर निशाना चूका, लेकिन जब बल्लेबाज ने दौड़ना शुरू किया और जब तक वो नॉन स्ट्राइक पर पहुंचे, सीधा थ्रो बैकअप होकर फील्डर द्वारा गेंदबाज के हाथ में पहुंचता हुआ, और गेंदबाज ने तेजी के साथ विकेट चटका दिया। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, और एक विकेट यहाँ पर गिर चुका। जो तो जय भारत नंदावर का जहाँ तक सवाल है, एक प्रतिष्ठित टीम है, बंटवाल के सबसे पुराने टीमों में से एक वो मानी जाती है, और आज भी अपनी छाप को वो बरकरार रख चुका है, और आज भी एक संतुलित टीम के रूप में वो जानी जाती है। और जब कभी भी वो मैचेस खेलते हैं बंटवाल परिसर में, तो मैदान दर्शकों से भर जाता है। तो ये बात ये जनप्रियता दिखाता है कि जय भारत नंदावर टीम जो कि कितनी जनप्रियता यहाँ पर रखता है। ये बात ये दर्शाता है कि जय भारत टीम कितनी जनप्रियता रखता है। ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला इस वक्त कवर पॉइंट फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। Not quite indicated at the last moment. Goalie stoppage and finally deep cover point took the catch successfully. और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था। He just played that one with a reverse shot and but can't find the cap as well, and because of that he lost his wicket. So 39 now. 3.3 was gone in their innings. Jai Bharat Nandawar looking in a terrific mood. They are progressing here nicely. Meantime, the next match will be played between E2 guys Ulaibettu versus Ayan cricketers Kunjatur. And because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. E2 guys Ulaibettu ಹಾಗೂ ಅಯಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरत कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक, बैकफुट पर जाने के बाद स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद पहुंची डीप बैक और थर्ड मैन पर 2 रन बल्लेबाज को मिलेगा. और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 41 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 41 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. गुड गोइंग ऑन हियर फॉर जय भारत नंदावर. और इस बीच
अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, एक्स्ट्रा विकेट गेंद थी। कंक्रीट पिच जो है उस पर गेंद देखिए कितनी तेजी के साथ जमीन के सहारे आ रही है, और इस गेंद की तेजी को पहचान कर खेलना है तो निस्संदेह एक बेहतरीन फुटवर्क की जरूरत होती है बल्लेबाज को। यह गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ की दिशा में, क्लीन कलेक्शन, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ इस वक्त स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 43 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड 4 ओवर्स कंप्लीटेड। तो जहां तक का सवाल है इस वक्त बचे हुए ओवर्स का, तो 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी। और जैसा कि मैंने और मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया, जेडी बॉयज बंटवाल कई समाजमुखी सोशल वर्क सेवाएं उन्होंने की है, खासकर बंटवाल के इलाकों में। खासकर लॉकडाउन टाइम में उन्होंने 500 लोगों को खाने की व्यवस्था उन्होंने की थी, और इसके साथ कई सोशल वर्क उन्होंने किए, और निस्संदेह काबिल तारीफ सोशल वर्क उन्होंने किया है। तो इसलिए एक बार फिर से हम जेडी बॉयज बंटवाल का अभिवादन करते हैं, और उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में और समाजमुखी सेवाएं, समाजमुखी कार्य, सोशल वर्क उनके द्वारा हो और समाज को एक अच्छा संदेशा मिले। तो यहाँ पर उनको जेडी बॉयज बंटवाल के एक बार फिर से बधाई देते हुए, अभिवादन करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए ये गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट एंड 6 रन्स जस्ट ओवर द गॉन ओवर द कवर पॉइंट फील्डर साइड, एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस फॉर अ ह्यूज वन। तो जाबीर का जहां तक सवाल है, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट उन्होंने गेंद को उछाला था, देखिए किस तरीके से। और यहां पर जाबीर और दूसरे बल्लेबाज अनीस है, तो बेहतरीन बल्लेबाजों में से वो जाने जाते हैं जय भारत नंदावर के। यहाँ पर जाबीर के द्वारा ये छक्का यहाँ पर लग चुका है। अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, दिशाहीन गेंद, नो बॉल का इशारा, रन के लिए दौड़ पड़े। इस बीच रन आउट का खतरा और इसी के साथ विकेट गिर चुका है। नो बॉल का भी इशारा हो चुका है, ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, स्पेक्ट्रा वाइड, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 50 रनों पर। द 50 कम्स अप फॉर जय भारत नंदावर। व्हाट अ टेरिफिक प्रोग्रेसिव ईयर नाउ फॉर देम। नो बॉल आल्सो कॉल्ड बाय अंपायर, एंड फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए। देखना यह कि बल्लेबाज इस फ्री हिट गेंद पर किस तरीके का स्ट्रोक खेलते हैं। E2 गाइस, उलाय बेट्टू और आयन क्रिकेटर्स कुंजतूर के लिए एक बार फिर से मैं दरख्वास्त निवेदन करता हूं कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। जेडी बॉयज ट्रॉफी 2023 डे नाइट क्रिकेट श्रृंखला, और इस श्रृंखला का दूसरे दिन का तीसरा मैच यहाँ पर प्रगति पर, और मुकाबला इस वक्त जारी है जय भारत नंदावर और जॉली फ्रेंड्स बजाल के बीच। तो इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज और दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा, चूंकि परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। नौशा इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त। इस बीच गेंदबाजी नौशा इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद की गति को भांपते हुए अपने स्ट्रोक को रोक लिया था और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, लेकिन टीम को मिला 1 और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 51 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 51 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। सामना करते हुए इस वक्त अनीस और गेंदबाजी इस वक्त नौशा गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को पैडल स्वीप कर दिया। जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एंड प्ले दैट वन डाउन टू अ स्क्वायर लेग फॉर अ सिंगल। 52 नाउ। खालिद स्ट्राइक पर आ चुका है। खालिद के लिए एक इनाम इस वक्त घोषित किया गया है। 500 रुपए का नकद पुरस्कार खालिद के लिए घोषित किया गया है अगर वो एक छक्का लगाते हैं तो। अराफा कोटे इनकी ओर से 500 रुपीज कैश प्राइज फॉर खालिद फॉर हिटिंग अ 6 फ्रॉम अराफा कोटे। देखना है कि खालिद छक्का लगाते हैं या नहीं। दाहिना तो ओवर द विकेट ये गेंद बेहतर गेंद थी, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है इस वक्त 52 रनों पर। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज नौशा इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए
दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर नहीं थी, लेकिन बाहर ज़रूर थी और सही गेंद घोषित अंपायर का। हालांकि बल्लेबाज ने वाइड की मांग ज़रूर की, लेकिन सही तरीके से अंपायर ने इसे सही गेंद घोषित किया और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 52 रनों पर। और इस ओवर में अंतिम बार नौशाह गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। दोपहर का वक्त 12:15 यहाँ पर बच चुके हैं और इस वक्त धूप का प्रकोप इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ बढ़ता नजर आता हुआ। 11:46 को ये मैच शुरू हुआ था, ये पारी शुरू हुई थी। अब 12:16 यहाँ पर बच चुके हैं, 30 मिनट बीत चुके हैं और उनकी पारी का 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ रोक द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार उछालना चाहा, बेहतर गेंद उनके दोनों पैरों के बीच से होकर सीधे निकली, विकेट कीपर के हाथों में रन नहीं मिला। 5 ओवर की समाप्ति, 5 overs completed and after 5 overs still Jai Bharat Nandavar looking in a commanding situation. 52 for the loss of 4 wickets after completion of 5 overs they scored and still just a last over remaining in their innings. 12:15 दोपहर के बज चुके हैं और धूप का प्रकोप इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ और बढ़ता नजर आता हुआ और सूरज आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू चुका है, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ। और इस बढ़ते हुए धूप के साथ साथ इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती नजर आती हुई। भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए। और इस भीषण गर्मी तले एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट जेडी बॉयज 2023 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई इस सुंदर से एसवीएस हाई स्कूल मैदान पर। और जहाँ तक का सवाल है तो वक्त इस वक्त हो चुका है 12:16। तो अंपायर ने इस वक्त की सूचना दी खिलाड़ियों को और इस बीच सामना करने के लिए तैयार अनीस इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉट फाइनल की दिशा में भी फील्ड, लेकिन बैकअप होता हुआ वहां पर नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 53 रनों पर। 22 का इशारा अंपायर श्रीनिकेत का और 53 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदें अब बाकी और खाली स्ट्राइक पर आ चुके हैं। 500 रुपए का नकद पुरस्कार उनका इंतजार इस वक्त कर रहा है। अगर वो छक्का लगाते हैं तो अरफ इनकी ओर से। और इस बीच एक बार फिर से खालिद बाएं हाथ के गेंदबाज का सामना करते हुए पैरों पर गेंद टकराई, शॉट गली की दिशा में गेंद पहुंची। इस बीच रन का इशारा 1 और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 54 रनों पर। 54 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, लेग बाय का इशारा अंपायर का। और फिर से एक बार गेंदबाज राशिद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ और दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। लेग स्टंप से काफी पास, स्पेक्ट्रा वाइड एंड बीट द फाइन लेग फील्डर and it's crossed. In fact I think it could be crossed over the fence. Just we have to wait for the umpire signal. यहाँ पर वाइड का इशारा और 4 रन घोषित, यानी 5 रन 5 वाइड्स एडेड टू द टोटल। और इन 5 वाइड्स के जरिए वह स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर क्या निर्धार देते हैं इस वक्त मॉनिटर पर चेक करने के बाद। फिलहाल अगला मैच E2 guys will takes Ulai Bettu will takes over Iron Cricketers Kunjattur, and because of that I request all the players of these two teams please to be reported here to sign in the official chart. ಹಲೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗವಿದೆ. 2 ವೀಲರ್ ಆಗಲಿ 4 ವೀಲರ್ ಆಗಲಿ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಮುಖೇನ ಇತರ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಾಗೆ ನಮ್ಮದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 4 ವೀಲರ್ ಆಗಲಿ 2 ವೀಲರ್ ಆಗಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಡಿದಂಥ ಬೆದ್ರ ತಂಡದ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಯವರ ಹಣ ಒಂದು ಕಳೆದೋಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಡಗ್ಔಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ನಂದಾವರ ತಂಡದ ಡಗ್ಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿದ್ರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೆರೆದು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಎಂಡ್ಗೆ ತನ್ನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಒಂದು ಅಮೌಂಟು 2 ಡಗ್ಔಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೆದು ಆ ಡಗ್ಔಟಲ್ಲಿ ಕೂತಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ
ದಯವಿಟ್ಟು ಆತಿಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೇರೆದು ವೇದಿಕೆ ಅಥವಾ ಡಗೌಟ್ಗೆ ತಂದುಕೊಡಿ. ಸಾರಿ, ಡಗೌಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಎಂಡಿಗೆ. ಅಥವಾ JD ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸದಸ್ಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೆದ್ರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಡಗೌಟಲ್ಲಿ ಕೂರುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಅದು ಬಿದ್ದಿರಬಹುದಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹರಿದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗವಿದೆ, ಲಭ್ಯವಿದೆ. 2 ವೀಲರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ, 4 ವೀಲರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ನಿಂತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಾಗೇನೆ ಶ್ರಮ, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಕಾರಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬೈಯದಿರಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಅವರು ನೀಡಿದಂಥ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Thank you, Prashant. And not out is the call. And the batsman survived in this delivery. So have a look at this in the replay. जब विकेट उखाड़े गए थे तब बल्लेबाज अपना बल्ला क्रीज के अंदर ला चुके थे. तो यहाँ पर वो बचते हुए और अब रन्स यहाँ पर मिले. एक स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 61 रनों पर. कुल मिलाकर गेंदे बाकी है अब सिर्फ 2. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. बाएं हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त रशीद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सामना करने के लिए तैयार. अनीस खालिद नॉन स्ट्राइकर पर ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 62 रनों पर. 62 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6th एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन द इनिंग्स. और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को चिप किया सेंटर ऑफ द ग्राउंड. लेकिन फील्डर काफी पीछे, लॉन्ग ऑफ पर नॉट मोर देन अ सिंगल. इन फैक्ट दे कम बैक फॉर द सेकंड एंड दिस टाइम ही वोंट सर्वाइव. रनआउट के रूप में ये विकेट गिर चुका है खालिद का. और यहाँ पर कुल मिलाकर 5वां विकेट खो चुका है जय भारत नंदावर. द स्कोर इज नाउ 63 एंड द 5th विकेट डाउन एंड जस्ट अ लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स. अंतिम गेंद बाकी और देखते हैं इस अंतिम गेंद में बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाता है. E2 guys will Ulai Bettu will takes over Iron Cricketers Kunjattur, and because of that I once again request all the players of these two teams to please report to the stage immediately. The next match will going to play between these two teams. The last ball of their innings is now coming up. अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. बाएं हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा. विकेट कीपर ने रनआउट यहां पर किया और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप एंड द इनिंग्स ऑफ जय भारत नंदावर is now completed. They finished with the 63 for the loss of 5 wickets in the stipulated in the 63 for the loss of 6 wickets in the stipulated 6 overs, and now they set a huge target in front of Jolly Friends Bazaar. 64 they have to score for victory in 6 overs, and as far as the required run rate is concerned, exactly 10.67 the required run rate for them at this situation. 67 they have to score. In fact 64 they have to score in the stipulated 6 overs with the help of 10 wicket. The present equations for them, and let's see can they reach the target or not. 64 the target for them in 6 overs. With the help of 10 wicket they have to score for victory, and their inning starts with just a short while. And now we'll be taking a short break, and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English when the match when the innings of Jolly Friends will going to begin. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. YouTube guys, Ulai Bettu ಹಾಗೂ Iron Cricketers Kunjattur. E2 guys, Ulai Bettu.
So thank you very much, Gopi. And it's absolutely the huge total to chase down for team Jolly Friends. And one of the highest total score of the day number 2. The 50, which is the first highest score in the day number 63, which is a total score. 64 going to be a target. 64 ರನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 6 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ So everything is ready here, and umpire ready. Here is the first ball from the commentary box, and opening batters are came into middle. Now Fall will go into starts the proceedings, and Asghar and Tazuddin are the two opening batters are in the middle. Asghar is the good striker of the ball, and Tazuddin is also one of the fantastic striker of the ball. And if these two batters will going to get some good start, the positive start in the first 2 overs, then it's going to be the match is more interesting. So wait and see how Jolly Friends will going to exploit the condition of fielding restriction in the first 2 overs. Now Fall bowling away from us. Right arm over the wicket, balls to Asghar. This time full toss, very driven that one down to mid-wicket region. Of course, once it's a full toss, looks like it's going to be opportunity for the batter. But of course, batsman played it as per the merit of the ball, and so that ball went towards the mid-wicket, and very good field set placement there by the captain of
Nandawar. Just like my friend Gopi is mentioning about Jai Bharat Nandawar is a kind of team which has got a long history. Even our time when I was representing for Hanuman cricketers, I still remember the Jai Bharat Nandawar is the only one team which is representing from towards representing in a UCG cricket ground for some prestigious cricket tournaments. And I still remember that name, some good players in that Nandawar. This time going for the drive. This time Farvez is a fielder and the short mid on, so that batsman not interested for the single. Rightly so, the asking for trouble. So again now a little bit change in the field now in sight of deep long off. Farvez setting one fielder on down to deep long on. It's very interesting to see that the two protection has been given in the onside region. There is no protection in the offside region. So wait and see how Naufal will go into ball the line here, because any width in outside the run of off stump, it's going to be opportunity for the batter to get a boundary. Oh, outside the run of off stump too far, wicketkeeper behind the stump misses the ball completely from the hand, so that 2 wides, 1+1, 2 more to the total. With that 2 runs, scoreboard moves on to 3 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Coming back to JD boys, of course JD in the sense Jagadeep D Suvarna, and he's the one is leading from the front and is really running this JD boys Bantwal very well under his great leadership. So again Naufal bowling away from us, right arm over wicket balls, beautifully bowled, plumb in front of wicket, no doubt at all, ball just hitting the leg, and now batsman lifting his bat, showing his bat, that ball hit his bat, but ball almost missing everything. Just have a look at that one replay. Absolutely, that ball is pitched in a line. Have a look at that back leg right in front of the leg stump. Absolutely good decision there from umpire. No doubt at all in that occasion. Now the batsman have to respect the decision of umpire, and wicket number first, which is back into pavilion. 3 for the loss of 1 wicket in the over number first is in progress. So good start here from the bowler Naufal, as he bowls that very good line in the occasion. Asghar is back into pavilion in the form of leg before wicket, and a new batter walking towards the middle for team Jolly Friends Bazal. So slowly walking towards the middle. 3 for the loss of 1 wicket. And coming back to JD boys Bantwal, their helping hands. Absolutely fantastic to see that the wheelchair is provided for disables in the year in 2021. Their provided wheelchair for Kratin. Kratin was suffering from just we're talking about disabled, and JD boys Bantwal provided wheelchair for the disables. So very good to see that the JD boys engaging in social work in their social work, in the sense along with the cricket, they're taking equally the social work as well as cricket. They're taking very equally, and this is a one team. JD boys is one team which is performing very well in South Kannada district, in every format of games, whether sixers, sevens, or full ground cricket. And totally they are engaging in everything. Here is the next one. Right arm over wicket balls going to be a delivery which is outside the leg stump and wide signal umpire. After this time again they're going for the single, and they're grabbing the opportunity of that overthrow, and scoreboard numbers on to 5 on the board for the loss of 1 wicket. Match number 4 will be played between E2 guys Ulaibit versus Ayan cricketers Kunjattur. So that I request all the players of both the teams please complete the formalities of signatures as soon as possible. E2 guys Ulaibit ಹಾಗೂ ಅಯಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಮಯದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. 9 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. E2 guys Ulaibit ಹಾಗೂ ಅಯಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. Nice run, nice sound coming from the bat of batter Safwan. These are all our Jolly friends, of course, Jolly friends from Bajal, and one who really very good performer. I am watching these Jolly friends performing in that Netravati trophy, as well as
Bajal Trophy, and this one the team Jolly Friends are become the runner-up in the Netravati Trophy. They defeated against NM Cricketers Mangalore in the final, and even in the BFC Trophy, Bajal Trophy, and they also came into the semi-final. And we cannot underestimate that the potential of Jolly Friends, but question raising here is that against some very good bowling department of team Nandawar, and it's going to be a big ask, but not impossible in cricket. Cricket is a kind of game. It's very difficult to predict. It's absolutely unpredictable game. It's a game of glorious uncertainty. We wanted to get that uncertainty after that very slow start. 7 runs, I don't think it's going to be a big start by losing 1 wicket. They need to capitalize at least this over, second over. The 15 to 20 runs will going to open the gate for team Jolly Friends. Anish balls to first ball outside and off time. Batsman going for the drive. Safwan not really getting that one from the middle of the bat. Going for the cover drive. If you're able to get that one middle of the bat, he can get the boundary for that. But unfortunately, he didn't got enough bat onto that. Ball went towards a short third man division. One more addition to total with the addition of that singles covered numbers on to 8 on the board for the loss of 1 wicket. What a fantastic cricket tournament is organized here. I still remember that the date the last year. It's the mega cricket tournament, the final day. This ground which is covered with a record number of spectators. Appeal for leg before wicket is gone. One more big wicket. This is a sharp incoming delivery. Tazuddin going for the drive. Missing the line completely, and umpire not missing to raise his finger. And that was really absolutely fantastic incoming delivery. Have a look at that one in the replay. That ball, a sharp incoming and absolutely flum. No doubt at all. If Tazuddin will go in to watch the replay of this delivery, the dismissal in YouTube channel, he will get why the umpire given him leg before wicket, because his back foot absolutely right in front of middle stump. And umpire Shiniket has got no hesitation in his mind to raise his finger. And just like I'm mentioning about the quality of umpires along with the umpire for this tournament, I'm talking about Arish Padil and Mohan Ayadi is a very popular umpire, and Shiniket is the one who debuted his umpiring in this particular ground and in this particular tournament. Absolutely fantastic, because afterwards he's never looked back. And as far as underarm cricket is concerned, he started his career as an umpire in this particular cricket ground, and thanks to Arish Padil is the one who brought him to SVS cricket ground. Here is the first one, next one. Right arm over wicket, bounce. Driven that one beautifully. Dart in the gap. Down to deep long on boundary. Fielder tried to stop that one. Good piece of fielding there by the fielder. It's not so easy. And jersey number 887 getting some appreciation from all the players of his team. Jemmy is the man, and a gem of the field here from him, Jemmy. And have a look at it on a replay. Absolutely, it was a very good stop there from the fielder. It's not so easy to bend it to his left hand, stopping the boundary. And that's a very good work there by the fielder. That's what always lifts the spirit of other players, isn't it? The kind of the fielding will going to lift the spirit of other players as well as his bowler. Again, looking for the drive. Again, they missed it completely. The new batter Naushir searching for right track, but right stroke, but missed it completely from the bat. Shiniket already they got some certificate for representing in the ICC Academy. Umpire accreditation certificate he got. The cricket umpire accreditation level 1. He won the certificate. It's an amazing achievement, and it's a proud moment for all of us. The young, talented, energetic Shiniket Rao is doing a good job in this umpiring field. This time umpire asking for the third umpire. Looks like the batsman is struggling. It never looks like that the body language of the batsman is going to be safe. But here is the third umpire have to look. The third umpire have to look here that whether the batsman is safe or not. The batsman going for the drive straight to the hands of a fielder. And this is a really true spirit of game. And a big round of applause required for the wicket keeper and Nandawar team. Nandawar, the wicket keeper, of course, Arish saying that I missed the ball. Absolutely, he misses the ball. We can see in the replay. Of course, wickets are uprooted, but not from the ball.
and ball which is missing it. That's why umpire Mohan Ayadi is asking for the third umpire, because Mohan Ayadi need to see that, of course, ball misses the stump, whether the ball hits the wicket or not, and that's what I think needed, isn't it? Not to waste that time. You need to see that very precious time is very precious here, and asking for third umpire, we are losing at least 7 to 10 minutes to get the result, and this is absolutely good, good one there from wicket keeper. Ball just missing the stump, and is uprooted the stump from the hand. The right arm over the wicket, delivers. Going for the slog sweep shot, but missing it completely. And one more fantastic delivery there from the bowler. Bowler doing a great job here. Anis is not giving any opportunity. Good over. Just 5 runs came from that over. Now target is now looking tougher and stiffer here for team Jolly Friends Bajal against Jai Bharat Nandhavar. Looking in a commanding position. 52 runs required. Anis once again justifying. Is a very talented bowler. One who represented for Zaman Boys Kalladka in that Yuvaratna Trophy 2023, which is organized by Team Fortune and UCG Ground with the memory of Punit Rajkumar. Zaman Boys came into the final, becomes a runner-off, and Anis is the one is contributed for the success of Zaman Boys Kalladka. And a lot of talents, I still remember the lot of talents which is came from here. Nandhavar, Bantwal areas like Panemangalore. We have a lot of course, actually one team I remember, the Azad Godinabal is a one more team during our time. This time he lofted it, but I don't think he will going to get the distance. He will going to get the fielder there in the deep long off. He got the connection, but not a sweet connection. He played it in a very high, mistimed stroke. Have a look at that one. And just putting his front foot out of the line, tried to get some power behind the stroke, but couldn't manage to get the timing, isn't it? Nothing wrong with that shot selection, but something wrong with that timing, which he didn't got enough to get that past that fielder in the deep long off. That's all happening when you're chasing a big total like 52 to win this match, 63 to win this match. It's really very difficult to chase down. Thank you very much, Prashant, and thank you very much for all the sponsors for the success of this cricket tournament. And here is Zabir will go into ball, the first ball. Nicely driven that one down to deep backward square leg region. Good piece of fielding there by the fielder, because ball is almost rocketing towards the fence, isn't it? Ball is just rocketing towards the deep backward square leg region. A little time for the reaction for the fielder in the deep backward square leg, but he's reacted very quickly to stop the boundary, and just a single here for the batter and scored Namozan to 12 for the loss of 3 wickets. And here is a bowler again, Zabir, bowling right arm over the wicket, and bowls inside edge of the bat. Ball went towards a short fine leg. Very interesting at short fine leg. Aris just fields the ball, and Anis, his brother, in third man. Very good to see that two brothers is standing together. One is at short third man and one at short fine leg. Anis and Harris. And again the ball went towards Harris. Anish, the fielder there in the short fine leg, fields the ball. Spectra wide. As Kubota moves on to 14 on the board for the loss of a 3 wicket. Bowler is struggling after getting a very good line in the first 2 balls. This time across the line, swings that one nicely down to deep fine leg boundary. And before the square leg fielder to run across to its right to field the ball, ample time for the batter to complete the single. Couple lead precaution. 15 on the board, 15 for the loss of
3 wicket. Again the bowler Zabir bowling right arm. This time top edge. And the ball will going to land very safely down to square like this. Oh, the batsman, a little bit problem. That's what one of the problem, that when you're having a artificial pitch, the cement pitch, always going to be dangerous. When you are having a fine surface of if fine surface of that concrete pitch will going to be a big problem when you are not having a grip, proper grip in the boot. And scoreboard is more than to 16 on the board. Right arm down the wicket. This time driven. Beautiful shot. Absolutely terrific. Safwan this time hitting the ball quite nicely. Even across the line. He swings that one down to deep backward square leg boundary for a 6. And score jumps into 22 on the board. Umpire, please note that in the first over, only 5 balls delivered. Only 5 balls delivered, and the bowler, our scorer, a little bit reacted lately. So I want one bowler can bowl 1 extra deliveries. That's happened in the first over of the power play. So now they're claiming here that 5 balls ball. First over. Yes, even so 22 for the loss of 3 wicket. 3 overs completed. Now time for change in commentary box as well. It's over to Gopi for the further explanation of the match. Nicely reverse sweeping that one down to deep third and bound deep backward point division boundary for 4 runs. Lovely execution there from the batter. And this time I think Nizam is the batter. Just got that one right from the middle of the bat. Reverse sweeping the ball down to backward point boundary for 4 runs. With that boundary score now jumps into 27 on the board. Equal battle is on from these two teams, and it's going to be a very interesting match. धन्यवाद सतीश। तो 27 रन बन चुके हैं। पहली गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ मोड़ दिया था और स्कोर इस चौके के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 26 in fact, and 64 the target. 38 more runs now they have to score for victory in remaining 17 deliveries. Again this बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड की रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर 27 now. 37 more runs now they have to score for victory.
in remaining 17 balls. Absolutely difficult task, but not impossible. If they batted bravely, it would have been possible for them. Again, drive kiya, खूबसूरत stroke into the gap as well. He gets at least couple for that. It cuts it off just inside defense after being some chase, and because of that, the batsmen have got a couple of runs for that. और इन दो रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 29 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 29 for the loss of 3 wicket. 35 more runs now they have to score for victory in remaining 16 deliveries. और फिर से एक बार गेंदबाज तैयारी है, गेंद शफल होते हुए गेंद को खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइजेशन करते हुए खेल दिया. फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. तो स्टंप्स को कवर करने के बाद थोड़ी सी शफल होते हुए गेंद को इस वक्त मोड़ दिया था खूबसूरती के साथ. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले. स्टंप्स एक्सपोज किया था इस वक्त और गेंद डीप फाइन लेग सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 33 रनों पर. संघर्ष अभी भी बरकरार रखता हुआ जॉली फ्रेंड्स और कहां तक सवाल है लक्ष्य तक पहुंचने का. तो 31 और रनों की जरूरत विजय के लिए और 14 गेंदें इस वक्त बाकी. 31 more runs now they have to score for victory in remaining 14 deliveries. और गेंदबाज अनीस इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट स्वीप करना चाह. नॉट क्वाइट पेंडिंग इट एट द लास्ट मोमेंट. ओह दिस बार खतरा हो सकता है नॉट स्ट्राइकर पर, लेकिन थ्रो को रिसीव करने में असफल इस वक्त गेंदबाज. अगर ठीक तरह से गेंद को वो कलेक्ट कर लेते तो निस्संदेह यहाँ पर नॉन स्ट्राइकर पर खतरा पैदा हो सकता था, लेकिन गेंद को वो ठीक तरह से रिसीव नहीं कर पाए गेंदबाज. फलस्वरूप बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित वापस. कोई क्षति नहीं बल्लेबाज के लिए और 14 गेंदें अब कुल मिलाकर उनकी पारी में बाकी और 31 रन चाहिए. 2 balls लेफ्ट इन दिस ओवर. और इस बीच गेंदबाज अनीस गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयारी है. गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा. एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी बिल्कुल जमीन के सहारे आती हुई और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. 31 रन और बनाने हैं 13 गेंदें बाकी. उल्टा पलटा इक्वेशन इस वक्त दिखाई देता हुआ. 31 in 13 deliveries still they have to score for victory. और इस ओवर में अगली बार अनीस ये गेंद चिप गया मिड विकेट पर, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में. Lord finds the gap as well, and because of that, the batsman paid the penalty for that. Hit that one pretty hard, but can't find the gap. And finally, deep mid-wicket fielder made no mistake. Have a look at this in the replay. किस तरीके से गेंद को उछाला था. स्ट्रोक्स में रफ्तार था, लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं. और यहाँ पर डीप मिड-विकेट के फील्डर ने कोई गलती नहीं की. 33 रनों पर चौथा विकेट गिर चुका. 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 4 overs completed. 34 for the loss of 3 wickets. Still the batsmen of Jolly Friends Bajal searching for the right track. 2 overs left in overall calculation in their innings, and in 2 overs still they have to score 31 more runs for victory. Exactly 15 and a half runs per over, that is required run rate for them at this situation. And let's see can they reach the target or not. Meantime, E2 Ulai Betu will takes over Ayan cricketers Kunjatur in the next match, and because of that I once again request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. 31 needed in 2 overs. Exactly 15 and a half runs the required run rate for them at this situation. जमीर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और नया ओवर उनकी पारी में यहाँ पर शुरू होता हुआ ऐसा कहना पड़ेगा जेटी बॉयज माफ कीजिए ऐसा कहना पड़ेगा जॉली फ्रेंड्स बजाल को. इस वक्त चौके या छक्के ही इस मैच में वापस ला सकते हैं. बल्लेबाज और अंपायर के बीच में कुछ हद तक बातचीत यहाँ पर चलती हुई और जमीर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. और सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई. 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात. और जहाँ तक का सवाल है इस बीच अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए ये गेंद इस बार ड्राइव किया. नॉट क्वाइट पिट, लेकिन बैक टू द बॉलर की दिशा में और बल्लेबाज को रन इस बीच नहीं मिलेगा. स्कोर रुक चुका है इस वक्त 33 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. 31 और रन चाहिए. 11 गेंदें बाकी. और फिर से एक बार गेंदबाज जमीर गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए नौशीर सामना करते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी. फुलर लेग गेंद को साइड पर उछालना चाहा. वाइड के लिए मांग की, लेकिन गेंद कुछ ज़्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी. सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा सही निर्णय. स्कोर रुक चुका है इस वक्त 33 रनों पर. 2 लगातार डॉट गेंदें, 2 बेहतर गेंदें इस वक्त गेंदबाज जमीर इस वक्त फेंक चुके. 10 गेंदें बाकी. 31 रन और चाहिए. 31 more runs for victory in remaining 10 deliveries. और
एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए जमीर ये गेंद इस बार स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड एंड हिट दैट वन मिलियन माइल्स. So 6 into the account, much needed sixer came from the bat of नौशीर. और इस छक्के के साथ वो यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा जॉली फ्रेंड्स बजाल की उम्मीदों को बरकरार रख चुके हैं. देखिए किस तरीके से उछाला था. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले. और गेंद सीधे कमेंटेटर बॉक्स की बाईं और इस वक्त सीढ़ियों पर जा गिरी है सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए. सफान ने इस ये छक्का जो कि लगाया था. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त सफान के बल्ले से. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर 39. He keeps the hopes alive with 6 for Jolly Friends Bajal, and now they have to score 25 more runs for victory. 9 balls to go in their innings. और इस बीच अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त जमीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए सफान सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बल्ले का भीतरी किनारा रन के लिए दौड़ पड़े. नॉट स्ट्राइक पर थ्रो पहुंचा लेकिन यहां पर तीसरे अंपायर के लिए मांग इस वक्त दी गई है. सो द कॉल फॉर द थर्ड अंपायर. और यहां पर देखते हैं बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं जब तक विकेट उखाड़े गए थे गेंदबाज द्वारा. तो चतुर सोच क्लेवर थिंकिंग शॉट फॉर लेग फील्डर का गेंद को फेंका था नॉन स्ट्राइक एंड पर. और यहां पर देखने वाली बात यह है कि जब विकेट चटकाए गए थे तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं. इस बार आई थिंक ही फेल शॉर्ट ऑफ हिज क्रीज. ही इज गॉन. तो विकेट यहां पर गिर चुका है रन आउट के रूप में. और इस विकेट के पतन के साथ ऐसा कहना पड़ेगा समस्याएं और बढ़ चुकी है जॉली फ्रेंड्स के लिए. द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर देम. ಈ ಟು ಗಾಯ್ಸ್ ಉಳಾಯ್ಬೆಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಅಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ. ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಈ ಟು ಗಾಯ್ಸ್ ಉಳಾಯ್ಬೆಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಅಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಟಾಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್. तो 8 गेंदें बाकी और रन से चाहिए 25. और बल्लेबाज का आगमन इस वक्त हो चुका है. और गेंदबाज जमीर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लेफ्टी बैट्समैन इज नॉट गोइंग टू फेस. ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद इस बार गेंद पहुंची शॉर्ट फॉर लेग पर. एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी लेग से कुछ बाहर की ओर निकलते हुए और आखिरकार इस गेंद को छोड़ दिया था. और सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा. एक गेंद डॉट हो चुकी है. 7 गेंदें बाकी 25 रन और चाहिए विजय के लिए. 25 टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 17 ओवर्स. द टारगेट The equation seems to be stiffer and stiffer now for Jolly Friends Bajal. और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यह गेंद इस बार ड्राइव किया फर्मली स्ट्राइक बट नॉट मोर देन अ सिंगल. वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 40 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड लास्ट ओवर रिमाइनिंग इन द रिंग्स. 24 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट ओवर. 6 गेंदों में 6 चौकों की जरूरत है. और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा कुछ चमत्कारी बल्लेबाजी ही अब जॉली फ्रेंड्स बजाल को इस मैच में वापस ला सकती है. फिलहाल जय भारत नंदावर का तख्ता यहाँ पर भारी लगता हुआ. तो इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए जलील. और जहां तक जलील का सवाल है यंग फ्रेंड्स उर्वा की ओर से यंग फ्रेंड्स उर्वा के लिए उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया था 30 ओवर का फॉर्मेट यूएफसी ट्रॉफी में जब फाइनल मैच में वो रनर्स हुए थे. और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन उस श्रृंखला में उन्होंने दिया था. और यहाँ पर देखना है कि इस अंतिम ओवर में गेंदबाज जलील उस सफलता के सिलसिले को यहाँ पर दोहरा पाते हैं या नहीं. और नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए 24 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट ओवर. और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. यह गेंद ड्राइव किया फर्मली स्ट्रक बट नॉट मोर देन अ सिंगल. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 41 रनों पर 41 नाउ
for the loss of 5 wickets. 23 required of 5 balls now. लक्ष्य और कठिन यहाँ पर होता हुआ हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट करते हुए इस वक्त कप्तान जय भारत पाने मंगलूर के, और इस बीच अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर जलील इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तैयार। कवर पॉइंट फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया है और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट जलील। यह गेंद उछाला, क्लीन हिट एंड इट्स गॉन ओवर द फेंस। इट्स अ बिगी। छक्के के साथ अभी भी उम्मीदों को बरकरार रख चुके हैं बल्लेबाज। 47 रन, जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बट, ऐसा कहना पड़ेगा। उछाल को पहचाना था और गेंद को खूबसूरती के साथ डिस्पैच कर दिया लॉन्ग ऑन सीमा का बाहर छक्के के लिए। अब 17 रन चाहिए और गेंदें बाकी है 4। तो एक फील्डर को अंदर बुला लिया गया पेनल्टी के तौर पर, क्योंकि निगदित समय में स्टिपुलेटेड टाइम में उनके गेंदबाज पूरे ओवर नहीं फेंक सके हैं। तो 4 गेंदों में चाहिए 17 रन विजय के लिए और मैच में कशिश अभी भी बरकरार। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया हवे में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, काफी वाइड थ्रो और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 49 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर 49 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। 3 balls left. 3 balls left and 15 runs more. Now they have to score for victory. चौके और छक्के इस मैच में जॉली फ्रेंड्स को इस मैच में वापस ला सकते हैं। यह गेंद उछाला, फुलर लेंथ गेंद थी, स्लोअर गेंद चूंकि और अब 2 गेंदों में 15 रन बनाने और ऐसा कहना पड़ेगा यहां पर जय भारत नंदावर की विजय निश्चित है। अगर गेंदबाज इन बचे हुए 2 गेंदों में कोई नो बॉल या वाइड, इस बार बेहतर गेंद थी। इस वक्त गेंद पहुंची पॉइंट पर, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। So the score was raised at 49 for the loss of 5 wicket. जलील अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। उछाला लॉन्ग ऑफ पर और आसान सा कैच लपकते हुए एक्स्ट्रा कवर के फील्डर और इसी के साथ मैच यहां पर मैच इस वक्त समाप्त हो चुका है एंड Jay Bharat Nandawar won the match by 14 runs against Jolly Friends Bajal, and with that 14 runs victory they are through to the next round of this competition. Next match E2 guys Ulaibetu will takes over Ayan Cricketers Kunjatur और वो मैच यहाँ पर शुरू होगा चंद लम्हों बाद। तो एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू।
Thank you very much, Gopi. And now it's a time to announce the Man of the Match award. And Man of the Match, which goes to the man who really performed very well from the bat. After a long time, he came into underarm cricket and he performed very well, scoring 20 valuable runs for his team. Farways of Jai Bharat Nandawar, who judged as a Man of the Match. So that I request Farways of Jai Bharat Nandawar to please collect your Man of the Match award from our chief guest in our presentation dais. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು RX ಪೆರಿಂಜೆ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಸುನಿಲ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಾಯ್ಫೆಟ್ ಬಜಾಲ್ ಹಾಗೂ ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂದಾವರ್ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದರ Thank you very much and welcome back for the match number 4 of the day number 2 between you two guys Sulaibat versus Iron Cricketers Kunjatturu. The news here is that after winning the toss, captain of Iron Cricketers Kunjatturu elected to field first against E2 guys Sulaibat 2. So E2 guys Sulaibat 2 will go into bat first. Opening batters, I request opening batters please enter the ground. And as far as the rules and regulation of this cricket is concerned, the fielding team have to complete their 6 overs within 27 minutes allotted time, and otherwise umpires will go into give a penalty of bringing one fielder inside the ring in the final over. Dayma Delhi, opening batters. Opening batters Dayma Delhi ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಇಳಿಬೇಕು. 9 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ so coming back to the Iron Cricketers Kunjatturu. Iron Cricketers Kunjatturu in the sense the team which is came from our neighboring state Kerala, neighboring district Kasaragod district. Some good players in the side, Unni Krishnan in that mid-off and some very good players in the side, and we are now expecting some good battle between these two teams. First ball from the commentary box and left arm round the wicket. First ball, bowler's back drive. The batter plays it back to bowler, not for run. And good start here from the bowler Shamsher. Shamsher is a very useful cricketer in the form of the batter and bowler. Is a very good all-rounder for the side, and bowling left arm round the wicket. Inside out ticketing, so beautifully plays it down to deep cow point boundary for 4 runs. Just a little bit with is offered there by the batter, and batsman immediately plays it down to deep cow point region for a boundary there. Excellent cricketing stroke. Lovely cricketing stroke in the negation there from the batter. Just a little bit with is offered, and he plays it quite beautifully down to deep cow point boundary for 4 runs. And delightful stroke there from Nauchi. And Shamsher again left arm balls beautifully bowled. Good comeback here by now Shamsher, learning from the mistake, isn't it? After that one delivery which is in the off volley, this time he bowled a little. Of course, it's a with is offered this time, but it's a ball along the carpet, and no time for the batter to react to that one. And wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Shamsher bowling away from us. Left arm around the wicket. Balls went for the reverse wave. This time he beats the infield. 2 fielders behind the ball. Before the fielder from the cover point to return the ball. Chance here for the run out, and is gone.
trying for the second run in the occasion, but they're losing a huge wicket. It's not a good judgment of the run. In fact, have a look at it on the replay. It's not too far away from the fielder, but they wanted to get the second. By doing that, they're losing a huge wicket. The man who's looking so good, and Farooq, disappointment finish for him. And every batsman definitely doesn't want to become the run out, because it's one of the painful dismissal for any batter when you're becoming the run out. It's not that much painful when you're getting a catch out or bowled out, but when you're getting out in the form of run out, it's absolutely very painful. And really, you two guys, Ulaibetu doesn't want to lose the wicket too early. The wicket of Nauchi is going to be so important for Iron cricketers, because he's the one who can be the very handy in this format of games. And the scoreboard is 5 on the board for the loss of 1 wicket. This time driven nicely down to deep mid-wicket region for an easy single. With that single, scoreboard moves on to 6 on the board. You two guys, lovely delivery, isn't it? That Samshir saying that the batsman tried to play the little bit room to play the shot. He's just following the batter and bowled a very good incoming delivery. First over completed after completion of over number first. It's 6 for the loss of 1 wicket. Team you two guys, Ulaibetu against Kunjaturu. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಜಯ ಭಾರತ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂದಾವರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು Aju bowling away from us. Right arm over the wicket, balls this time just around the legs of the batter, so that batsman completely missed out the delivery, because this is a power play over. The batsman knew to take the advantage of the delivery whenever the ball is going outside the non-leg stump. He can go for the sweep shot, but he missed it completely. Right arm over the wicket. This time what I'm talking about, the sweep shot. Here you go, the sweep shot down to the fine leg boundary for 4 runs. Looks like the batter just listening my commentary, and after that the one delivery which is missed out outside the leg stump. And I think it's a useful stroke to play when the ball is going outside the line of leg stump. One batsman can play the sweep shot, because you're in a power play, and where you can keep only 2 fielders outside the circle for the opposition. Once you beat the infield, especially in the SPS cricket ground, it's very difficult to chase the ball. And ball went down to the fine leg boundary for 4 runs. With that boundary, scoreboard moves on to 11 for the loss of 1 wicket. Here is again the bowler. Right arm over the wicket. Went for the reverse sweep. A good comeback. Absolutely fantastic work behind the stump. In a fraction of a second, the legend Imtiaz behind the stump. Outstanding wicket keeping there from Imtiaz. Still in this age, he's been outstanding, Imtiaz. One of the senior most cricketer for the side. Have a look at that one in replay. It's not so easy, I will tell you. Whenever the batsman is going for the reverse stroke, it's not so easy for the wicket keeper to collect the ball, because the judgment is so important. You can't see the line of the ball, because the batsman almost coming right in front of the wicket keeper. So very difficult to judge the ball, where the ball is coming. The judgment is so important, where the ball is coming. And as per the line of the ball, he need to keep his 2 hands. And that's the quality of wicket keeping. And this is what experience is counted. Absolutely good work there by wicketkeeper behind the stump, Imtiaz, and batsman is back into pavilion. 11 for the loss of 2 wicket in the over number 2nd in progress. A new batsman in.
Dharma, right arm over the wicket, bowls. Driven nicely down to deep wideish long off. Protection is given in the deep long off, so that batsman have to settle for the single. With that single, Skobana moves on to 12 on the board. 12 for the loss of 2 wicket in the over number second in progress. Dharma again bowling away from us. Right arm over the wicket to the right hand batsman. Due to ball, I think he's gone. He's gone. Yes, he's gone. The bails are off. Looks like it's got a little bit inside edge of the bat. Ball is just disappearing into the stumps. And one more wicket is back into pavilion. You two guys are struggling here. You two guys are struggling here as far as getting a partnership is concerned. Have a look at it on a replay. The batsman off the front foot, lifting his front foot. Huge gap between bat and pad. Absolutely huge gap between bat and pad. Nowhere near the pitch of the delivery. And the ball just hitting a leg and hitting the stumps. Wicket number 3 is back into pavilion. 12 for the loss of 3 wicket. So coming back, the two guys Ulaibetu, the last 2 years back, the tournament which is organized in Mallur, and Arshad Bajal, who hit a century, 111 runs in just 48 deliveries against the two guys Ulaibetu. One of the record which is made by the batter Arshad Bajal, scoring 111 runs in just 48 balls with the help of 12 boundaries and 12 sixes in fact and 6 boundaries. One of the rare records in underarm cricket, not plenty you can get, not the only if you get you will get who got a century behind the name. And Arshad Bajal is recording by scoring a century in a 20 format of a game, T20 format of a game. 12 for the loss of 3 wicket. Ashwit has brought into attack to ball that's third over. Right arm over the wicket. Oh, what a shot! My goodness, I thought it might be a clean hit, but it's not a clean hit. But of course, a clean catch taken by the fielder at deep long off. Once this looks at the batsman hitting the ball, we are hearing the instrumental sound from the bat. Have a look at that one. Once the batsman hitting that one, everyone thought it might be a maximum. But timing which is not proper, and even the ball was not hitting the sweet spot of the bat. Ball went very high up in the air, and enough time for the fielder in the deep long off to judge that catch. The wicket number 4 which is back into pavilion of E2 guys Ulaibetu. It's a 12 for the loss of 4 wickets. They're deep in trouble. The match number 5 will be played between KFC Kumble versus Jai Bharat Nandawar. So that I request all the teams players please complete the formalities of signature as soon as possible. So some teams which is coming from our neighboring state. One team which came from Kumble. Now one team is performing here in the middle. Kunjatturu. Ayan cricketers Kunjatturu. Ashwit, successful bowler. Got a success in the first ball of his over. Second time in this over. Right arm over the wicket bounce. Nice copybook style of extra cover drive. Beautiful shot. It's really a copybook cover drive there from Samir. And he picked up a single for that with that single score. But no, correction, not Samir. It's Rashid. Samir is now batting here. He's a very popular cricketer. Very decent, disciplined cricketer as far as underarm cricket is concerned. Samir has got a experience of playing for Gori Young Boys. This time driven that one good piece of fielding by Unni Krishnan. One more very experienced campaigner. And one more who has got a nickname of Cricket Na Daitya as far as Kannur language is concerned. He is definitely one who really got experience behind him. He is also a player of Gori Young Boys. Nicely swept that one down to deep square leg region for a single. And with that single, scoreboard moves on to 14 for the loss of 4 wicket. And the scoreboard is slowly moving here for E2 guys Ulaibetu after they got a good start in the first over. But didn't got that much of enough runs after that. Third over is in progress. Ashwit again, right arm over the wicket balls. This time top edge, but the ball is landed very safely over the head of that backward point fielder. Fielder behind the ball, and one of the fielder will going to return the ball by fielding down at deep third man region, deep backward point region. Ample time for the batter to complete a couple of runs. With that couple of runs, score numbers are 16 on the board. Samir and Rashid are the two batters really have a responsibility of taking E2 guys into very good score. 45 plus, which is definitely required in this condition. Nicely flicks and off his legs again there from Rashid. Technical sound player as Rashid. I'm watching him 2 strokes. One is
orthodox extra cover drive. Another is a flick of the wrist down to square leg region. Altogether, 3 overs completed after completion of over number 3. Searching for the right track. It's 17 on the board for the loss of 4 wickets. 3 overs remaining. Wait and see how much E2 guys Ulaibetu will go into get the runs. It's time for a change in commentary box. It's over to Gopi for the further explanation of the match in our national language Hindi. Thank you very much. तो धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर 17 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। E2 guys Ulaibetu just searching for the right track, their batsmen, and after he won the toss and elected to bat first, even cricketers Kunjatur bowlers bowling very well at the situation। और जहाँ तक सवाल है चौथे ओवर की पहली गेंद का, तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाजी ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा, स्टार्ट्स ऑफ विद अ वाइड और 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ अराउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बेहतर गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया। स्टंप्स को कवर करने के बाद कलाई के सहारे गेंद को मोड़ दिया था, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद आई थी और आखिरकार जब तक शॉट मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ 19 रनों पर, जबकि उनकी पारी का चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर दाहिने हाथ अराउंड द विकेट गेंदबाज की गेंद ड्राइव किया इस वक्त खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल। और जहाँ तक रनों का सवाल है, रन इस वक्त सिंगल्स के रूप में बनते हुए और एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर जारी रखते हुए इवन कुंजतूर के गेंदबाज और फिर से एक बार अज्जू गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ अराउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, तो रनों के लिए इस वक्त संघर्ष करते हुए बल्लेबाज E2 guys Ulaibetu के, और यहाँ पर एक साझेदारी की उन्हें सख्त ज़रूरत है और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ अराउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए स्टीयर करना चाहा इस वक्त, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में ज़मीन के सहारे और रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो अपनी पहली गेंद वाइड फेंकने के बाद एक बेहतर कमबैक कर चुके इस वक्त गेंदबाज, एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए। और अज्जू एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथ अराउंड द विकेट, ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, रन लेना चाहा इस वक्त, लेकिन गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में और विकेट कीपर ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया। स्टंप के रूप में ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। थोड़ी सी मिड लेग स्टंप पर गेंद थी, लेग स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था, गेंद को बिना देखे रन लेना चाहा और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट चटका दिया विकेटों के पीछे। तो 20 रन 5 विकेट के नुकसान पर। टेस्टिंग टाइम कंटिन्यूइंग हियर फॉर द बैट्समैन ऑफ E2 गाइस Ulaibetu। परीक्षार्थ समय इस वक्त बीतता हुआ उनके ऊपर और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए गेंदबाज इवन कुंजतूर के अयान कुंजतूर के गेंदबाज एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला इस वक्त जारी रखते हुए नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद अज्जू अपनी अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ अराउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को छोड़ दिया, सही गेंद को जीत। ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 20 रन और एक बेहतरीन ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका है अज्जू का। सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए और 4 ओवर के बाद अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा E2 guys Ulaibetu, their batsmen are now still searching for the right track. It's 20 for the loss of 5 wicket after completion of 4 overs. Next match, Jai Bharat Nandavar will take over KFC Kumble in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂದಾವರ್ ಹಾಗೂ KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ಹಾಗೂ ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂದಾವರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಯಾ ಓವರ್
प्रारंभ होता हुआ शमशीद ओवर की पहली गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद को ड्राइव करना चाहे एक्स्ट्रा विकेट गेंद, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। बेहतर गेंदबाजी और एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, फॉरवर्ड शॉट लेग की दिशा में गेंद पहुंची, 1 रन मिलेगा इस बीच और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर। 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज एक साझेदारी पार्टनरशिप पर निभाने की कोशिश यहाँ पर करते हुए और एक बार फिर से गेंदबाज शमशीद गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, इस बार चूंकि गेंद को ड्राइव करना चाहा, मिड और लेग स्टंप पर गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहता, चूंकि रन से नहीं मिलेगा। बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त करते हुए गेंदबाज अयान क्रिकेटर्स कुंजतूर के और फिर से एक बार गेंदबाज अपनी गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद, इस बार ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑन पर, रन नॉट मोर देन अ सिंगल, क्लीन कलेक्शन मेड बाय द फील्डर जस्ट इनसाइड द फेंस एट लॉन्ग ऑन एंड बिफोर दैट फ्री बैट्समैन हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू क्रॉस ओवर फॉर दिस सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 22 रनों पर। रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए और गेंदबाज शमशीद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट, बेहतर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बॉलिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग फ्रॉम द बॉलर्स ऑफ अयान क्रिकेटर्स कुंजतूर। यहाँ पर बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी अब तक शमशीद ने इस ओवर में और एक बार फिर से तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ड्राइव किया, इस बार गेंद पहुंची सीरी मिड ऑफ पर, नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके। 23 रन, एक और बेहतर ओवर अगर अयान क्रिकेटर्स कुंजतूर के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें 3 रन बने, 3 runs scored in this over, 5 overs completed and now it's 23 for the loss of 5 wickets. Still the batsmen of Ayan Cricketers Kunjatur searching for the right track. So last over starts and Unni Krishnan, the bowler, is now brought into the attack. और जहां तक उन्नी कृष्णन का सवाल है, आमतौर पर गोरी यंग बॉयज का वो प्रतिनिधित्व किया करते हैं, लेकिन इस बार उनके गांव की टीम इस वक्त खेल रही है, तो इस वजह से उसका प्रतिनिधित्व वो इस वक्त करते हुए लाइन आउट ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड की रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर, 24 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और छठा ओवर यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है, अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। रन सभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए और उन्नी कृष्णन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फील्डिंग मेड बाय द डीप बैक स्क्वायर लेग फील्डर, और अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए गेंद को उन्होंने ढकेला अंतिम क्षण में सीमा रेखा के अंदर, बेहतरीन फील्डिंग, देखिए किस तरीके से यहाँ पर खूबसूरती के साथ गेंद को बोला था, ऑन साइड पर मिड स्टंप पर गेंद थी और वहाँ पर अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए गेंद को इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर ढकेला बेहतर तरीके से, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। उन्नी कृष्णन एक बार फिर से तैयार, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई परिवर्तन कर पर धीमी ऑफ कटर गेंद थी, और इस गेंद के धीमेपन को पहचानते हुए गेंद को खेल दिया इस वक्त हल्के से सीधी मिड ऑफ पर, 1 रन तेजी के साथ बटोरते हुए दोनों बल्लेबाज 28 उन्नी कृष्णन एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया, एक बार फिर से बेहतर फील्डिंग वहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर द्वारा गेंद को सीमा रेखा के अंदर फील्ड करते हुए बेहतरीन तरीके से, और इस बेहतर फील्डिंग के बदौलत सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज यहां पर प्राप्त करते हुए, और स्कोर इस वक्त बढ़ चुका है 29 रनों पर। उन्नी कृष्णन एक बार फिर से तैयार, दाहिना ओवर द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद थी, सीधी मिड ऑन पर रनआउट का खतरा, लेकिन थ्रो को रिसीव नहीं कर पाए, पहले टिप्पे के बाद काफी ज्यादा उछाल ली थी गेंद, और उन्नी कृष्णन गेंद को ठीक तरह से
रिसीव नहीं कर पाया इस थ्रो को, 1 रन का इजाफा। 30 नाउ, द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। अंतिम गेंद उनकी पारी के लेकर तैयार उन्नी कृष्णन, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए। ये गेंद इस बार धीमी ऑफ कटर गेंद ऑफ बैकफुट पर गए, गेंद को ड्राइव कर दिया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, गेंद पहुंची सीधे स्ट्रेट ओवर द थ्रो और अंतिम गेंद पर ये विकेट यहां पर गिर चुका है रन आउट के रूप में। सो द इनिंग्स इज अप, द स्टिपुलेटेड ओवर्स आर कंप्लीटेड एंड E2 guys Ulabet to scored managed to score 31 runs in 6 overs for losing 5 wickets, and they set a victory target of 32 for Ayan cricketers Kunjatur. 32 Ayan Kunjatur have to score with the required run rate of exactly 5.34 runs per over. That means they have to score 32 runs in the stipulated 6 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और देखते हैं अयान क्रिकेटर्स कुंजतुर के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। फिलहाल उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होगी। 32 द टारगेट इन 6 overs for them with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब अयान कुंजतुर की पारी की शुरुआत यहां पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू। ಅಲ್ಲಿ KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So JD Boys Bantwal organizing such a wonderful cricket tournament in the name of JD Trophy 2023, one of the most prestigious cricket tournament organized in this most beautiful SBS cricket ground. Of course, under the great leadership of Prithviraj Punjarakodi. He is the one really leading from the front and organizing bringing all youngsters under one shelter in the name of JD Boys. And all the boys are done a great job so far. The success of this organization and someone like the important persons like, of course, we're talking about the Jagadish Suvarna and of course Jagadeep Suvarna and Nitin Suvarna, Rajesh Bangera, Prithvi Raj Bangera, Kiran Kalladka, Nitin Kalladka, Jitesh Allipadi, Charan Manihalla, Pawan BC Road, Jeevan Naur, Nitin Wagga, Latish Kakepadav, and many of them are really joining the hand for the success of this organization and for this fantastic JD Trophy 2023, and with the greatest slogan of cricket for social cause, cricket for social service, and this is what is really required. They're definitely going to inspiration for other organization. How could be the organization not only engaging in sports and games but even in social service. So thank you very much once again for JD Boys for organizing such a wonderful cricket tournament in this SBS cricket ground, a very historical cricket ground here in Bantwal. And the umpire signaling towards our scorers. So start of the match. Please note 27 minutes you need to complete the overs. And thank you very much for team Alan Guy, Iron Cricketers Kunjatur, because they are the one, they completed their 6 overs very quickly. With 22 minutes they taken to complete that 6 overs. Thank you very much. And that shows that you can be the very quick and unfortunately, lip correction, without having time sense, it's very difficult to complete your overs in a stipulated times.
So your cooperation is much required. So you two guys now going to start their over. Umpire signal. So the time which is noted and 1 past 32 and the 27 minutes to be allotted to complete your 6 overs quota. Bowler from the commentary box and Rashid is introduced. Sachin is on strike. And the target will be the 32. First ball, Spectra wide. It starts with the Spectra wide and wide signal from umpire. And you two guys need to be very careful because they're depending the moderate total of 31. You can't do these mistakes when you are depending a small total. Rashid round the wicket. Bounce. This time plays it straight to the hands of short Ekshikawa. No question of any run. And straight away after that wide ball, the bowler right on target. Rashid round the wicket to the right hand batsman Sachin. Delivers. Again the wide, second wide of this over. So just like I mentioned earlier, the discipline is so important for the bowler. If he bowls the wide, deliveries will go into a lot of confidence for the batter because runs which is coming very cheaply. The batter will going to get extra deliveries, give a lot of time for the batters to adjust the situation, condition, bowler's back drive. Good stop there by the bowler on his follow through. No chance of any run. This time Sachin drives the ball but not really getting that the placement right so that no question of any run. Sachin will go into face next delivery. Rashid round the wicket again, this time well within the reach of the batter. The batsman little bit misjudgment, very close to that line but well within the reach of the batter. Rightly so, umpire not interested, call that wide. It's a fair delivery. Scoreboard is 2 on the board without loss of any wicket. This time went for the save, reverse stroke. Ball running down to deep backward point region. Ball will go into stop. And before the fielder to run back to stop that one, Samir the fieldsman, the running back and collecting that one down to just a couple of yards inside the boundary line down at backward point region. Ample time for the batter Sachin to complete that couple of runs. Very useful stroke in a present cricket. Each and every batter loves to play that switch it reverse stroke. It's become very popular. And especially in the power play over, definitely going to be very useful. 4 without loss of any wicket. This time batsman dry, not quite getting hold of them properly. Blind run, absolutely blind run. No run at all in that occasion. But after driving the ball, Sachin not really looking towards ball, but he only looking towards the run. And rightly so, his partner is not correction, not responded for that one. Rightly so, there is no chance at all for any run. Ball went straight to the hands of back point, and unfortunately, the wicket number 1, which is back into pavilion of Ayan. So new batsman in is the master of cricket. It's absolutely one of the big man of cricket. Krishnan walking towards the middle. Fantastic career, has got more than 25 years of experience behind him. The busy customer as far as the cricket is concerned. He really loves the cricket, and he's the one got a lot of fans behind him. Is known to be one of the decent cricketer. Right arm round the wicket, Rashid bounce. This time, ooh, that one very close to the leg stump, absolutely very close to the leg stump. The wicketkeeper behind the stump uprooted the stump, asking scholar umpire for the decision, but umpire Arish Padil has got evidence enough that the back foot of Krishnan is inside the crease. Have a look at it one. Of course, good wicket keeper, good wicket keeping there by the wicket keeper behind the stump, but he is not, unfortunately not getting the result here. The 5 runs came from that over. 4 runs came from that over. Rashid bowls a very tidy over, and excluding that 2 wides, I think just the 2 runs which is conceded in the form of bat. And Shamir as well as Krishnan has got some friendly talk because both are playing for the same team, Gori Young Boys, for several years. Samir is not representing nowadays for the Gori Young Boys, but he's a one more good player. Just like I mentioned about, we've got some good players in the side, those one who got the good character as well. It's so important for a cricketer. Being the talent is not important. Along with the talent, if you have got a very good character, the people will going to remember you for a long time, and definitely automatically the fans will going to follow you. And Samir is the one very disciplined. He won only Krishnan.
And that's why they have got their own followers, their own fans behind them. 4 for the loss of 1 wicket. Here is again the bowler, right arm down the wicket, going for the drive. Wicket keeper behind this time misses it completely. Oh, absolutely unforced error. It's absolutely unforced error. No question of doing that much of effort in that occasion, because the batsmen are not interested for the run. They're relaxing, but the fielder might be having something wrong in the field, in the ground. Slip down and misses the ball, and the batsman grabbing the opportunity, getting a single. With that single, score moves on to 5 on the board, chasing 31 to win this 32 to win this match. Big wide. This is the one area I've already mentioned. You two guys need to be very careful. So already that 3 runs conceded in the form of extra. With that extra, score moves on to 6 on the board without loss for the loss of 1 wicket. Unai drives uppishly and Shamir misses it completely. Maybe the ball which is changing the direction is all happening when you are fielding in the backward point region. It's not an easy position for the fielder, because once the batsmen are not really hitting that hard, ball going to spin in front of you, and Shamir couldn't manage to judge the spin of the ball, missing it completely, and they got opportunity to complete the single. And lucky there, Unikrishnan ball didn't carry to the fielder. So one more. This time lovely shot. No need to run for that. One bounce into the dugout of you two guys. Magnificent struck. Have a look at that one in the replay. How quickly that batsman is taking his position. Exquisite footwork. And the positioning very quickly. And hitting the ball nicely down to deep backward point boundary for 4 runs. So with that boundary, score jumps into 11 for the loss of 1 wicket. I request 2 teams captain please report here for the toss. Nana Chimiಗಾಗಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Again that outside run of off stump. Wicket keeper behind the stump face to collect the ball. Umpire has got a signal here as a bye. Umpire Arish Padil and umpire Mohan Ayadi. The very good popular pair, Arish Padil and Mohan Ayadi. And scoreboard is 12 on the board for the loss of 1 wicket. Devan up and over, down to deep cover point region. 1 bounce into the fence for 4. This is the Unikrishnan for you. The powerful striker of the ball. This time I think is off the back foot. And a little bit width is offered by the batter. And batsman again going after that ball. Lofted that one into the vacant area. This is a power play number. Second is in progress. And that's going to be an easy fix for Unikrishnan to deliver that one down to deep cover point boundary. Deep extra cover boundary for 4 runs. With that boundary, scoreboard moves on to 16 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 2nd in progress. Arafat again, right arm bowls again. He slipped out. This is the one area that might be a little bit danger and careful bowler, because I already mentioned some dust which is coming outside the pitch into the pitch, and that becomes a little bit fine surface. If you are not having enough grip in your shoes, then that's a problem for the bowler after delivering the ball. This time Unikrishnan drags that one from outside the line of off stump to hit the ball down to mid-wicket region for a easy single. Good return, good throw from the fielder in the mid-wicket, and but a certain single here for Unikrishnan. Productive over which is comes in handy for iron cricketers. They're cruising very well after completion of over number 2, and there's 18 on the board for the loss of 1 wicket. ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂದಾವರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೆ KFC ಕುಂಬಳೆ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂದಾವರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೆ KFC ಕುಂಬಳೆ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ 18 ರನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. Bowling change, Musta brought into attack from the commentary box end. 18 which is scored, 32 going to be a target. That means another 14 more runs required for the victory. Musa balls starts with a wide, but still batsman try to reach that one. Only Krishnan might be wanted to get one big shot here.
but missing it completely. Umpire not missing here to signal the white. Hemant is our scorer, receiving the signal from umpire, and 19 on the board. Going for the reverse stroke, but missed it completely. Little bit low full toss in the delegation. Unikrishnan has got a good position to play the reverse stroke, but missed it completely from the bat, and there is no chance at all for any run. Mustaq bowling away from us. Right arm over the wicket. Again, the wide outside the line of off stump. Second wide of this over. This is what we're talking about, the discipline. Which is much required for the bowler. 20 on the board, 12 to get. Mustaq away from us. Again, that ball is now I think the ball well within the reach of the batter. Lekater, batter Unikrishnan wanted to swing that one, but not reading that turn of the delivery, pitch of the delivery, missing it completely, and there is no chance at all for any run. Mustaq again, right arm over the wicket. This time top edge, opportunity for the fielder to take the catch. This time Unikrishnan off the toes. He wanted to hit that one down to deep mid wicket, but not really getting that one from the middle of the bat. Against the turn is always going to be asking for trouble. You two guys, captain did a great job, because it's not so easy to bring the bowler like Mustaq, one who bowls flighted deliveries, but beaten by the flight is back into pavilion. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ಹಾಗೂ ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂದಾವರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂದಾವರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೆ KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ. Samshir is one more fantastic all-rounder. Left-hand batter came into bed. Will going to take strike of Mustaq. Successful bowler. Now changing his angle, is bowling round the wicket for the left-hand batter. Again down the leg stump, going to be a wide. This is the one area that I've already mentioned about. You guys is really not disciplined here. Consider some extra runs too much whenever depending the total score of 31-32 to win the match for the opposition. Bowled him, cleaned him up, beaten by the turn. Fantastic delivery there from the bowler Mustaq. The batsman really nowhere in the pitch of the delivery. Is just beaten by the turn again from the bowler. Two very big wickets for Mustaq there. Have a look at that one. Absolutely in nowhere. He's never thought that ball will going to come into the batsman. He bowled a leg cutter. Leg cutter in the sense the ball which is coming into the batter for the left-hand batsman. And that ball went between bat and pad and into the stumps. Wicket number 3 is back into pavilion. It's 21 for the loss of 3 wicket. Chasing 32 to win this match. Imtiaz, one more very talented cricketer. Experienced campaigner just like Unikrishnan. Imtiaz is a one. For the players like Unikrishnan and Imtiaz, which is just a number, still they are maintaining their level of fitness to perform in the cricket along with the youngsters, being the example for the youngsters. Mustaq, successful bowler, 2 wickets in this over. He wanted to give some kind of contribution for you two guys, for his team, to tighten up the screws. Right arm over the wicket, Mustafa balls outside and off tempered. Batsman going for the cut. Optimistic. It looks like it's going to be excitement rather than the confidence. Maybe the batsman hitting the bat into the ground. That is a sound which is heard by the wicketkeeper. Maybe the bowler. Umpire not interested, rightly so. There is a huge gap between bat and the ball, and there is no chance at all for a wicket there. But good bowling there from Mustaq. This time Imtiaz quickly realizing that very difficult to play that one in a straight bat. Then he's implementing the right strategy by sweeping the ball. With that single, score numbers on to 23. Very good over, 22. So very good over comes around here from Mustaq. Wicket taking and economical over.
Still, they required another 10 runs to win this match. Ibrahim brought into attack. 10 more runs required for the victory, and Imtiaz is on strike. And in the non-strikers end, Kuta is in the non-strikers end. This time a Spectre wide defeats everyone. Ball running down to deep third man boundary for 4 runs. Absolutely disaster, isn't it? When your bowler bowling that kind of huge wide, very difficult to set a field. Altogether 5 runs, which is scored in that particular over and particular delivery. 27 on the board. Just a 5 more runs required for the victory. Again, nicely swept out, then reverse sweeping that one down to third man division by Imtiaz with that single scored Namuzan to 28. Just 4 runs away from the victory. One proper cricketing stroke will go in to finish the match for team Ayan. Kunjat Bail. Oh, went for the reverse sweep, but not really having enough bat under that. And Anikutan knows that if he got that one right from the middle of the bat, he will go into be the finisher. Will go into finish the match, but this time driven straight to hands of Shamir, little bit correction. Down at short mid off. He wanted to finish off things quickly, but Kuta will definitely, he fails to get that one over the top of that fielder. The one more wicket is back into pavilion. Have a look at it, one inside out cricketing Sogi trying for. Shamir is a tall player. He is just waiting for the ball to coming into his bat. One of the fewest player has got that much of height what Shamir has got. As underarm cricket is concerned, is a very tall player. Just 4 more runs required for the victory. The new batsman in is walking towards the middle. Looks like Jojo. Aju, correction, not Jojo, it's Aju will go into be the striker. Improvisation, but just for a single, with that single score, the Mozan to 29 on the board. Suraj, little correction with a nick. Suraj is in non-strikers end. Right arm round the wicket. Nicely get that one by playing a horizontal bat. Imtiaz picked up a single then. Just a couple of runs required for the victory. For the next match, I request both the teams, please get ready. .30 on the board, 2 runs required for the victory, couple of runs. Ibrahim, right arm round the wicket to Suraj.
across the line, wanted to hit the ball, missing it completely from the middle of the bat, inside of the bat. Once again, they will need to wait for the another over. 2 runs required for the victory. So next match is one more good match, and the Nandavar, Jai Bharat Nandavar, after they defeated Jolly Friends Bajar in their first round match, they will going to play against the KFC Kumble. KFC Kumble, they got a bye in their first round, so that they got opportunity to get into the second round of this prestigious JD Trophy 2023 against Jai Bharat Nandavar. KFC Kumble, of course, they got some good players in the side, some talents from neighboring state will be going to perform in this prestigious cricket tournament. They got Pradeep and some good players in the side of KFC Kumble. The toss pitch is completed outside the line of off stump. One more wide, just a single required for the victory. Scores are level. Imtiaz has got opportunity to get a winning run for his team. Musta. Balls drives Hapishly and will going to travel and inside the boundary line. They completed that run there, so that victory here, comprehensive victory for team Ayan Cricketers Kunjaturu, defeating their opposition by 6 wickets and some deliveries to spare, and very good victory for team Ayan Cricketers, and they're through to the second round of this prestigious JD Boys Trophy 2023. And we're into the next match, and a good match, Jai Bharat Nandavar versus KFC Kumble. And for that match, I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. So man of the match of this previous match, which goes to the bowler one who picked up 2 valuable wickets, and Dharma of Ayan Cricketers Kunjaturu becomes the man of the match. I request Mr. Dharma to come and collect your man of the match from our chief guest. Ali ದಯಮಾಡಿ ಅಯಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕುಂಜಾತೂರು ತಂಡದ ಧರ್ಮ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸುರೇಶ್ ಕೆಮ್ಮಟ್ಟೆ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸುರೇಶ್ ಕೆಮ್ಮಟ್ಟೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಧರ್ಮ. Dharma will go to collect the man of the match award from Suresh Kemmate for his outstanding performance of 1 hour, no maiden, 6 runs and 2 wickets. Is the one who really bowled well and getting a medal, and of course the cool drinks.
ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೂ 2 ಡಗೌಟ್ ಇದೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಡಗೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 2 ಡಗೌಟ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ 2 ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಗೌಟಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿನಿಂಗ್ ದ ಟಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ Nandawar, so that opening batters came into middle, and here is Gopi will be the commentator for this match. Thank you very much. ಹಾಗೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಡಗೌಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. The winning toss winning captain will go in to decide the dugout, can select the dugout. Please note that, please cooperate with the organizers. Thank you very much. धन्यवाद सतीश. So the match starts between Jai Bharat Nandawar versus KFC Kumble, and Jai Bharat Nandawar, after one toss, they elected to field first, and because of that, the openers of KFC Kumble at the crease are Chimmi and Pradeep. Meantime, the bowler starts the fresh proceedings from the commentator box, and is Naufal. And the first ball of the match is now coming up. First power play over is now going to begin. और मैच की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर था विकेट, पहली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता. बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ KFC कुंबले का खाता यहां पर खुल चुका है, 1 रन बिना किसी नुकसान के. और यहां तक सवाल है इस वक्त KFC कुंबले के एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए एक बेहतर शुरुआत. और इस वक्त गेंदबाज नौफल गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए, और सात खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, फील्डिंग का पावर प्ले के अंतर्गत, बैटिंग पावर प्ले के अंतर्गत. और इस बीच गेंदबाज नौफल अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए प्रदीप. यह गेंद ड्राइव किया प्रदीप ने, लेकिन खाली क्षेत्र ढूंढने में सफल, मिड ऑफ पर गेंद पहुंची और गेंद को वहां पर फील्ड कर लिया गया. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. एक बेहतर 2 गेंदें इस वक्त गेंदबाज फेंक चुके हैं. नौफल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, प्रदीप सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद थी, वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलती हुई, गेंद तक पहुंचना चाहा, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद तक पहुंच नहीं पाया, और वाइड का इशारा हो चुका है अंपायर का, और वाइड के रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. 1 रन बिना किसी नुकसान के नौफल एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला इस वक्त, गेंद जाती हुई बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, गेंद का पीछा करते हुए फील्डर, थोड़ी सी मिस फील्ड वहां पर, और जब तक गेंद को फील्ड करने के बाद फील्डर लौटाए विकेट कीपर के हाथों में
बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। रिवर्स शॉट के जरिए इस गेंद को खेला था। पॉइंट फील्डर की दाईं ओर से गेंद निकली। इस वक्त डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर जब तक गेंद को फील्ड करने के बाद फील्डर थ्रो करे। स्टंप सेंड पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। और इन 2 रनों के साथ स्कोरबोर्ड बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से नौफल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग करना चाहा। परिवर्तन के तौर पर धीमी कटर गेंद थी और इस धीमेपन को बल्लेबाज समझ नहीं पाए और विकेट उन्होंने उखाड़ दिया, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। 4 रनों पर स्कोरबोर्ड रुक चुका है। पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर। तो गेंद में फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई, कुछ बातचीत गेंदबाज और खिलाड़ी करते हुए इस वक्त जय भारत नंदावर के। तो अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। अंपायर विकेटों को सही करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। अगला मैच अयन क्रिकेटर्स कुंजतुर और यूनाइटेड सूरतकल के बीच खेला जाएगा। तो इसलिए मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूँ दोनों टीमों के सदस्यों से कि वह कृपया स्टेज पर संपर्क कर ऑफिशियल चार्ट पर अपना साइन हस्ताक्षर दर्ज करने के लिए। बेहतर गेंद एक्स्ट्रा क्विकर लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए अपील को सही तरीके से अंपायर ने नकार दिया और लेग पाई का इशारा अंपायर का। और लेग पाई के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों के ऊपर। और पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर। तो नौफल अपने गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दोपहर का वक्त लगभग 2:05 यहाँ पर बच चुके हैं और बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है। और जहाँ तक सवाल है अपनी ओर की अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नौफल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद बल्ले का बाहरी किनारा गली की दिशा में मोर तरह सिंगल और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। केएफसी कुंबले की पारी मैच पहले ओवर के बाद केएफसी कुंबले स्टेडी स्टार्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इस वक्त कर चुका है 6 रन बिना किसी नुकसान के यहाँ पर जोड़ चुका है। जेडी बॉयज बंटवाल द्वारा प्रतिष्ठित आयोजन की गई ये प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला जेडी बॉयज ट्रॉफी 2023 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई इस श्रृंखला इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन के लोकल पोल का 5वां मैच इस वक्त शुरू हो चुका केएफसी कुंबले और जय भारत नंदावर के बीच में। और यहाँ पर गेंदबाजी शुरू करते हुए अनीस इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और दूसरा ओवर उनकी पारी में यहाँ पर शुरू होता हुआ। तो जहाँ तक जय भारत नंदावर का सवाल है, काफ़ी पुरानी टीम बंटवाल परिसर के कई मशहूर श्रृंखलाओं में उन्होंने हिस्सा लिया है, कई खिताबे उन्होंने अर्जित किए हैं और दर्शक काफ़ी देखने के लिए आते हैं जब वो बंटवाल परिसर में मैचेस खेलते हैं और हज़ारों फैंस उनके लिए उनको बेंबलित करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर ये गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर रहा और वाइड का इशारा। तो हज़ारों फॉलोअर्स जय भारत नंदावर के हैं। और जहाँ तक सवाल है इतिहास का, तो मंगलूर के और बंटवाल परिसर के प्रतिष्ठित टीमों में से एक जानी जाती है जय भारत नंदावर। और इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए इम्प्रोवाइजेशन और गेंद को इस वक्त निकाला फाइन शॉट थर्ड मैन फील्डर की दाईं ओर से और 4 रन इस वक्त बल्लेबाज प्राप्त करते हुए। तो बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ बल्लेबाज चिम्मी के बल्ले से और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 11 रन, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और अनीस गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए चिम्मी सामना करने के लिए तैयार अपनी अगली गेंद लेकर। एक बार फिर से फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, दूसरा पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी और चिम्मी अपनी ओर की अगली गेंद का सामना करते हुए स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड गेंद को ड्राइव किया, लेकिन खाली क्षेत्र ढूंढने में सफल और गेंद सीधे पहुंची मिड ऑन फील्डर के हाथों में। काफ़ी पावरफुल स्ट्राइकर के रूप में जाने जाते हैं चिम्मी और यहाँ पर गेंद को काफ़ी
तेजी के साथ उन्होंने ड्राइव किया था, लेकिन काली क्षेत्र ढूंढने में सफल और मिड ऑन पर गेंद पहुंची थी। अगली गेंद के लिए तैयार ये गेंद और इस बार स्कूप दैट वन एंड ही इज गॉट अ बाउंड्री फॉर दैट। इम्प्रोवाइजेशन करते हुए पूरी तरह स्टंप्स को एक्सपोज किया और गेंद को इस वक्त उछाल दिया। देखिए किस तरीके से, हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, दिस वन शफलिंग अक्रॉस द लाइन, एक्सपोजिंग द स्टंप्स एंड लॉफ्टेड दैट वन डाउन टू अ डीप फाइन लेग बाउंड्री फॉर अ 4 runs, and with that boundary the scoreboard moving up to 15 now with outlaws in the over number second in progress. और एक बेहतर ओवर साबित होता हुआ केएफसी कुंबले की पारी में, जिसमें अब तक कुल मिलाकर 9 रन बन चुके हैं। दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद स्टीयर किया बैकफुट पर जाने के बाद, गली फील्डर टाइमिंग लगाने के बावजूद गेंद तक पहुंचने में सफल, गेंद को रोकने में सफल। जब तक गेंद को बैकअप किया जाता, बैकवर्ड थर्ड मैन पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर बिना किसी नुकसान के। जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर अनीस दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद प्रदीप के लिए स्वीप किया। इस वक्त गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, हाफ स्टॉप, एक बार फिर से गेंद का पीछा करते हुए बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और इस बार दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं। तो जोखिम भरा साबित हो सकता था, 1 शॉट का इशारा, ओनली 1 रन एडेड टू द टोटल and the scoreboard is moving up to 17 now with that single. क्रीज को बिना छुए दूसरा रन दौड़ पड़े थे दूसरे रन के लिए, फलस्वरूप 1 शॉट का इशारा अंपायर द्वारा। 2 ओवर की समाप्ति, 17 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 17 रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन ऑफ केएफसी कुंबले आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स। और एक बेहतर ओवर अगर केएफसी कुंबले के पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें 11 रन बने, 11 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर। And after this over, they are now back in the match. तो तीसरा ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ और गेंदबाज इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए जाबीर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करते हुए जिम्मी इस वक्त स्ट्राइकर सामना करने के लिए तैयार। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है और मैदान पर फील्डर इस वक्त चाहते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन इस वक्त बहुत जो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान एक फील्डर इस वक्त तैनात। और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त जाबीर गेंदबाजी शुरू करते हुए जम्मी के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, थोड़ी सी सफल होते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 18 रनों पर बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू हो चुका है। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा, गेंद इस वक्त फाइन लेग पर, बेहतर फील्डिंग और रनआउट का खतरा और यहां पर गेंद को टटोलते हुए इस बार बच चुके हैं बल्लेबाज। तो काफी वक्त था इस वक्त रनआउट करने में, लेकिन अंतिम क्षण में मैं देखना चाहूंगा एक्चुअली व्हाट वाज हैपेंड इन द पिच। देखिए यहाँ पर गेंद को फील्ड किया था और गेंद को मिसफील्ड हो चुके थे, मिसफील्ड कर चुके थे और इस बार जब तक गेंद को दोबारा या अपने दूसरे या तीसरे प्रयत्न में फील्ड करने के बाद विकेट पर लगाने की कोशिश की, तब तक बल्लेबाज क्रीज पर वापस लौट चुके थे। ऐसा कहना पड़ेगा विकेट कीपर को पता नहीं था कि बल्लेबाज काफी आगे निकल चुके हैं क्रीज से, तो यहाँ पर अपने क्रीज पर सुरक्षित वापस और इस वक्त स्कोर कुल मिलाकर रुक चुका है 18 रनों पर और जाबीर इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार अच्छी गेंद एक्स्ट्रा फिगर मच स्ट्रेटर लाइन जस्ट मिसिंग आउट साथ ही ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 18 रनों पर। तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और फिर से एक बार जाबीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा और इस बार अपना विकेट यहाँ पर खो बैठे हैं। तो रिवर्स शॉट खेलना चाहता, चूके पूरी तरह और गेंद कहाँ गई है बिना देखे वे रन लेने की हड़बड़ाहट उन्होंने दिखाई और विकेट कीपर ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था, रिवर्स शॉट खेलने में चूके थे, गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और विकेट कीपर ने इस बार गेंद को कलेक्ट करने के बाद विकेटें यहाँ पर चटका दी है। तो विकेट नंबर 1 गिर चुका है
प्रदीप की पारी समाप्त। स्कोर है इस वक्त 18 रन। एक बेहतरीन ओवर साबित होता हुआ जाबीर का, जिसमें सिर्फ 1 रन वो अब तक प्रदान कर चुके हैं। So next match, just talking about the next match, United Suratgal will takes over Ayan Cricketers Kunjattur in the next match, and because of that I once again request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಅಯಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಅಯಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So number 3 batsman is now comes out to the middle. Nazir, number 3 बल्लेबाज KFC कुंबले की ओर से इस वक्त सामना करने के लिए तैयार जाबिर की गेंदों का. जाबिर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था. इन्हें राउंड द विकेट रिवर्स शॉट इंप्रोवाइजेशन, लेकिन गेंद पहुंची पॉइंट पर. विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंचा, लेकिन ऐन मौके पर बल्लेबाज ने अपना कदम क्रीज पर खींच लिया. देखा कि गेंद वहां पर फील्ड की जा चुकी है. बेहतर फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा. आखिरकार बल्लेबाज को कोई रन यहां पर नहीं मिला. और इस ओवर में कुल मिलाकर अभी भी 1 गेंद बाकी. और जाबिर इस वक्त तैयार इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए नाजीर. तो इस ओवर में अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम इन दिस ओवर Zabir comes. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद स्वीप करना चाह, नॉट क्वाइट मिडली गेट एट द लास्ट मोमेंट. विकेट कीपर क्विकली आफ्टर डिटेक्ट फॉरवर्ड शॉट, लेकिन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन. तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है. बेहतरीन ओवर जाबिर का, जिसमें सिर्फ 1 रन उन्होंने प्रदान किया. और 3 ओवर के बाद अब ऐसा कहना पड़ेगा अब KFC कुंबले अपनी सही राह को तराशता हुआ. जस्ट सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक. 18 runs on the board, 1 wicket loss, 3 overs completed, and let's see how many runs they are making in this remaining 3 overs. तो चौथा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ. और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे एक और साथी कमेंटेटर जनाब तमीम मुल्लर पटला. राज्य भाषा कन्नड़ में अब आगे का आंखों देखा हाल आपको सुनाएंगे. आइए तमीम, धन्यवाद, थैंक यू. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳವರಿಗೆ ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ 2023 ಪಂದ್ಯಕೂಟ 1ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ 20 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 19ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೀಸ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ದಾಟುಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ ನೋಡಿ ಸೀಮಾರೇಖಾ ಚಟಕ ಬರಿತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 25ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡುವಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಎಸೆತ, ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕೈ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರಣ ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಎಸೆತವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 26ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂತಹ ಅವರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅನೀಸ್ ತಂಡಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರ ದಾಟಿಕೊಂಡು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ 20 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 27ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ 2023ನೇ 30 ತಂಡಗಳ ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಪ್ರಥಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ
27ರಲ್ಲಿ ಜಮೆಗೊಂಡಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 more to go. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಚಮೆ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮುಟ್ಟಿ ಬರಿತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 28ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 6 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅಂದರೆ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು. ಅನೀಸ್ ತನ್ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 28ರಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಜೀರ್ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕುಂಬ್ಳೆ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ 3rd ಓವರ್. ಟೋಟಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು 29 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 29ರಲ್ಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಯಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರ್. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರ ಮಾಲಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಯಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರ್. ದಟ್ ಇಸ್ 12 members please signature of commentary box. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಗಲ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 30ರಲ್ಲಿದೆ. 30 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಉರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿ. ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂತಾವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಮೀರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಬರುವ ಎಲೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಜೀರ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಜಾಲ್ಮಯುತ ಆಟ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 31ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂತಾವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕುಂಬ್ಳೆ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾದ್ಯ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಷಡ್ಗ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕುಂಬ್ಳೆ ಪರವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 6 ಅಂಕಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 37ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಮೀರ್ ತನ್ಕೂಟದ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು. ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಬರುವ 6 ವೀರ ನಜೀರ್. 6 ವೀರ ಶಮೀರ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ದಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರ ದಾಟುಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಅಮ್ಮರ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ನೋಡಿ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 38ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ಲಾಸ್ಟ್ 2 more to go. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ಪಂಚಮಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ದಾಟಿಕೊಂಡು ನೇರ ನಜೀರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಪಂಚಮೆ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಡತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಅವಲಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವಲಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಅವಲಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 40ರಲ್ಲಿದೆ. ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ
ಜಮೀರ್ ತನ್ಕೊಡದ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೋಟುಗೋ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ 5th ಓವರ್. ಟೋಟಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು 41 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗಳಿದೆ 41ರಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಾತ್ರ ಆಟ ಬಾಕಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 41ರಲ್ಲಿದೆ. 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ತಂಡ 41ರ ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ. ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂದಾವರ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆವಿದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಜಾರ್ ತಂದುಕೊಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ ನೋಡಿ ಉದ್ಧರಿ ನೆಲಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಜೀರ್ ಅವರ ಆಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಉದ್ಧರಿ ನೆಲಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ಪರವಾಗಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 40ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 6 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಇದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಕೂಡ JD ಬಾಯ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜಾರ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮಬಲ್ಲದ ಎಸೆತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 42ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಜರ್ ತನ್ಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ದಾಟಿಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 43ರಲ್ಲಿದೆ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಜರ್ ತನ್ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ನೇರವಾಗಿ KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ಕಡೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 44 44ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜರ್ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಮೀರ್. ಓರ್ವ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ. KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ನವ ಜೋಡಿಗಳು. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಜೈಬಾರ್ ನಂದಾವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಅದೇ ಹಾಡು ಅದೇ ರಾಗ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 45ರಲ್ಲಿದೆ. 45 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಅಜರ್ ತನ್ಕೂಟದ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಶಮೀರ್ ಕಡೆಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಬಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 45ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜರ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಶಮೀರ್. KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಒಡ್ಡ ಬಡ್ಡಿ ದಾಂಡಿಗ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈ ಅಗಲ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 46ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂತ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ KFC ಕುಂಬ್ಳೆ. ಬಂಟ್ವಾಲ ಪರಿಸರದ ಓರ್ವ ಎರಡೂ ತಂಡವು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂತ ಅವರೊಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ ನೋಡಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. 6 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಮೀರ್ ದಂಡು ಮುಖೇನ ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 52ರಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 more to go. ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 52ರಲ್ಲಿದೆ. KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 52ರಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಜರ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ ನೋಡಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 56 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. 56ರಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಬಣ್ಣ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಆಖರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 1 more to go. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅವಸಾನದ ಪಂದ್ಯ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಎಸೆತ, ಅತಿರಿಕ್ತ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 57 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. 57ರಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶಮೀರ್ ಓರ್ವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಓರ್ವ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ. KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ಪರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬಡತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಶಮೀರ್ ಅವರ ಆಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 57-58ರ ಗುರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂತ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಹಲೋ, ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಅಯಾನ್ ತಂಡದವರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸೈನ್ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಓಕೆ.
ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Thank you very much, Tamim Mullarpatna. So back to this match, and very interesting because team KFC managed to get some good score here. So 57 is always going to be a good total in this cricket ground, especially in this condition, afternoon condition. And thanks to the innings of Chemi, he's been outstanding today. And he's the one who is really destroying that bowling attack of their opposition by scoring 30 valuable runs in just 17 deliveries with some entertainment cricketing stroke, and he's really played a good innings for his team. And along with him, the Nazir, who's played a small cameo of getting a 10 runs in 12 runs in 10 balls, and altogether 57, which is a total score. 58 is going to be a target. Farvez and Harris Senior, the two batters out there in the middle, to open the innings for Jai Bharat Nandawar. So Jai Bharat Nandawar coming to this team. Jai Bharat Nandawar in the first match they defeated Jolly Friends Bajal, and in this match Parvez played a magnificent innings for his team by scoring 20 runs, so that if they wanted to win the match, I think once again the responsibility for Parvez and his partner to get some good opening partnership. They need to get some partnership here for Jai Bharat Nandawar, and wait to see how well Farvez will going to get this partnership. And little bit of disturbance here, not a huge disturbance, of course. The cow just entering into the ground. Maybe the cow is also so excited that seeing that the very good tournament is going on here. So why can't I join with the fielders of KFC Kumble? But now, after the effort of volunteers, cow which is went out of the ground, and here is a match will going to start. The first ball itself, it's a confident looking start there from Farvez. Nicely driven down to wideish long on region for a single. With their single, Jai Bharat Nandawar, they started their journey, and we will see how difficult and how easy this journey is going to be. But I don't think it's going to be an easy journey, but a lot of hard work which is required from the batter of Nandawar if they wanted to win this match. Next ball, right over they get going for the drive. The very good delivery there from Saitu. Saitu bowled outside the line of off stump, and there is no chance of any run at all. Slower one, not much of quicker delivery, so the batter couldn't manage to judge that slowness of the delivery. Harris again balls. This time a little bit tossed up delivery, and it's a direct hit. Now umpire, no, definitely they're going for the single, but at the same time umpire Shriniket saying that it's not out. And of course even the direct hit, but umpire Shriniket knows that the batsman's Farvez bat inside the line, so that umpire not interested to call for the third umpire. And looks like the batsman wanted to get the runs. At the same time, when direct hit taken place, the batsman might be the safe in the non-strikers end. The right call, absolutely right call for umpire. You can see it in a replay as well. The batsman is safe, and the 500 rupees for Farvez for 1-6. Went for the reverse sweep, not really getting that one from the middle of the bat because of extra bounce while he's trying for the reverse stroke. That ball has got a little bit extra bounce, so that he couldn't manage to get that one from the bat. Arafa Kote announcing that 500 rupees for every 6 for Farvez. Driven that one again, like a placement, a good line, strong line, tidy line there from Saitu. You know exactly, Parvez is the most dangerous batsman as far as the power play is concerned. So he's not giving any width for the batter to get any kind of big stroke. Just coming into the batter with the pace, and Parvez has got now room to play the shot. Again, right arm over the wicket, going for the cut shot. One more good delivery indeed. This is going to be a fantastic start here for KFC, but not a good start for Jai Bharat Nandawar, because they play chasing a total score of 57 to win the match. This kind of start will not going to help to win this match, but suddenly
They need to capitalize the second over of the power play. After that, a very good start there from Saitu, who bowled the economical over, even though there's a wicketless over. But I think it's a pretty good over as far as the depending this total is concerned. That 2 runs in 1 over, and I think the KFC Kumla's captain must be pleased with the performance of Saitu. Now, equation is always going to be difficult. The 57, the total score 58 is going to be a target. 58, 2 deducted, 56 which is required. Deliveries which is remaining 30. 30 ball, 56 required for the victory. The difference between run and ball exactly that 26. That's 26. These two batters have to reduce each and every over. Right arm over the wicket. First ball going for the big shot in the negation. That ball is just passing between his pad and pad. The wicket keeper behind the stump, Pradeep, did the rest and back to bowler. Parvez is the bowler, is introduced by the captain of the side, KFC. The Pradeep is the captain of the side. Is bringing Parvez to bowl the second over of the power play. Right arm over the wicket, drives that one, but again the lack of placement. Not more than a single. The fielder is situated in the right position. This is what you need to do, isn't it? When you are bowling in the power play, you need to bowl as per your field. And that ball went towards a deep wide long on for a single. With that single, scoreboard moves on to 3 on the board without loss of any wicket. Parvez. This time, he got that one right from the middle of the bat. Parvez ball is running down to deep backward point boundary, and he got the boundary for that. The fielder Saitu is chasing the ball just like a cat chasing a mouse, but at last that ball is winning the racing as a fieldsman. Have a look at that one in a replay. He got enough bat onto that, even though not fully controlled reverse stroke, but he got enough bat onto that, isn't it? And look at the fielder, he's chasing the ball, and unfortunately couldn't manage to pull the ball. Ball just winning the race against the fieldsman. And important boundary came here for Jai Bharat Nandawar. That one will give a lot of confidence for the batter Parvez, and scoreboard numbers on to 7 on the board without loss of any wicket. Shot selection so important in this particular cricket ground. Some part of the cricket ground you can get some boundaries easily, and you can get the distance even much easily. Driven not quite getting a hold of that one properly. In fact, it's got a mistimed cricketing stroke. Of course, Parvez wanted to play that extra cover drive towards between log off and extra cover, but he got a single for that anyhow. With that single, scoreboard was on to 8 on the board for the without loss of any wicket. Parvez again bowling away from us. Right arm over the wicket, balls by Irish nice bowler's back drive, and is gone. Ball just deflected from the hands of Parvez and went straight to the hands of short mid-off, and short mid-off fielder making no mistake at all. Absolutely unusual dismissal here for Harris, because have a look at that one. He got a fingertips, isn't it? Powerfully driven back, and the bowler reacted quickly. And fortunately for him, after has got a little bit fingertips, ball went straight to the hands of short mid-off, and short mid-off fielder is not making mistake at all to taking that catch. First wicket is back into pavilion of Jai Bharat Nandawar, and 8 for the loss of 1 wicket in the over number. Second is second is in progress. So last delivery remaining in this over. So new batter is coming to the middle after the dismissal of Harris. It's Harris Junior. So one more Harris replacing Harris. The junior is back into senior is back into pavilion, and Harris Junior is coming to the middle. Short fine leg, square leg in front of and behind the square. One at short mid wicket and short mid off. One at deep long on, deep long off. Cow point and third man went for the sweep shot, deflected from the leg, went straight to the hands of short third man region. Saitu the fielder there, and the short third man. Good over, even though he considered in that boundary, but I don't think it's going to be a much run in that over. So 2 very good overs, 6 came from that over. Two gone, 8 on the board for the loss of 1 wicket. And now I think its equation is looking much tougher there, which is 8, which is deducted from 50. 8, that means 50 runs required in remaining 4 hours. 27 minutes. The fielding team have to complete their 6 overs quota. Please note that, because you are will be the loser
if you're not going to complete that over in that time, you need to bring one fielder inside the ring, especially if it is going to be a neck-to-neck match. Is going to be a big loss. So thus please keep it in mind that you have to complete 6 hours and 27 minutes. Starts with the wide. Riaz is one more experienced campaigner. Is came into attack and starts with the warm-up delivery of the afternoon. One more single in the sense it's extra runs. 8-9 on the board for the loss of 1 wicket in the over number third is in progress. Riaz bowling away from us. Right arm over the wicket, going for the drive. One more wide, the second wide of this over. Probably Riaz is the one is very experienced and very disciplined bowler. The rare occasion is bowling that line wide. Is the one who's got a experience of playing for the young friends. Very interesting to see that both the bowler and the batter, they played for the same team, young friends Rua, and both players know each other very well. So that is going to be a very good contest between these two experienced players of young friends Rua, now playing each other because they are representing for their home team. Riaz bowling away from us. Right arm over the wicket. Balls to Parvez. Parvez reaching for the delivery. It's definitely going to be one more wide. That ball is just moving towards outside and now Framtek got it. It's a little bit deviation. A lucky escape for Riaz, but unlucky here that for the Parvez has got a bat onto that. Riaz again bowling away from us. Right arm over the wicket balls. Rewan. That one set to the hands of the fielder Nazir Chirigoli, making no mistake at all. This is a huge wicket. This is a huge wicket here for KFC. The wicket of Parvez is back into pavilion. This is the result of pressure, isn't it? This is a result of pressure for any amount of experience. Sometime it's going to be a less because you are chasing a big total and you are playing against one of the best team and one of the best bowling department. And Parvez tried to hit over the top of that point fielder, but you're not really able to do that. Ball just went to the straight to the hands of short mid off and. The fielder making no mistake at all. It's a 10 for the loss of 2 wicket in the over number third in progress in fact. So not a good reply coming from Jai Bharat, as we can see that wickets are tumbling very hard to combine the runs. Riaz got a very important breakthrough. Right arm over the wicket. Bows this time, lovely shot, beautifully done, magnificent cricketing stroke, but Nevertheless, just a single because ball a little bit stopping down, and that's what I'm talking about. The direction of the wind might be the problem for that stroke to get that one get past that fielder, because ball is just slowing down because of that stroke which is played against the direction of the wind, and that's why the one of the fielder is going to reach there, and just a single for the batter. Went for the reverse stroke, going for the reverse stroke, not really getting. Oh, it definitely looks like what kind of throw is going to be for the fielder, for whom is throwing that ball. Pradeep is surprised seeing that the throw which is going over the head of him, and the batsman got opportunity to complete the single. 12 for the loss of 2 wicket in the over number third is in progress. Very slow progress here for Jai Bharat. Riaz right arm over the wicket bounce. This time rise to Napishli, but quite safely down to deep long of Chammi. He is a hero of the day, and hero of this match is there in the deep long off. Fields the ball after one bounce. Enough time for the batter to complete the single. These singles will not going to help Jai Bharat. Needed some big shot in the middle of that. Again, nice looking drive. He's so good in that stroke, isn't it? Zabir is so good in that stroke. There's no hesitation at all when you're playing that such a fantastic cricketing stroke. It's not Zabir, it's Harris Jr. who played that very good inning, very good stroke. So 3 overs completed after completion of over number 3, and chasing a total score of 58 to win this match. Struggling here in the middle, 14 for the loss of 2 wicket. Still long way to go. Another 3 overs, 18 balls, and they have to get another 44 runs to win this match, and asking run rate is 14.5 runs per over. Before the next over going to start, is a time for change in commentary box. It's over to Tamim to take over the microphone in our state language Kannada. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ.
ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. 3 ಓವರ್ ಈಗ ತಾನೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣೆ, ರನ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನೆಲ ಬುದ್ದರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14ರಲ್ಲಿದೆ. ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂದ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ತಂಡ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 58ರ ಗುರಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂದ ಅವರಿಗೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂದ ಅವರ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ತೀರ್ಪುಗಾರ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆದ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. 16ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಂಡನೆ. 6 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಷಡ್ಗವರಿತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 22ರಲ್ಲಿದೆ. 21ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 58ರ ಗುರಿ ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂದ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. 21 ಓಟಗಳಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 25ರಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡ ಹುಚ್ಚಿ ಕ್ರೀಡವೇನೆಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. 4th ಓವರ್ ಟೋಟಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು 28 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 29. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಚೆಂಡುವಿದೆ. 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. बारह गेम पर 30 रन की जीते के लिए 12 बॉल इन रिमाइनिंग 30 रन इन रिक्वायर्ड. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 12 ಪಂದಿಲ್ 30 ಬೇಡಂ. 12ಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 30. 12 ಚೆಂಡುವಿದೆ. 30 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂದ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ತಂಡ. ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂದ ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು 12ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 30. ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಅಂಕಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 29ರಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಅರಿತು ಎಸೆಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಸೆದಗಾರ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 29. 29ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 29ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 30ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಮುಖೇನ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 30ರಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 more to go. ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮುಖೇನ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 30ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 more to go.
ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ 5th ಓವರ್. ಟೋಟಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು 31 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 31. Next match between United Suratkal versus Iron Cricketers Kunjattur. To captain please immediately tossing ceremony. ಎರಡು ತಂಡದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಆಗಮಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಯಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರ್. ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟಾಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ. ಎರಡು ತಂಡದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಮೈಕ್ ಬಾಂಡ್ಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇಲ್ಲ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆವಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. 1 ವರ್ಷದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬಳಿ ಕೇಳಿ. 1 ತಿಂಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಕೇಳಿ. 1 ವಾರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕನ ಬಳಿ ಕೇಳಿ. 1 ದಿನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕೂಲಿಗಾರನ ಬಳಿ ಕೇಳಿ. 1 ಗಂಟೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಪರಸ್ಪರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಬಳಿ ಕೇಳಿ. 1 ನಿಮಿಷದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ರೈಲು ತಪ್ಪಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಬಳಿ ಕೇಳಿ. 1 ಸೆಕೆಂಡಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಪಾರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿ ಕೇಳಿ. 1 ಮಿನಿ ಸೆಕೆಂಡಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಂತಹ ಓಟಗಾರನ ಬಳಿ ಕೇಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಯದ ವಿವರಗಳು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗೌರವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕೈಗಡಿಯಾರ ನಿಮ್ಮದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 32ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು, 3ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುವಿದೆ. 26 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಷಡ್ಗ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 6 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 3 ಚೆಂಡುವಿದೆ. 20 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 3 गेम पर 20 रन की जीतने के लिए 3 बॉल इन रिमेनिंग 20 रन इन रिक्वायर्ड. 20 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ 20 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲಿದೆ 39 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಇನ್ನುಳಿದ 2 ಚೆಂಡುವಿದೆ. 19 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 2 ಚೆಂಡುವಿದೆ. 19 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 45ರಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 1 ಚೆಂಡುವಿದೆ. 13 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 13 ರನ್ ಇನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 1 ಚೆಂಡುವಿದೆ. 13 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎರಡೂ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಗೆದ್ದಂತಹ KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಮೈಕ್ ಬಾಂಡಿ ಹತ್ರ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಲೋ, ಅದೇ ರೀತಿ JD ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. JD ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಅಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. JD ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ದಿನದ ಹಾಗೂ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯಾತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ಹಾಗೂ
ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂದಾವರ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಂಥ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ತಂಡದ ಶಮಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರು ಡಯಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಜಿದ್ ಜೇರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಇವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಶಮಿ, KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ತಂಡದ ಶಮಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ JD ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಊಟ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಶಮಿ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಓರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಜಿ JD ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಇವರು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂದಾವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಗೂ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶಮೀರ್. ಇವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. JD ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 360 ಎಂದೇ ಹೆಸರನ್ನ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಓರ್ವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಚೆಂಡನ್ನು ಮೂಳೆ ಮೂಳೆಗೆ ದಾಟಿಸುವಂತ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾಜಿದ್. ಈಗ ತಾನೇ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಊರ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಾಜಿದ್ ಅವರೇ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತ ಶಮೀರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಯಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರ್. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆ ಗುಡ್ಡಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರದ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಗೋಪಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಆಗಮಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದ ತಮೀಮ್ ಮುಲ್ಲರ್ಪಟ್ನ ದ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಯಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್, ಕನ್ನಡ ಕಮೆಂಟೇಟರ್. Thank you for your inspirational words. And we just straight away moving over to the match number 6 of this tournament is now going to start between United Suratkal versus Ayan Kunjatur. And news is here from the center that the captain Ayan Kunjatur after one toss they elected to field first, and the openers of United Suratkal at the crease. First ball of the match is now coming up. पहली गेंद रिवर्स शॉट इस वक्त खेला, गेंद पहुंचे पॉइंट की दिशा में, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता है 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. इस वक्त यूनाइटेड सूरतकल के लिए 1 रन 90 लाख से नुकसान के. तो जहां तक सवाल है इस वक्त स्ट्राइकर एंड का, तो स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार सलाम. किशोर का खाता पिछले गेंद पर खुल चुका है, और गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए शमशीद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. हाथ ओवर द विकेट, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रिवर्स स्वीप करना चाहा. अंतिम क्षण में गेंद उनके बल्ले पर ठीक तरह से नहीं आई, और गेंद सीधे पहुंची फॉरवर्ड शॉट लेके पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. पहला पावर प्ले ओवर यहां पर जारी. सलाम जो कि एक बेहतर बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर, गेंद को इस वक्त मोड़ा स्क्वायर लेग की दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े. एंड मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींच चुके या नहीं देखना पड़ेगा. नाउ इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर. तो यहां पर तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है. जस्ट आई वांट टू लुक एट दिस इन द रिप्ले.
गेंद सीधे पहुंची थी शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, क्रॉस एंगल पर देखिए ये थ्रो आया, इन कम्स द थ्रो एंड दिस टाइम इट्स कुड बी टाइट, इट्स कुड बी टाइट, जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द थर्ड अंपायर डिसीजन। तो यहाँ पर देखिए गेंद को इस वक्त लगाया जा रहा है, स्टंप्सों पर लगा चुके हैं इस वक्त और बिल्स ऑफ हो चुका है और इसी के साथ ही इज आउट, ही फेल जस्ट शॉट आउट ऑफ हिज क्रीज। और यहाँ पर बेहतरीन तरीके की विकेट कीपिंग विकेट कीपर ने की और बल्लेबाज का बल्ला बैट से कुछ इंच बाहर रह गया और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है पहले रन पर, एक रन एक विकेट के नुकसान पर। सलाम आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और यूनाइटेड सूरत कल अपना पहला विकेट खो चुका है। इट्स 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट और ದಯವಿಟ್ಟು ಜೈ ಭಾರತ್ ನಂದಾವರ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯ ಅಥವಾ ನಾಯಕ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜೈ ಭಾರತ್ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯ ಅಥವಾ ನಾಯಕ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. और इस बीच नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, तो नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए शमशीद और इस बीच गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, इस वक्त यूनाइटेड सूरत कल को चाहिए एक बेहतरीन साझेदारी, एक लंबी साझेदारी, एक अच्छे स्कोर की ओर अग्रसर होने के लिए। और अगली गेंद लेकर तैयार, बाएं हाथ रौंदा विकेट, रिवर्स शॉट गेंद को खेला, नॉट क्वाइट पिंडिंग, रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 2 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। और सलाम का विकेट गिर जाने के बाद कुछ हद तक दबाव इस वक्त यूनाइटेड सूरत कल के ऊपर दिखाई देता हुआ और क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाजों को इस वक्त एक बेहतर साझेदारी के जरिए उस दबाव को कम करना है। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो शमशीद इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज किशोर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिना तो ऊपर द विकेट अपनी ओर की, अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, बाएं हाथ राउंड द विकेट, माफ कीजिए, इस बार गेंद विकेट कीपर के हाथों में पहुंच चुकी है। अपील इस वक्त जारी है, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज काफी आगे निकला है, अपील इस वक्त जारी है। अब देखना यह है कि अंपायर मोहन जो कि स्क्वायर लेग अंपायर श्रीनिकेत की ओर इस वक्त बढ़ते हुए और देखना यह है कि इस वक्त बल्ले का कोई हिस्सा गेंद पर टकराई थी या नहीं। इस बार गेंद देखिए, गेंद को स्वीप करना चाहा था, लगभग गेंद उनके कंधों पर तो टकराई है, लेकिन उससे पहले देखने वाली बात यह है कि गेंद बल्ले यानी बैट पर टकराई थी या नहीं। तो इस वक्त दोनों अंपायर से कुछ बातचीत करते हुए और बातचीत करने के बाद अंपायर अपने स्वस्थान पर इस वक्त लौटते हुए तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है। तो कैच के लिए सब इस वक्त तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है और देखना यह है कि बल्ला लगा था या नहीं, बैट लगा था या नहीं अंतिम क्षण में बल्लेबाज का। So the decision is pending and now I'm just talking about the next match. The 7th match of this tournament will be played between Team Matrix versus KFC Kannur, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ KFC Kannur ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
No doubt is the call, and the batsman survived in this delivery. No contact between the bat and ball in this delivery, and the batsman is survived. So no damage done, and the scoreboard stays at 2 for the loss of 1 wicket. और इस बीच शमशीद गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, और बाएं हाथ के बल्लेबाज किशोर सामना करने के लिए तैयार। और इस ओवर में अंतिम बार बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए, अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद, इस बार गेंद को स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहां पर पूर्ण कर चुके, और 1 रन के साथ 3 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका 1 विकेट के नुकसान पर। तो गेंदबाजी के जरिए अयान क्रिकेटर्स कुंजतूर एक बेहतर शुरुआत कर चुका है शमशीद के जरिए, और जहां तक सवाल है पहले ओवर की समाप्ति के बाद तो 3 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। 3 for the loss of 1 wicket for United Surat after being losing the toss and put to bat by Ayan's cricketer Kunjatur. They made a slower start, big start in fact. They managed to score 3 runs on the board for losing 1 wicket after completion of first over, and still in overall calculation it's going to be 5 overs remaining in their innings. और जहां तक सवाल है दूसरे ओवर का, तो देखते हैं दूसरे गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, और बाएं हाथ के बल्लेबाज किशोर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर यहाँ पर शुरू होता है, और जहां तक सवाल है बाएं हाथ के बल्लेबाज किशोर का, तो किशोर के लिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट पर ठीक सीमा रेखा के पास एक फील्डर तैनात, और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार। रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद से बल्ले को उन्होंने हटा लिया, और गेंद जाने दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, और इस बीच एक बार फिर से गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी कर स्वीप करना चाहा, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। He's got a bottom edge on that at the last moment, and because of that he's got a single for that. In fact it's a pad, no contact between the bat and ball. Leg by declared by umpire, और इस लेग बाय के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, और धर्मा गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट रिवर्स शॉट हो चुका है, और इस बीच धर्मा दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहा, स्वीप करना चाहा, चूंकि नॉट क्वाइट no contact between the bat and ball in fact, and the ball went into the hands of wicket keeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. दर्शकों की तादाद इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ बढ़ती नजर आते हुए इस मैदान पर, और दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद इस बार स्वीप किया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग से बाहर 4 रनों के लिए। ऐसा कहना पड़ेगा, he just got that one right from the middle of the bat and picked that one from the right spot. Have a look at this in the replay. और यहाँ पर गेंद को देखिए किस तरीके से स्वीप किया था, गेंद मिडल और लेग स्टंप पर आई, गेंद को स्वीप किया खूबसूरती के साथ, और बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद थे, लेकिन आखिरकार उन दौड़ने के बावजूद गेंद को रोकने में असफल, और गेंद दूर के पहुंच से बाहर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक किशोर के बल्ले से लगता हुआ, पहला आत्मविश्वास बड़ा स्ट्रोक कहना पड़ेगा यूनाइटेड सूरतकल की पारी में लग चुका है, और 2 ओवर के बाद कुछ हद तक धीमी शुरुआत के बाद संभल चुका है इस वक्त। इस चौके की बदौलत यूनाइटेड सूरतकल 9 रन जोड़ चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। 9 for the loss of 1 wicket after completion of 2 overs scored by United Suratkal, and still in overall calculation it's going to be 4 overs remaining in their innings। 4 ओवर का खेल अब बाकी उनकी पारी में, और इस बीच नए बल्लेबाज इस बीच नया ओवर प्रारंभ होता हुआ, और जहां तक सवाल है नए ओवर का, तो गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए अश्वित इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए सुलेमान, और ओवर की पहली गेंद। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिना ओवर द विकेट रिवर्स शॉट गेंद को खेलती है, हल्की से गेंद जाती हुई बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, जब तक शॉर्ट थर्ड मैन से फील्डर दौड़ कर आकर गेंद को फील्ड करे। बैकवर्ड थर्ड मैन पर बल्लेबाज के पास काफी मौका था 1 रन प्राप्त करने का, इसे 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है। 10 for the loss of 1 wicket at the start of the 3rd over in fact, और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन इस वक्त क्रीज पर मौजूद। हर गेंद के बाद फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए कप्तान अयान्स के, और इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज किशोर
सामना करने के लिए तैयार। कुछ बातचीत इस वक्त चलती हुई, स्कोर है इस वक्त 10 रन 10। तो फर्स्ट ओवर 3 runs, second over 6 runs, and now in the third over 1 run. So no wide in the second over, and the scoreboard says at 10 for the loss of 1 wicket at the start of the third over. तो अश्वित इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, और बल्लेबाज किशोर इस वक्त स्क्वायर लेग अंपायर श्रीनिकेत की ओर बढ़कर कुछ कहते हुए, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। तो इस वक्त अश्वित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए किशोर के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज किशोर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, अब वाइड इस वक्त घोषित कर चुके हैं अंपायर, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर। एक बार फिर से अश्वित गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए किशोर सामना करने के लिए तैयार, और दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहे, एक बार फिर से वाइड, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 12 रनों पर। सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए गेंदबाज लगातार 2 वाइड इस ओवर में फेंक चुके हैं, और 2 रन अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में उनके सामने वाले टीम के खाते में जुड़ चुका है, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। अश्वित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बेहतर गेंद थी, स्वीप किया खूबसूरती के साथ, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद, और फलस्वरूप एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। एक साझेदारी पार्टनरशिप निभाने की पूरी कोशिश करते हुए क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज किशोर और सुलेमान, और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो अश्वित इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार लेग स्टंप पे आते हुए गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। 15 गेंदें अब तक उनकी पारी में फेंके जा चुके हैं, 14 रन बन चुके हैं, 1 विकेट खो चुका है यूनाइटेड सूरतकल, और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन एक बार फिर से वहां पर रक्षण प्रोटेक्शन मौजूद, नॉट मोर देन सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मैच नंबर 6 जेडी बॉयज ट्रॉफी 2023 मेगा श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ इस, और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का तो अश्वित इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुलेमान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद उछालना चाह नॉट क्वाइट मिडविकेट, रन के लिए दौड़ पड़े, तेजी के साथ फॉलो थ्रू में गिर पड़े, और बल्लेबाज भी यहाँ पर गिर पड़े, शायद गेंदबाज से टकराने के। 3 इन प्रोग्रेस। दोपहर का वक्त, दिन धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ता हुआ, 3:30 इस वक्त बजते हुए, सही तरह से कहा जाए तो 3:25 बज चुके हैं, और धूप का प्रकोप अभी भी मैदान पर मौजूद है, और जहां तक सवाल है इस वक्त खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है, तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला जेडी बॉयज ने आयोजन किया। न सिर्फ क्रिकेट श्रृंखला क्रिकेट में बल्कि सोशल वर्क, सामाजिक कार्यों में भी वो अपना छाप जमा चुके हैं, कई बेहतरीन सामाजिक कार्य कर चुके हैं, सोशल वर्क कर चुके हैं, और निस्संदेह हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में भविष्य में जेडी बॉयज का भविष्य हर क्षेत्र में उज्जवल हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, और जहाँ तक सोशल वर्क के क्षेत्र में हो। तो जहाँ तक सवाल है
यहाँ पर बल्लेबाज बिल्कुल ठीक ठाक और अपनी अगली गेंद इस वक्त फेंकने के लिए तैयार। गेंदबाज अश्वित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। 16 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। दाहिने हाथ रौंदा विकेट अश्वित किशोर के लिए अपनी ओर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। 7 से 8 बार गेंद को जमीन पर टिप्पा खिलाने के बाद अंपायर को क्रॉस करते हुए दाहिने हाथ रौंदा विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को स्वीप करना चाहा विकेट कीपर चुके, और जब तक दोबारा खुद वो अपनी दाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड करे। 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 3 ओवर्स हैड बीन बॉल्ड। 3 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनकी पारी में क्या होता है। तो चौथा ओवर वहां पर शुरू होने वाला है और इससे पहले कि चौथा ओवर शुरू हो माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। So thank you very much, Gopi. So United Suratkal are searching for the right track. So far it's going a little bit slow, but they can get acceleration. 17 for the loss of 1 wicket. That's not quite understandable, isn't it? That the team which is bowling very well so far, Ion cricketers Kunjaturu, now from the commentary box, a change of bowling. Left arm, this time driven that one right in the gap. Good piece of fielding. Outstanding fielding there by the fielder. Ashwet, I think so, there in the deep backward square leg region. It's definitely going to be once it looks like the fielder will go into trying for the catch, but once he realized that it's very difficult to dive to front to take the catch, he managed to stop the boundary, isn't it? It's not so easy condition when your ball is coming to you very sharply. They need to give your 100%, and after one bounce off volley, he collected that one, returns that one, saving the boundary for his team. Shamshid, left arm, round the wicket, balls. It's going to be a delivery which is well within the reach of the batter, so that umpire rightly so, Shiniket, is just watching the ball which is well within the reach of the batter, so no chance of giving a wide, and it's a fair delivery. Shamshid again bowling away from us, bowling left arm, round the wicket, passes umpire Shiniket. This time definitely going to be a wide, because Shamshid trying for the delivery. He wanted to ball outside the line of off stump, but ball is going too much outside the line of off stump, so no hesitation for umpire Shiniket to give the wide, and with that excess Kubanamuzan to 19 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 4 in progress. Shamshid again back to his bowling mark, short run up, and balls. This time slashes, but slashes it very safely down to deep backward point region. They're coming back for the second throw, which is not good enough for wicket keeper to make the run out, because that ball is after pitched in the ground. It came into Imtiaz and very slowly, so batsman has got opportunity to complete that couple of runs. Suleiman's experienced campaigner for the side try to get some acceleration. They know exactly that first 3 overs which is not belong to the batting team. They're going very slowly, but they need to get some acceleration. They're trying for that. 21 for the loss of 1 wicket. Shamshid again balls. Oh, opportunity for the wicketkeeper behind the stump to take the catch, but ball is just leaving out of his hand. A rare occasion. Sometime the wicketkeeper like Imtiaz missing that golden opportunities. Might be the ball has got a thick edge. Whenever it's having a thick edge, ball is might be moving away from the right-hander wicketkeeper, and he just missed that opportunities. 22 for the loss of 1 wicket in the over number 4 is in progress. Shamshid again, left arm, balls left hand batter. Shamkishore wanted to sweep that one, not quite getting hold of that properly. Of course, he's a very good sweeper of the ball, but sometimes when the line is which is so difficult to sweep the ball, because Shamshid knows that Kishore is a very good sweeper of the ball, so he's not really bowling that zone, which is very easy to sweep. He bowled outside the line of off stump, so that Kishore will go into find difficult to sweep the ball neatly. 23,
without loss of any wicket. Little correction, 1 wicket. The loss of 1 wicket. Samshid again, left arm bowls, dries that one. This time, chance of run out. Unnikrishnan. It's the back and throw, but they're going for the extra run. Absolutely, this is a grabbing the opportunity, what you call. Unnikrishnan trying for the run out in the square angle. It's not easy angle for Unnikrishnan to return the ball, but field bowler little bit fails to collect the throw from Unnikrishnan Samshid, so that Kishore and Suleiman has got opportunity to get a couple of runs. With that couple of runs, cover numbers under 25 after completion of over number 4, and 25 in the sense which is 6. Little correction now. Yes. 6.25, and I'm coming back to that runs which is came from that over, 8 runs which is came from that over, because end of the over number 3 it's a 17, now it's a 25. That means 8 valuable runs came from that over of Shamshid. As compared to the last 3 overs, it is a much better over, and the third over also they got some 8 runs. That shows a little bit acceleration in each and every over. The both batters are looking for, needed to be last 2 overs remaining in their innings, and wait and see how well United Suratkal will going to get some good score here. Kishore is on strike, bowler Aju is on attack. Step that one, very fine, down to fine leg region. Fielder is so quick, very difficult to get a second. Just a single. Look at the quickness of that fielder, absolutely fantastic. Ashwit is very athletic. As far as outfield is concerned, even inside the ring also is a very good fielder, and quickly moving towards the back and denying the second from these 2 batters. Just a single, 26 on the board. Aju bowls, quicker one, faster one, beaten by the pace, and wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. Suleiman little bit questioning over the umpire Mohan Ayadi. He thought it might be a wide, but that ball is almost inside the line, and no question of calling that wide. Sometimes it is happening. When bowling round the wicket, it's very difficult to find the. This time nicely one, right in the gap, towards the deep mid wicket boundary for 4 runs. Now Suleiman is just breaking the shackle. You know exactly where to drive, where the fielder is. There is a mid wicket, there is a deep long on, but he's sending that one between that fielder. Have a look at that one. Just removing his front foot out of the line of the ball. That only because of he wanted to get much power behind the stroke. And he got that one right from the middle of the bat. Driven that one down to mid-wicket boundary for 4 runs. Much required boundary came here for United Suratkal. 30 for the loss of 1 wicket. In the over number 5 in progress. Aju. Bowling away from us. Right arm round the wicket. To Suleiman. Confident batter, wide call by umpire, rightly so. Even Imtiaz behind the stump saying that even Aju is a little bit surprised to see that umpire giving a wide, but Imtiaz saying yes, it is a wide, and the right decision. 31 on the board for the loss of 1 wicket. Aju bowls, this time better line, this time going for the single, and made it quite easily in the end. Suleiman, once it looks like he's going to struggle to reach his home, but Aju on his follow through fails to collect the ball, so batter got an opportunity to get the single. 32 for the loss of 1 wicket. So great competition is going on between these 2 teams, and they wanted to be in the next round of this prestigious JD Trophy 2023. Right arm bowls again, that ball going down the leg stump, and a wide call by umpire. 1+1, 2 more to the total. Angling this time round the wicket, going outside the line of leg stump of Kishore. 2 more to the total. With that 2 runs, Coburn moves on to 34 for the loss of 1 wicket. Just like we are talking about the acceleration which is much required. Now in this particular over, United Suratkal getting some acceleration in the form of extras and from the bat. Suleiman, oh, this time it's gone. Looks like wicketkeeper behind the stump, so excited, and is gone. Caught behind the wicket. Suleiman is back into pavilion. Absolutely, it's a thick outside edge of the bat, and the wicketkeeper so good. Have a look at that one. Oh, that was a cleanly taken. Absolutely cleanly taken. Even the Aju is lost his grip over, because I wanted to mention it's not so easy for the fast bowler after delivering the ball off on his follow through. But most of the matches we are witnessing that, and
Here is Unnikrishnan helping to remove the dust from his t-shirt. By doing that, he's taking some advantage by he beating him on his back. And that's the kind of scenario we are witnessing in international cricket. When Mohammad Sami picked up a wicket, then Ravichandran Ashwin just came to his back and twisting his ear. And that will becomes viral in international cricket, that the second test match is going on between India versus Australia. This is some funny thing which is required, isn't it? And it's a part of cricket. But too much is too bad. And within control, you can do that. Right arm balls, beautifully bowled, and again nicely bowled by the bowler. The wicket keeper, a little correction, leg by call by umpire, deflected from the leg. Productive over for United Suratkal compared to last 4 overs. This is a much better over, and with that very good over, productive over, United Suratkal managed to get 34 for the loss of 2 wickets and last over remaining in their innings. 35, little correction, 35. So run rate is exactly now 7 runs per over. The 35 on the board in the over number 5 completed. Now last over is remaining. Unnikrishnan is on action, and in front of him Anwar is a striker. Experienced campaigner Anwar, the different grip over the handle of the bat, driven nicely down to deep. It is long off. This is not a fumble, but it is not a fumble. But the bowler the fielder quite knowingly, because he wanted to make a run out, allow the batter to come to allow the batter to take the advantage of fumble so that he can make the run out. But Kishore is not interested, rightly so. He wanted to deal with that the deliveries of the final over. Unnikrishnan, right arm down the wicket, he bowls beautiful in cutter, caught and ball opportunity and missed it. Kishore looks like he's checking the stroke in last moment. Maybe there is hitting the bat and into the ground where he wanted to hit the ball, so that bat which is stuck with the ground, so that opportunity is created for the cotton ball. But Unnikrishnan not able to take the catch. He's a very good fielder, even a very good wicket keeper batter, but better fielder as well, and he just misses the opportunity. Now very interesting fine leg coming inside the ring, mid off going back to deep long off coming into extra cover, deep extra cover, deep backward score leg, deep long on the fielders there in the deep. This time again big off cutter, rightly driven in the gap. Good piece of fielding there by the Samshid, but not good enough. Unnikrishnan, he wanted to make the back and throw and back and throw, but couldn't manage to do that, and both the batters completed a couple of runs. Now, as for the rules and regulation of the cricket is concerned, fielding team taken much time, so that as for the rules, penalty is given for the bowling team. One fielder needed to be inside the ring. That means a deep backward point fielder coming inside the ring of the bowling of Unnikrishnan. Last 3 deliveries remaining in their innings. So 4 runs scored so far. Right arm went for the reverse stroke. A wide call by umpire, rightly so. That was a big wide. Unnikrishnan tried to defeat the bat after a batsman going for the reverse stroke. Wanted to ball outside and off stump, but fails to bring the ball inside the line. Again going for the big shot. Imtiaz missing it completely. Now it's called a wide. It's called a wide. 1 + 1, 2 more to the total. And scored moves on to 40 on the board for the loss of 2 wicket. 42 for the loss of 2 wicket. Unnikrishnan conceding some runs in this over. Extras will going to play the big role in the result of the match. United Suratkal now looks like they got a comfortable zone. The runs which is they wanted here, they got that. Now very interesting, fine leg inside the ring. Cow point going back to deep cow point region. Unnikrishnan round the wicket. Oh, that's a bad line. Bad line. You are not having any protection in the deep in the fine leg. Bowling that line means you are asking for trouble. One more extra. 43 important runs coming here for Team United Suratkal. This time wanted to sub that one. Appeal for leg before wicket, but ball is just going to miss a leg step, and again
They're going for the extra run. All we can see that Ayan cricketers Kunjaturu, they're just missing the momentum what they got. The last 2 overs they're conceding some runs in the form of extras. The very useful runs coming in this over. 45 on the board. Kishore is on strike. Again that's a Spectra wide. Again that ball is running down to the deep man region. They're going for the second and they got that second quite easily. One. Going for the third as well. What a running between the wicket. But the batsman is short of a crease. Wide plus 2 runs, 2 wides. Have a look at that one. Ashwit wanted to return the ball. Slipped out of his hand. And quickly the fielder batter wanted to take advantage of that one. But it's too late. And Imtiaz completed the job. 48 on the board. At one stage they're struggling to get the runs on the board. When Gopi hand over the microphone to me, that time it's a 17 after completion of over number 3. But now it's a 48 on the board. That means a 31 valuable runs which is scored. And now the new batsman in is Arif Jokate, and here is a chance of a stump out, and Arif is back into pavilion. Try to drive the ball. By doing that he is hitting the bat hard into the ground and finding himself is short of his crease, and wicketkeeper behind the stump did the rest. So Arif Jokate is the one more senior most player for the side of United Suratkal, but unfortunately got few deliveries to bat. One ball he faced, which is a beautiful delivery there for Mani Krishnan. And Arif Jokate is one more very good umpire as well. In the present is giving his best in the field of umpiring. And he's back into pavilion the very first ball. Arif Jokate is back into pavilion. And only one batter playing with a high bat lift in underarm cricket. But unfortunately we are not witnessing that high bat lift batting. The first ball itself is back into pavilion in the form of stump out. So new batsman in. Last ball of the innings of United Circle. Can they able to get the 50, the magical figure? Oni Krishnan. Bows. This time wicket keeper did the job. Stump out. Gone. That's it. 48, which is the total score of United. Ashraf is the batsman, is back into pavilion in the final delivery of the innings. Wicketkeeper behind the stump, Imtiaz did the job. And 49 going to be a target for Ayan cricketers Kunjaturu to qualify for the next round of this prestigious cricket tournament. And wait and see. And wait and see how well Ayan cricketers Kunjaturu will going to get this. ಹೌದು, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಸನರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಸೀಟನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರುವ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಇತರ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಅದು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆಸನರಾಗಿರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು, ಜೆ ಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you very much. And 49 runs required for the victory in 36 balls for Ayan cricketers Kunjaturu. Wait and see how Ayan cricketers Kunjaturu, they got a formidable batting department, no doubt at all. But I think even United Suratkal also got some good bowling department, and it's going to be a very good contest between these two teams. And we'll take a short break, and after a short break my friend Mr. Gopi will going to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you very much.
धन्यवाद सतीश. So 14 on the target for Ions cricketers. Kunjatur set by United Suratkar and batted first. 48 runs they scored in their stipulated 6 overs. At the first half of their innings, they are struggling. 17 runs on the board for losing 2 wickets. When I hand over the microphone to my friend Satish. So after that, in the next 3 overs, the second session of their innings, in the last 3 overs, they come back very well and added 31 runs in the last 3 overs, and they set a competitive target in front of United, in front of Ion cricketers Kunjatur. So 49 runs they have to score for victory for Ion's cricketers Kunjatur in 6 overs with a quadrant rate of just over 8 runs per over. That means in exactly calculation it's going to be 8.17 runs per over, and their innings now going to start. First ball of their innings is now going to start by Munna and Sachin and Kutta, the openers, and Sachin is now going to face it. The first ball of their match is now coming up. Right arm over the wicket. Here he bowls 2 for outside the off stump, and just missing out. 2 for outside the off stump missing, and the batsman got gone through for a single, and a single run added in the face of wide, and the runs are going to begin for them with that extra run. So couple of runs added to their total, 2 without loss in the first over. और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का, मुन्ना इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ उभरता विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा. अंतिम क्षण में एक्स्ट्रा विकेट गेंद थी, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. कुल मिलाकर उनकी पारी का पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर. मुन्ना अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, और कुट्टा इस वक्त सामना करते हुए पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर. और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद मुन्ना अपनी ओर की अगली गेंद फेंकने के लिए इस वक्त तैयार. दाहिना तो ओवर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा. अंतिम क्षण में गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है इस वक्त कुल मिलाकर 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. पहला ओवर प्रगति पर, और मुन्ना एक बार फिर से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए कुट्टा के लिए दाहिना तो बढ़ता विकेट. ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ गेंद को स्कूप किया. कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. और विड्थ था थोड़ा सा, और इस विड्थ को कबूल करते हुए ही जस्ट स्कूप दैट वन स्क्वायर ऑफ द विकेट इन स्टाइल, जस्ट क्लियरिंग द इनफील्ड, जस्ट टेक द एडवांटेज ऑफ द पावर प्ले एंड फाइंड्स द गैप एज वेल. और गेंद सीधे डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक कुट्टा के बल्ले से लगता हुआ, इस चौके के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के. पहला ओवर उनकी पारी का प्रगति पर. गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद रिवर्स शॉट, एक बार फिर से द सेम ट्रीटमेंट, दिस टाइम 2 स्क्वायरर, कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर कुट्टा. और इन 2 लगातार चौकों की बदौलत ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज अपने इरादों को बुलंद यहां पर कर चुके हैं. इस बार विद अ ट्विस्टेड बैट रिवर्स शॉट के जरिए गेंद को खेला था खूबसूरती के साथ इन बिटवीन पॉइंट एट द थर्ड मैन, एंड ही फाइंड्स द गैप एज वेल एंड इज गॉट अ बाउंड्री फॉर दैट. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर. तो मुन्ना इस ओवर में काफी महंगे साबित हो चुके हैं. पहले 3 गेंदों में 11 रन अब तक वो प्रदान कर चुके हैं, और इस वक्त डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर एक फील्डर को तैनात किया गया है, ये जानते हुए कि पिछले 2 गेंदों पर बल्लेबाज कुट्टा ने 2 चौका लगाया था, एक कवर पॉइंट पर, एक बैकवर्ड थर्ड मैन पर. और इस बीच मुन्ना एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद, यह गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, सफल होते हुए पूरी तरह स्टंप्स को एक्सपोज किया था, लेकिन गेंद के बल्ले पर नहीं आई. जब तक पैर पर टकराने के बाद गेंद शॉट थर्ड मैन पर फील्ड हो. 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका. 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के. जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर. 2 गेंदें अभी भी इस ओवर में बाकी. सचिन इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं. सचिन के लिए डीप मिड विकेट पर एक फील्डर मौजूद है, जबकि डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर तैनात ठीक सीमा रेखा के पास. अपनी अगली गेंद लेकर इस बीच तैयार. रिवर्स शॉट गेंद को खेला खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइजेशन करते हुए, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. तो 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के. पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर. फर्स्ट ओवर ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर, इट्स 13 विदाउट लॉस. और मुन्ना
इस ओवर में अंतिम बार कुट्टा के लिए अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्विंग किया लेकिन नॉट क्वाइट, लेकिन इनफैक्ट दिस कुड बी ट्रबल। इस बार नॉन स्ट्राइक रेट पर कोई फील्डर नहीं था, जब तक गेंद को बैकअप किया जाता कुछ इस लिमिट ऑफ क्षेत्र पर बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। अगर स्टंप्सों के अति निकट कोई फील्डर खड़ा होता तो निस्संदेह यहाँ पर रनआउट का मौका हो सकता था, लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं और एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति 14 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के आफ्टर फर्स्ट ओवर, chasing the victory target of 49 in 6 overs. Ions cricketers are made a terrific start. In fact, they managed to score 14 runs on the board after completion of first over. ಹೌದು, ಈಗಾಗಲೇ JD ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಸ್ಥಾಪಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮೆರಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಪೂಂಜರಗೋಡಿ, ಬಿರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಪುಂಜರಕೋಡಿ, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು JD ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ उदय पुजारी नहीं, जब तक काफी लंबा दौड़ लगाते हुए गेंद को अंदर की ओर हालांकि ढकेला फील्डर, हालांकि खुद सीमा रेखा से बाहर चले गए लेकिन गेंद को अंदर की ओर ढकेलने में सफल, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था यहाँ पर 3 रन पूरा करने का। तो 3 रन यहाँ पर मिल चुके हैं। गेंद को इस वक्त स्वीप किया था खूबसूरती के साथ और गेंद टॉपेज पर टकराने के बाद जब तक डीप बैकवर्ड स्क्वायर सीमा रेखा के अंदर फील्ड हो, फील्डर द्वारा बेहतर तरीके से बल्लेबाज 3 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। तो 3 रनों के साथ 19 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 19 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। गुड रिप्लाई कमिंग फ्रॉम द बैट्समैन ऑफ आयान क्रिकेटर्स कुंजतूर। जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो शफीक इस वक्त अगली गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस वक्त ऑफ स्टंप से बाहर की नहीं, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकल रही थी। वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 20 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 20 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। गुड प्रोग्रेसिंग हियर फॉर आयान क्रिकेटर्स कुंजतूर। और फिर से एक बार गेंदबाज शफीक गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट रिवर्स शॉट इस वक्त खेला, गेंद पहुंची शॉट पॉइंट पर, गेंद को इस वक्त लपक लिया गया है और इसी के साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट, द बॉल गेट्स सम एक्स्ट्रा बाउंस एट द लास्ट मोमेंट एंड गॉट स्टॉपर ऑफ द बैट। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले। और गेंद सीधे पहुंची पॉइंट फील्डर के हाथों में और इसी के साथ यह पहला विकेट गिर चुका है 20 रनों के ऊपर। इट्स 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। So Unni Krishnan, the number 3 batsman for Ayan Cricketers Kunjatur is now comes out to the middle. और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार शफीक की गेंदों का फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए, और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज शफीक इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। उन्नी कृष्णन सामना करते हुए इस वक्त फील्डिंग में जमावट इस वक्त कुछ हद तक चलती हुई। डीप एक्स्ट्रा कवर फीडर को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात किया गया है और इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर को इस वक्त डीप मिड विकेट पर भेज दिया गया है पीछे की ओर। बैकवर्ड थर्ड पैर फील्डर को इस वक्त पॉइंट पर तैनात किया जा रहा है। और अपनी अगली गेंद लेकर शफीक इस वक्त तैयार। तैनात उभरता विकेट गेंदबाजी करते हुए तैनात के बल्लेबाज उन्नी कृष्णन के लिए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट टॉप एज, लेकिन गेंद इस वक्त फाइन निकल चुकी है। बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में लंबा दौड़ लगाते हुए लेकिन गेंद को रोकने में असफल और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए।
गेंद को ढकेला था इस वक्त, लेकिन गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर जा गिरी है इस वक्त ढकेलने के बावजूद। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था। लोग दिस इन द रिप्ले, काफी लंबा दौड़ इस वक्त फील्डर लगाते हुए गेंद तक पहुंच गए थे। गेंद को उन्होंने ढकेला जरूर, लेकिन आखिरकार गेंद सीधे सीमा रेखा को पार कर चुकी थी उनके हाथों से टकराने के बाद। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त कुल मिलाकर दूसरा ओवर इस वक्त पूर्ण होने में एक गेंद अभी भी बाकी है। काफी लंबी बातचीत यहां पर चलती हुई इस वक्त यूनाइटेड सूरतकल के खिलाड़ियों के बीच में की 24 लास्ट बॉल रिमाइनिंग। इस वक्त काफी लंबी बातचीत चल रही है कि अयान्स क्रिकेटर्स कुंजतूर के बल्लेबाजों के रन के बहाव को किस तरह रोका जाए। और काफी बातचीत के बाद एक बार फिर से गेंदबाज अपने गेंदबाजी पर तैयार। शफीक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर इस वक्त तैनात। डीप मिड विकेट पर एक फील्डर जाते हुए और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर तब विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में अभी भी कुछ हद तक जमावट चलती हुई। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರಿಗೆ ಲತೀಶ್ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅವರು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಲತೀಶ್ ಅವರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಪುಂಜರಗೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಪಂಚಾಕೂಟದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಶಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಹಾಗೂ ಹೂಗಿಡವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಪೂಂಜರಗೋಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಜೆಡಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಈ ಪಂಚಾಕೂಟದ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸವಿನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. ಗೌರವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಗೌರವ ನೀಡಿದಂತ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ನೀಡುತ್ತಾ ಓವರ್ ಟು मैच। धन्यवाद प्रशांत। तो यहाँ तक सवाल है इस वक्त 28 रनों पर स्कोरबोर्ड रुक चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ पर विकेट उखाड़े गए थे लेकिन बल्लेबाज 1 रन इस बीच पूरा कर चुके हैं। वाइड +1 और स्कोरबोर्ड बढ़कर 1 रन के साथ पहुंच चुके 2 रनों के साथ पहुंच चुका 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करता हुआ अयंस क्रिकेटर्स कुंजतूर निस्संदेह कमबैक करना है तो इस वक्त एक घातक गेंदबाजी की जरूरत यूनाइटेड सूरतकल के गेंदबाजों को। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज हनीफ उन्नी कृष्णन जो कि एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं सामना करने के लिए तैयार। इस बीच ये गेंद को इस वक्त ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद फेंकी थी इस वक्त और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड किस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 29 रनों पर 20 रन और चाहिए विजय के लिए। 20 रन मोर नीडेड एंड 24 बॉल्स रिमाइनिंग इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स। 24 गेंदों में 20 रन चाहिए। इक्वेशन समीकरण आसान इस वक्त दिखाई देता हुआ अयंस के लिए। इस बीच ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, इस बार एक बार फिर से वाइड का इशारा ऑफ स्टंप से काफी बाहर की और गेंद अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त गेंदबाज तराशते हुए ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद फेंकी थी। 3 लगातार वाइड फेंक चुके हैं और 4 रन अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में इस वक्त सामने वाले टीम को प्रदान न कर चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 19 रन सिर्फ चाहिए विजय के लिए। 24 गेंदें बाकी और निस्संदेह इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा कुंजतूर आर नाउ लुकिंग राइट ऑन टॉप और अपनी अगली गेंद लेकर हनीफ इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए
दाहिना तो पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ निकाला, कवर पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो ये स्पेशलिटी, ये खासियत है उन्नी कृष्णन की। देखिए किस तरीके से फ्रंट फुट पर जाने के बाद स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त पंच किया था, स्कूप किया था, एब्सोल्युटली एक्सक्विजिट, थोड़ा सा विड्थ और इस विड्थ को कबूल करते हुए गेंद को इस वक्त डीप कवर पॉइंट स्क्वायर ऑफ द विकेट सीमा रेखा से बाहर भेजने में सफल। चौके के लिए बेहतरीन स्ट्रोक और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। सचिन का विकेट इस वक्त गिर चुका है और गेंदबाज हनीफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। उन्नी कृष्णन के लिए परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, अब गोज द फिंगर फ्रॉम अंपायर और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। बेहतर कमबैक, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद फेंकी थी, जस्ट चेंज ऑफ पेस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और यहां पर लेग बिफोर विकेट के रूप में यह विकेट यहां पर गिर चुका है। 34 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट and 30 for the loss of 2 wicket in fact, and this is the 4th over of their innings is now progressing here. Next match team matrix will takes over KFC Kumble, and because of that I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. और जहां तक सवाल है इस वक्त जहां तक नए बल्लेबाज का, तो नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ नंबर 4 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो पहली गेंद पर चौका प्रदान करने के बाद अगली गेंद पर एक बेहतर कमबैक करते हुए गेंदबाज हनीफ विकेट उखाड़ने में सफल। उन्नी कृष्णन का अब अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। निस्संदेह अगर इस मैच में वापसी करनी है तो चंद और डॉट गेंदों को उन्हें फेंकना होगा और विकेट यहां पर उखाड़े होंगे कम अंतराल में। तो फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई और 15 रन अब चाहिए विजय के लिए। ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿರುವೇನಕುಡ್ಲ ಇವರು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ನೀಡುತ್ತಾ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಪೂಜಾರಗೋಡಿ ತಿರುವೇನಕುಡ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಗೋಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವವಾಹಿನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಿಸಿದ್ರು। ಓವರ್ ಟು ಗೋಪಿ। धन्यवाद प्रशांत। तो यहाँ पर रिवर्स शॉट इस वक्त खेला था with a twisted bat down to a third man, in fact he got a couple for that और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 38 रनों पर 11 रन और चाहिए विजय के लिए। जस्ट 11 more runs they have to score for victory in remaining 19 balls in fact remaining। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त, गेंद को इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक बार फिर से रन मिलता हुआ। 39 for the loss of 2 wicket, 3 overs completed and this is an absolutely terrific progressing year now for Ayan cricketers Kunjatur। They are looking in a commanding situation, 10 runs more now they have to score for victory। मॉनिटर पर इस वक्त दिखाया जा रहा है, देखिए 10 रन बनाने 18 गेंदें बाकी है, रिक्वायर्ड रन रेट exactly 3.34 runs per over and this is going to be an easy टास्क इन फ्रंट ऑफ द बैट्समैन ऑफ अयंस कुंजतुर। जहां तक कमबैक करना है तो इस वक्त जरूरत है यूनाइटेड सूरत कल को एक घातक गेंदबाजी की और घातक गेंदबाजी से भी ज्यादा मैजिकल बॉलिंग, चमत्कारी गेंदबाजी कहना मुनासिब होगा इस वक्त। और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ शफीक का गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए, और जहां तक शफीक का सवाल है पहले ओवर में 7 रन शायद उन्होंने प्रदान किए, 12 रन उन्होंने प्रदान किए थे और इसके बावजूद कप्तान ने उन पर विश्वास रखा यूनाइटेड सूरत कल का और गेंदबाजी उन्हें सौंपी है और देखना ये है कि वो कप्तान के विश्वास को किस हद तक बरकरार रख पाते हैं इस दूसरे ओवर में। तो इस वक्त जहां तक सवाल है गण्य अतिथि जो इस वक्त पधार चुके थे यहाँ पर सम्मानित होकर इस वक्त मैदान से गुजरते हुए, एक बार फिर से हम सब अतिथियों का अभिवादन करते हैं इस श्रृंखला इस टूर्नामेंट में अपनी उपस्थिति देने के लिए। तो इस बीच फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, शफीक का गेंदबाजी यहां पर आरंभ करते हुए 18 बॉल्स लेफ्ट एंड 10 मोर रन्स नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और ओवर की पहली गेंद शफीक का दाहिना तो ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद अच्छी गेंद अंदर की ओर आती हुई सेंसिबल क्रिकेट अपनाई, बैकफुट पर गेंद को ढकेल दिया हल्के से शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, जब तक वहां पर गेंद को फील्ड करे आरिफ बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है आरिफ।
40 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद, इस बार हल्के से गेंद को एक बार फिर से सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट इस वक्त खेल दिया, हल्के से गेंद को पुश करते हुए और एक रन बल्लेबाज बटोरने में सफल। इट्स 41 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 8 मोर रन्स रिक्वायर्ड। कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है और इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये दोनों बल्लेबाज जो क्रीज पर मौजूद है इत्मीनान के साथ इस वक्त बल्लेबाजी अपनाते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में। एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 42 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 7 रन और चाहिए विजय के लिए। गेंदबाज शफीक का रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद इस वक्त पैरों पर टकराई और शायद लेग स्टंप से कुछ दूरी पर निकलते हुए अपील को नकार दिया अंपायर ने क्योंकि गेंद लाइन के बाहर टिप्पा खाई थी और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ कुल स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 43 रन पर 43 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। और शफीक इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, रिवर्स शॉट खेलना चाहा, विकेट के पर चूके और इस बीच 1 रन का इजाफा फिर से हो चुका है 44 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 5 to get now for victory and now they are heading towards to their victory. So for the next match I request the captains of Team Matrix and KFC Kumble to please report to the stage for the toss procedure with organizers. तो इस बीच गेंद को इस वक्त खेल दिया गली क्षेत्र पर 1 रन के लिए। $45 for the loss of 2 wicket, just 4 to get now and in overall calculation it is going to be still 12 balls remaining in their innings. The equation seems to be a much stiffer at this situation for ACK and now the bowler brought into the attack from the commentator box and is Sawad, the bowler is now brought into the attack और इस वक्त गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए और अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो बढ़ता विकेट लेग स्टंप से बाहर और गेंद जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में, गेंद का पीछा करते हैं फील्डर गेंद को रोकने में सफल रहे हैं और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का नो बॉल का इशारा भी हो चुका है और नो बॉल की वजह से इस वक्त फ्री हिट गेंद बल्लेबाज के लिए, 2 रन भी उनके खाते में जुड़ चुका है। अब सिर्फ 2 और रन चाहिए विजय के लिए जबकि गेंदें बाकी है 12, फ्री हिट गेंद बल्लेबाज के लिए और सवाद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस वक्त रिवर्स शॉट खेलना चाहा, ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 48 रनों पर। द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड, just a single run required for Ayan cricketers Kunjattu to register a comprehensive victory against United Surathkal. 12 balls remaining and just a single run needed for ACK और इस बीच गेंदबाज तैयार, सवाद ये गेंद इस बार चूके शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में और इसी के साथ Ayan's cricketers Kunjattur registered a comprehensive victory by 8 wickets against United Surathkal with 11 balls to spare in their innings, and with that comprehensive victory they are through to the next round of this competition. So congratulations for them, and the next match is now coming up live exclusively right in front of you between Team Matrix versus KFC Kodikal. KFC Kumble in fact will takes over Team Matrix. KFC Kumble will takes over Team Matrix in the next match, and that match is now coming up live exclusively right in front of you within a short while. Till then we are taking a short break, and right after the short break ಈಗಾಗಲೇ ನಾಣ್ಯಚಿನ್ನಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ನಾಣ್ಯಚಿನ್ನಿಗೆಯನ್ನು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಾಟವು 5 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. So next match starts 5 overs per start to be played. This is a 5 overs match, and next for the next further comments I would like to invite Mr. Tamim Mullar Patna for the next commentary in our state language, sweet language, Kannada, when the next match will going to begin within just a short while. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ KFC ಕುಂಬ್ಳೆ. ಈಗಾಗಲೇ 5 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 4 ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಜ್ಞಾಪಕ. ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ 5 overs. 4 bowlers can be used in the bowling department and it will be only 1 over power play. Thank you. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಯಾನ್ ಕುಂಜತ್ತೂರ್. ಇದರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರುವ ಪುಟ್ಟ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಅಯಾನ್ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯ ಪುಟ್ಟ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ KFC ಕುಂಬ್ಳೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರ ಮಾಲಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ 5 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ 5 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಯಾನ್ ಕುಂಜತ್ತೂರ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯ ಪುಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ ಮಾಡಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಂಗೇರ ಹೊಸಮನೆ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಪುಟ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ನಡೆದಂತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ವರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಅಯಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಂಗೇರ ಹೊಸಮನೆ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಆಟಗಾರನಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ 6 ಓವರ್ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯಕೂಟವು 5 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವೇ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ KFC ಕುಂಬ್ಳೆ. ಅದೃಷ್ಟವಾದ ನಾಣ್ಯಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ನವ ಜೋಡಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವಂತಹ ಶಮೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಮೀರ್, ಆದರೆ ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಥಿತಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಸ್ಲೀಂ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ KFC ಕುಂಬ್ಳೆ. 5 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ. ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಸ್ಲೀಂ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ದಾಟಿಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಅರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಶಮೀರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ ನೋಡಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4ರಲ್ಲಿದೆ ಶಮೀರ್.
ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭವನ್ನು ಬಗೆಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ದಾಂಡುಗಾರನ ಸ್ವರ್ಗತಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಎಂಬುದು. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆದುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ತಸ್ಲೀಂ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಬೌಂಡರಿ ವೀರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಮೀರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ದಾಟಿಕೊಂಡು ನೇರ ಶಮೀರ್ ಕಡೆಗೆ. ಕ್ರಮಬಲ್ಲದ ಎಸೆತ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. 5 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, 5 ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೇರ ಶಮೀರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭವನ್ನು ಬಗೆಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಲಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಸ್ಲೀಂ ತನ್ಕೂಟದ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 5 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಮೀರ್. ಆರಂಭಕ್ಕೆ ನವ ಜೋಡಿಗಳ KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಮೀರ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಖಾನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಎಸೆಯುವಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ತಸ್ಲೀಂ, ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಮೀರ್. ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 7ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಅದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಮುದ್ದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ, ಜಾಲ್ಮಯುತ ಆಟ, ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. 8ರಲ್ಲಿದೆ. 8 ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತಸ್ಲೀಂ ತನ್ಕೂಟದ ಪಂಚಮೇ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್. ದಂಡನ ತಿರುಗಿಸಿದರು ನೋಡಿ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8ರಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ಪರವಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಅದೃಷ್ಟವಾದ ನಾಣ್ಯಚಿಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ 8 ರನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ ನೋಡಿ. ಜಾಲಮಯುತ ಆಟ, ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಅವಲಿಗೆ ಕರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಟೋಟಲ್ ಮುಸೆಂಟು 9 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 9. 9ರಲ್ಲಿದೆ KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9ರಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡಿ, ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸುಂದರ ಆಕಾರ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಹುಲಿಯ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಲೇಬೇಕು. ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸುಂದರ ಆಕಾರ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಹುಲಿಯ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಲೇಬೇಕು. ಬದುಕು ಸುಂದರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಬದುಕು ಸುಂದರವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖವನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಮುಂದುವರಿಸಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆದುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಜಾಜ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಇಜಾಜ್ ತನ್ಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್, ಎಸೆಯುವಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಜಾಜ್. ತೀರ್ಪುಗಾರ ದಾಟಿಕೊಂಡು
ಅದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಿದ್ದಾನೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ರೈಟಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಮಯುತ ಆಟಕ್ಕೆ ಮರ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಳತೆಯಾಗುತ್ತಾ 10 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ 10ರಲ್ಲಿದೆ. ಒಬ್ಬರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಬ್ಬರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆಯುವಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಜಾಜ್. ತಂಡಕೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ KFC ಕುಂಬ್ಳೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ದಾಟಿಕೊಂಡು ನೇರ ಶಮೀರ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಜಾಲ್ಮಯುತ ಆಟಕ್ಕೆ ಮರ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 11 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ 11ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಎಸೆಯುವಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಜಾಜ್ ಆದರೆ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್. ದಂಡನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ. ದಂಡನ್ನ ತಿರುಗಿಸುವ ಮುಖೇನ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಲಿ ಓಟಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 13ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಾಲ್ಮಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಮರ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ. ದಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14ರಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಜಾಜ್ ತಂಡಕೂಟದ 5ನೇ ಚೆಂಡು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 14. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಎಸೆತಗಾರ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹತ್ರ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಲಿ ಓಟಗಳಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ ಅವಲಿ ಓಟಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಜಾಜ್ ತಂಡಕೂಟದ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು. ಆಖರಿ ಗೇಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ 1 more to go. ದಂಡನ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕಣ್ಗಳು ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲದಿರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ನೆಲಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮೀರ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ನೆಲಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ಟೋಟಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು 16 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಶಮೀರ್ ಅವರ ಜಾಗ ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ನೂತನ ಆಟಗಾರ ಶಮೀರ್ ಅವರ ಜಾಗ ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ನೂತನ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಜೀರ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ತಸ್ಲೀಂ. ನೇರ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಡೆಗೆ. ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ದಾಟಿಕೊಂಡು ನೇರ ಗುಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಪ್ರದೀಪ್ನವರ ಆಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ದ್ವಿತೀಯ ಉದ್ದರಿ ನೆಲಪಾಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ಪರವಾಗಿ 2ನೇ ಉದ್ದರಿ ನೆಲಪಾಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ನವ ಜೋಡಿಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಒಬ್ಬರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರ ಜಾಗ ತುಂಬಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ನೂತನ ಆಟಗಾರ KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ಪರವಾಗಿ. ಒಬ್ಬರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಸೆಯುವಂತೆ ಎಸೆತಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ತಸ್ಲೀಂ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಜಲ್ಮಯುತ ಆಟ ನೋಡಿ, ಜಲ್ಮಯುತ ಆಟಕ್ಕೆ ಮರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಸೇರು ಅವಲಿಗೆ ಕರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕೈ ನಂಬರ್ 1 ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲದಂತೆ ತೃತೀಯ ಉದ್ದರಿ ನೆಲಪಾಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 17ರಲ್ಲಿದೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ KFC ಕುಂಬ್ಳೆ. ಸತೀಶ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಸತೀಶ್ ಅವರ ಆಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 17ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆಯುವಂತೆ ಎಸೆದಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ತಸ್ಲೀಂ. ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ತಸ್ಲೀಂ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಾಂಡುಬಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಆಗಮನ ಕೂಡವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಫೆಬಿಟು ಆಟಗಾರರ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರೆಸಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಚಪ್ಪಾಲೆವಾದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಯಾವ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಲ್ಲದ ಒಂದು ಆಟವೇನೆಂದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 17. ದಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ ಔಟ್. ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಟಗಾರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ರಾಜ್ತಾ ಇದ್ದ ಗುರಿ ಬಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18ರಲ್ಲಿದೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 more to go. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ತಸ್ಲೀಂ. ದಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಬುದ್ಧರಿ ನೆಲಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಮಣಬೈಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. KFC ಕುಂಬ್ಳೆ ಪರವಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ಓಟದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬುದ್ಧರಿ ನೆಲಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 17ರಲ್ಲಿದೆ. ಸಾರಿ 18ರಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 more to go. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಐದು ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಗುಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 18ರಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
End of the third over, total moves down to 18 on the board, loss of 4 wicket. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಗಳಿದೆ 18 4 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಗಾರ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಮಾಡಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. Thank you very much, Tamim, for your wonderful Kannada commentary in a state language, sweet language. And this match is really going to be very interesting. And so far, KFC Kumble really struggling against disciplined bowling performance by the bowlers of Team Matrix. So far, just 18 runs which is scored, and they lost 4 valuable wickets for that 18 runs. And now remaining 3 overs, and wait to see how well Team KFC Kumble will go into bounce back here. Nazir and Saitu are the 2 batters out there in the middle, and we will see how well these 2 batters will go in to get some runs in the remaining 3 overs. 18 balls remain, little correction, 5 overs match, 12 balls remaining, and we will see how many runs they were going to score in that remaining 2 overs. From the commentary box, and Akim brought in attack, left arm balls, beautifully bowled, perfect one. Appeal for caught behind, but rather than confidence, just looks like the excitement behind the wicket because of the gather what wicketkeeper has got behind the stump. He's so excited, but not out called by umpire. Rightly so, as Akim again bowling with a short run up. Left arm round the wicket to Saitu. Saitu this time tries that one powerfully down to deep, extra coverage and protection is given in the deep. Saitu, little bit correction, is might be a little bit problem here. He's slipped out, and looks like he's very fine, even though he's lost his balance and fell down, but quickly he's recovered and got up, and he says I'm very fine, and he will go into continue. So some problem here for the players, especially for the bowlers and the batters running between the wicket is concerned. Just like mentioned earlier, the fine surface is going to be a big problem for the batters and the bowler. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಭುವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವಗೌಡ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವರು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಹಾಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಭುವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವಗೌಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಹಾಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. Thank you. They've cleaned him up, and Nazir Cherugoli is back into pavilion with the beauty of the delivery from the bowler Akim. Is looking so good in that over. Have a look at that one. Absolutely jagging back into the batter, and Nazir Cherugoli really doesn't know anything about that delivery. Have a look at that one. He's almost covered his stump, but I don't know where the ball is coming, and ball is just nipped back into the batter, and batsman's back left little bit going towards the leg stump, so that giving opportunity for the ball to hit the stump. And wicket number 5 is back into pavilion. Nazir Cherugoli is a huge wicket for Team Matrix, and they are really looking in a top now against KFC Kumble. What a fantastic bowling performance here from Hakim. Just getting inspiration from their other bowlers, bowlers like Taslim, as well as some bowlers bowled very well, and looking so good. Of course, 9 runs, which is a better over, the first over. After that, downfall starts for Team Kumble. Again, a misfield by the fielder, opportunity which is created for the run out. If it is a clean collection from the fielder, definitely it's going to be one opportunity to get the wicket. The new batsman in is Shiva. He's in non-strikers and he off the mark with a single, and Saitu will be the striker. Saitu will go into face Akim. Left arm around the wicket, bowler's back drive, not for run. One more good delivery. Absolutely fantastic piece of bowling here from Akim, not giving any chance for the batsman to get any kind of big strokes. 60 boundaries and 45 sixes already scored in this tournament. Akim, just a couple of runs in this over. Left arm ball to side drives that run again. They're going for the single. Little bit hesitation for the run. Shiva is not interested. Saitu wanted a single, but at last they managed to complete the single because of that fielder misfield by the fielder, and they completed single. 21 outstanding over there from Akim. Just the 3 runs came from that over, and 3 completed, and
as far as the rules and regulation of this cricket is concerned, that 23 minutes to be given for fielding team to complete, so that they need to complete this last over very quickly. Yes, again the bowler will go into start last over of the innings. Izam will be the bowler bowling to bowling last over. Last opportunity for KFC Kumble to get some acceleration. Driven powerfully, Watsawak put down to deep wide, is long off reason, and kick for the second, but not going for that. Rightly so, and because the fielder is in the right position. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹಾಸನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಭುವಿಶೆಟ್ಟಿ ಕಿಶೋರ್ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪೃಥ್ವಿ ಅವರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಪೃಥ್ವಿ ಅವರು ಭುವಿಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸವಿನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಹೂಗುಚ್ಛೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಪೃಥ್ವಿ ಅವರು ಭುವಿಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸವಿನೆನಪಿನ ಫಲಕ ಹಾಗೂ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೆನಪು ಹೂಗುಚ್ಚೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪೃಥ್ವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಭುವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ. Thank you very much, and welcome for Bhavit Shetty, and a very popular political leader. Again, lovely delivery ball, defeating everyone. Ball down to define like region. Fielder behind the ball, 3 fielders behind the ball, and in the meantime, the batter completed 2 valuable runs. The lucky run, but not really, is a convincing cricketing stroke. Ball just nipped back into the batter. Batter got inside edge of the batter and defeating the wicketkeeper and the fine leg fielder. The 3 fielders are going running back to save the boundary, but meantime both the batters completed that run. So 25 for the loss of 5 wickets in the over number last is in progress. Again, right arm over the wicket, ball side to drives that one right in the gap, 1 bounce over the row for 4 runs. That is the treatment which is badly required in that final over for KFC Kumble, because they didn't got enough runs aboard. Nothing wrong with the line, but Saitu little bit shuffled across the line of the delivery, swinging that one in the vacant area. 1 bounce over the row for 4 runs. So with that boundary score jumps into 29 for the loss of 5 wicket in the over number last is in progress. Nizam is getting some punishment. 8 runs already came from that over. It's going to be a very useful runs for KFC Kumble. 2 balls remaining. Another 2 very good stroke which is badly required for KFC Kumble. Again outside line of off time, going to be a wide. Wicketkeeper missed it completely. 1+1, 2 more to the total. Again that extra runs, extra deliveries. What the fantastic momentum what the team Matrix has got. They're just losing in this final over. And score runs are coming here. 31 for the loss of 5 wicket in the over number last is in progress. Again, right arm over the wicket. Wanted to sub that one down to fine leg region. Wicketkeeper missed it completely. Short fine leg fielder will go into field the ball. By call by umpire. 1 more addition. With the addition of that single, score number on to 32 for the loss of 5 wicket. Now runs looks to be a little bit satisfaction for the captain of KFC Kumble, seeing that they got some runs in this last over. The much required runs came from that over. The 11 already scored, and last ball remaining in their innings. The bowler Nizam, right arm over the wicket, balls to side, the drives it and beautifully down to deep backward square leg region. Taslim, the fieldsman there in the deep, and good fielding there in the field. It's not Taslim, it's a Sadiq, and here is a batsman is got out in the form of run out, just a single, not more than that. So very good collection and throw from the fielder, but the Veer is the batter coming back for the second. Even the misfield, the wicketkeeper couldn't manage to collect the throw, but good backup by the fielder and made a run out in the last delivery of the over. So 33, which is the total score. 34 going to be a target for Team Matrix to qualify for the next round of this prestigious cricket tournament. Meanwhile, I request Iron cricketers Kunjatur as well as Bedra friends, all the players complete the signatures as soon as possible, and I request you to complete the formalities of
tossing ceremony as well for the next match. So now it's going to be a very interesting match. So 34 is going to be a target for Team Matrix. I think the bowler did a great job to restrict the opposition team for just 33 runs. But 2 overs which is going to be very, very costly. First over which is a 9 from Taslim, and the last over which is 12 runs came from that last over, and that because of that over team KFC Kumble has got some runs here, and wait and see the reply from Team Matrix. It's going to be very interesting, and for that interesting innings of Team Matrix, I request my friend Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you so much. धन्यवाद सतीश. So for the target is 34 for Team Matrix set by KFC Kumble, and then it starts. First ball in the air and dropped at extra cover, and this time the man got a life. तो पहली गेंद को इस वक्त उछाला था और गेंद सीधे पहुंची एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में, लेकिन एक्स्ट्रा कवर फील्डर ने इस कैच को लपका नहीं, गेंद उनके हाथों से छूटी और इसी के साथ पहली गेंद पर जीवदान बल्लेबाज यहां पर प्राप्त कर चुका और एक रन यहां पर जुड़ चुका है और 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. 1 रन बिना किसी नुकसान के गेंदबाज इस वक्त तैयार. सादिक अपना खाता खोल चुके हैं और रिजवान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. फुल टॉस स्ट्राइट ऑफ द ग्राउंड, लेकिन फॉलो थ्रू में इस वक्त इस बार कैच छूट चुका है गेंदबाज द्वारा. तो दोनों बल्लेबाज अपने पहले 2 गेंदों में जीवदान प्राप्त कर चुके हैं और स्कोर इस वक्त बढ़ चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के. निस्संदेह जहां तक 33 रनों के अंदर रोक कर रखना है टीम मैट्रिक्स के सशक्त बल्लेबाजी के लाइन आपको, तो केएफसी कुंबले के गेंदबाजों को एक घातक गेंदबाजी यहां पर करनी होगी. और इस वक्त अगली गेंद लेकर गेंदबाज सईफू इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला डीप एक्स्ट्रा कवर पर. जब तक गेंद पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 3 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज सईफू इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यह गेंद ड्राइव किया और इस बार रियाज कैच छोड़ चुके हैं. तो तीसरा कैच इस ओवर में छूट चुका है और यहां पर सब कुछ ऐसा कहना पड़ेगा केएफसी कुंबले के खिलाफ में इस वक्त चलता हुआ. 3 कैचेस 1 ओवर में छोड़े गए, इस बार स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ड्रॉप्ड बाय रियाज एट मिड ऑफ. तो 3 कैचेस 1 ओवर में छोड़े गए हैं. निस्संदेह ये एक खराब शुरुआत यहां पर कहलाएगी फील्डिंग के जरिए केएफसी कुंबले के लिए. तो स्कोर बढ़कर 1 रन के साथ पहुंच चुका है, 2 रनों के साथ पहुंच चुका है.
चौके के साथ 4 रन इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के 7 विदाउट लॉस। और सैफू इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया। गेंद पहुंची डीप मिड विकेट पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के 8 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और सैफू इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद सीधे पॉइंट फील्डर के हाथों में और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। Just want you to play that was square of the wicket at the last moment, लेकिन not quite middling it। ऐसा देखिए किस तरीके से यहाँ पर हुआ था, थोड़ी सी विड्थ थी और इस गेंद को खेलना चाहा लेकिन टॉप एज पर गेंद टकराई और इस वक्त बेहतर तरीके से गेंद को लपका गया पॉइंट क्षेत्र पर फील्डर द्वारा। तो पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज सादिक और 8 रनों के योग पर पहला विकेट खो चुका है यहाँ पर टीम मैट्रिक्स। हालांकि टीम मैट्रिक्स के गेंदबाजों ने बेहतर गेंदबाजी करते हुए केएफसी कुंबले के बल्लेबाजों को सिर्फ 33 रनों पर रोक कर रखा, लेकिन उसके बाद यहां पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट खोने के बावजूद 8 रन जोड़ने में सफल हो चुका है टीम मैट्रिक्स। और इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज नया ओवर इस वक्त शुरू करते हुए परवेज नया ओवर इस वक्त शुरू करते हुए और नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर हो चुका है। तो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज परवेज की ओवर की अगली गेंद का पहली गेंद का कहना पड़ेगा और नए बल्लेबाज इस्माइल का आगमन यहां पर हो चुका है और स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए रिजवान और परवेज नया ओवर इस वक्त आरंभ करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद यह गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा पॉइंट पर गेंद पहुंची, तेजी के साथ 1 रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन यहां पर पूर्ण करते हुए 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इनफैक्ट। और फिर से गेंदबाज की ओर की अगली गेंद है, ये गेंद इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खूबसूरती के साथ गेंद को खेला डीप एक्स्ट्रा कवर पर नॉट मोर देन अ सिंगल और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर उनकी पारी का दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर एक बेहतर साझेदारी यानी पार्टनरशिप की जरूरत है टीम मैट्रिक्स को अगर उन्हें मंजिल तक पहुंचना है। तो यह गेंद चिप किया इनफील्ड क्लियर करते हुए इनटू द गैप एज वेल और गेंद इस वक्त सीमा रेखा के अंदर बेहतरीन तरीके से रोकी गई और बल्लेबाज अपना बल्ला बैट खोने के बावजूद यहां पर रन से पूरा कर चुके हैं 2 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। मैं देखना चाहूंगा किस तरीके से यहां पर गेंद को रोका गया था। गेंद को जो लॉन्ग ऑफ फील्डर थे उनकी बाईं ओर इस वक्त स्कूप किया था खूबसूरती के साथ बल्लेबाज ने और आखिरकार गेंद को इस वक्त जब तक फील्ड किया जाता बेहतर फील्डिंग के जरिए बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। तो यहाँ पर थ्रो पहुंच चुका है तो यहाँ पर अपना बल्ला खो चुके थे बल्लेबाज और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर और रिजवान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। परवेज अपनी ओर की अगली गेंद फेंकते हुए इस वक्त रिजवान के लिए कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई और आखिरकार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और ओवर की अगली गेंद लेकर परवेज इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट बॉल आउट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी द बॉल पास्ड बिटवीन द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट एंड बेल्स आर डिस्टर्ब्ड। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहता और गेंद इस वक्त उनके बल्ले को वंचित करती हुई स्टंप्सों को चीरती हुई निकल गई फाइन लेग पर। गिल्ली बेल्स ऑफ यहां पर होते हुए देखिए किस तरीके से हुआ था। हैव अ लुक एट दिस वन इन द रिप्ले। गेंद को स्वीप करना चाहता, गेंद लेग और मिडल स्टंप के बीच से निकल गई इस वक्त और बेल्स इस वक्त गिरते हुए और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है 12 रनों पर। दूसरा विकेट गिर चुका है केरला पर गेट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। तो इंतजार है इस वक्त नए बल्लेबाज का और नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए जेडी बॉयज ट्रॉफी 2023 इस मेगा श्रृंखला के अंतर्गत मैच नंबर 7 इस श्रृंखला का इस टूर्नामेंट का यहाँ पर खेला जाता हुआ और जेडी बॉयज का जहाँ तक सवाल है न सिर्फ खेलों में
न सिर्फ खेल में बल्कि समाजमुखी कार्यों में भी उन्होंने अपना छाप जमाई है, उन्होंने अपनी छाप जमाई है। और निस्संदेह यहाँ पर एक बार फिर से हम उम्मीद अपेक्षा और अपेक्षा करते हैं उनका भविष्य यहाँ पर उज्जवल हो। इस बार गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा, फॉलो थ्रू में फिसल कर गिर पड़े और इस बार दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े। तो यहाँ पर जैसा कि मैं सुबह भी फरमा चुका, पिच जो एकदम नरम है और यहाँ पर कुछ मिट्टी गिरने की वजह से खिलाड़ी यहाँ पर फिसलते हुए, खासकर गेंदबाजी के एंड पर और मिडल ऑफ द पिच, तो यहाँ पर गेंदबाज गेंद की ओर झपक पड़े थे, लेकिन अंतिम क्षण में वहां पर कुछ कंकड़ या पत्थर रहने की वजह से पिच के ऊपर वो वहां पर फिसल कर गिर पड़े और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन चुराने का। 14 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर, 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। एक गेंद अभी भी इस ओवर में बाकी, 20 रन और चाहिए, 25 गेंदे और उनकी पारी में और फेंके जाने बाकी। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट हम इस वक्त यूट्यूब पर होता हुआ किंग स्पोर्ट्स द्वारा। और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का, तो परवेज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद स्टीयर करना चाहा, बैकफुट पर जाने के बाद चूके गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त टीम मैट्रिक्स कुछ हद तक उनका तख्ता यहाँ पर भारी लगता हुआ 14 रन जोड़ चुका है 2 विकेट खोने के बावजूद, और 20 रन चाहिए बचे हुए 3 ओवर में माफ कीजिए, यानी 18 गेंदों में। और इस वक्त कमबैक करना बेहद जरूरी बन चुका है केएफसी कुंबले के गेंदबाजों को। तो काफी लंबी बातचीत यहाँ पर चलती हुई कि अगला ओवर किसको दिया जाए, बातचीत इस वक्त जारी है और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। तो इस वक्त For the next match, I request the captains of Iron Cricketers Kunjatur and Bedra Friends to please report to the stage immediately for toss. Iron Cricketers Kunjatur ಹಾಗೂ ಬೆದ್ರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕೂಡಲೇ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. So third over starts in their innings. First ball, पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, रिवर्स शॉट और बेहतर, absolutely brilliant catch taken by the point fielder. फ्लैटर वर्शन पर गेंद आई थी और गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए कुछ हद तक अपने ऊपर की ओर उछलते हुए गेंद को इस वक्त लपका। हालांकि काफी तेज रफ्तार के साथ गेंद उनकी ओर आई थी। देखिए किस तरीके से हुआ था, रिवर्स शॉट खेला था और बेहतरीन तरीके से इस कैच को लपका इस वक्त खिलाड़ी ने। परवेज फील्डर थे और यहाँ पर इस बेहतरीन कैच की बदौलत ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है, विकेट नंबर 3 गिर चुका है। इस्माइल आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और तीसरा विकेट गिर चुका है, जबकि उनकी टीम का स्कोर है 14 रन, 14 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। तो यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा यही एक सही मौका है इस वक्त केएफसी कुंबले के गेंदबाजों को कमबैक करने का। यहाँ पर वो चंद कसे हुए ओवर्स फेंकते हैं, चंद विकेटें कम अंतराल में उखाड़ते हैं, तो निस्संदेह इस मैच में वापिस वो आ सकते हैं। लेकिन मैच में वापसी करने के लिए उन्हें इस वक्त कड़ी मेहनत मुशक्कत यहाँ पर करनी पड़ेगी और डॉट गेंद इस वक्त उन्हें फेंकने होंगे। इस बीच गेंदबाज सैफू अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ डी फाइन लेग की दिशा में, 1 रन मिलेगा। फील्डर वहां पर मौजूद दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यहां पर यशस्वी पूर्ण करते हुए, इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को इस वक्त मोड़ा था खूबसूरती के साथ और डी फाइन लेग पर जब तक गेंद को सीमा रेखा के अंदर फील्डर फीड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर, 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। सैफू अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, इस वक्त सामना करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज निजाम। एक बार फिर से गेंदबाज सैफू की गेंद का सामना करने के लिए तैयार, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, चूके विकेट कीपर चूके और गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए सिर्फ बाई का इशारा अंपायर द्वारा और बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 17 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, 17 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। स्टिल 17 more runs now they have to score for victory and in overall calculation it's going to be 2.3 overs, that means 15 balls left, 15 balls 17 runs scored, 15 balls 17 runs they have to score for victory, more in fact। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रिवर्स शॉट खेलना चाहा, वाइड का इशारा और
ऑप्शन से काफी बाहर की ओर गेंद निकलते हुए और वाइड के रूप में ये रन उनके खाते में जुट चुका है। एक रन अतिरिक्त एक्स्ट्रास के रूप में उनके खाते में जुड़ता हुआ और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 18 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. Still the equal battle is now on और विजय के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है टीम मैट्रिक्स और केएफसी कुंबले के बीच में। अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाह और इस बार गेंद स्टंप्सों पर टकरा चुकी है और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। नासिर की पारी समाप्त। लगभग गेंद जमीन के सहारे आए थे, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहा, चूंकि देखिए किस तरह से यहां पर हुआ था, लगभग जमीन के सहारे गेंद आई थी, गेंद को उछालना चाहा और उनका बैक लेग थोड़ा सा उठता हुआ और गेंद उनके पिछले पैर के नीचे से होकर सीधे स्टंप्सों पर टकराई, गिल्लिया बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ नासिर का विकेट गिर चुका है और अब मैच बराबरी पर आकर रुक चुका है। 16 रन चाहिए विजय के लिए, जबकि गेंदें बाकी हैं 14। 14 balls left, 16 more runs now they have to score for victory. Still they got 6 wickets kept intact. 6 wickets they got in their hand. Number 6 batsman is now coming out to the middle for team matrix. तो नए बल्लेबाज नंबर 6 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद और सैफू की गेंद का सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ तक जमावट करते हुए इस वक्त सैफू। शाम का वक्त, धूप का प्रकोप काफी हद तक कम हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मौजूद है और इस बीच गेंदबाज सैफू अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। नए बल्लेबाज के लिए इस बार इम्प्रोवाइजेशन, गेंद को खेला इस वक्त स्क्वायर लेग की दिशा में थोड़ी सी सफल होते हुए जब तक गेंद को फील्ड किया जाता डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर 19 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। नए बल्लेबाज का आगमन इजाज है, जिन्होंने पिछले गेंद पर अपना खाता खोला। अब निजाम सामना करने के लिए तैयार सैफू की गेंद का। इस ओवर में आखिरी बार सैफू ये गेंद ड्राइव किया, बेहतर गेंद थी, गेंद की लाइन पर आते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑफ पर और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके हैं और 1 रन के साथ कुल स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर्स कंप्लीटेड, 20 रन ऑन द बोर्ड, 4 विकेट्स लॉस्ट फॉर टीम मैट्रिक्स। 2 ओवर का खेल बाकी, 14 रन चाहिए, 14 रन टू गेट फ्रॉम 2 overs एंड as far as the victory of this match is concerned, still I must say this match is now evenly poised. देखते हैं अंतिम 2 ओवर में उनकी पारी में क्या होता है और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अंग्रेजी में मैं अब सतीश को आमंत्रित करना चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you very much, Gopi. So what a fantastic match is in progress. Spectators really enjoying the game of cricket. 14 required from 12 balls. Match is evenly poised. It's going to be anybody's game. Riaz, experienced campaigner, brought it attack, just going over the top of the fielder. Ball running down to deep backward point region before the fielder from the deep yard man to run across his right to field the ball. Ample time for the batter to complete that couple of runs. That is a very important stroke which just came from the bat of Nizam, because useful couple of runs. Just going to the reverse stroke and got a bat, enough bat onto that, just go over the top of the fieldsman and got a couple of runs, very important couple of runs. 12 to get from 11 balls. Riaz right arm over wicket, swinging that one, down to deep backward score like boundary for 4 runs. What a shot there from Nizam. Outstanding cricketing stroke. Have a look at that one. Nothing wrong with the line of the delivery. He just drags that one out from the outside the line of half time. You know exactly there is no deep backward square leg. There is a deep square leg in front of square, and he just played that one in behind the square down to deep backward square leg boundary for 4 runs. Riaz again balls much imported dotted delivery here. Now still it's going to be 8 runs required for the victory in 9 balls. Riaz need to bounce back, need to come back. Bowling away from us. Right arm over the wicket to Nizam. Nizam this time. Flum. Absolutely flum in front of wicket. He just shuffled across the line of the delivery. That is a big problem. He wanted to play in a little bit across the line. Have a look at that one. The initial movement of the batsman is a big problem. His back foot is absolutely, and back foot and front foot, you can see that both the legs are right in front of a middle stump. And Arish Padil has got no hesitation to raise his finger after playing a very good innings here for
Here from Nizam for his team. He's back into Pavilion, has scored a 9 valuable runs. It's a small cameo, even though that is just 9, which is going to be very little, but he played that one in a very important time. That 9 valuable runs in just 7 balls and 1 boundary, which is really changing the complexion of this match. Now Riaz bounced back very well. After that, a boundary and a couple of runs is conceded in that over. Then he bowled 1 dotted delivery, then 1 wicket-taking delivery. Now 8 balls and 8 runs required for the victory. The new batsman just came into middle. Right, Ahmad wicket pushing it out. Oh, misfielder by the fielder. It is absolutely costly miss. This is really a costly miss, isn't it? Because the batsman almost tried to push the ball on the cover point region to pick the single. The ball went straight to the hands of fielder and misfielded. We not only misfielded and got allowed batsman to get a couple of runs. 6 required, 7 remaining. Pushing and running. Intelligent cricket here from the new batter here. Not an easy job to come and get the runs. Naushad did a great job in the last 2 deliveries to get the 3 valuable runs. And the expensive over which is comes to an end of Riaz. 9 runs came from that over, so that 5 required from last over. Team Matrix in a naked eye. They are in driver's seat of winning this match. But cricket, you can't say anything in cricket. Cricket is a game of glorious uncertainty. You can't say anything in cricket until you are getting your last run, until you are bowling your last ball. It's going to be very difficult to say in cricket. He won 5 in 6 ball. If you review the pages of the book, which is the history of cricket, you will find many examples that he won less than 5 also restricted in the last over. So that it's not that you can easily say that the chasing team will going to win this match. If the bowler will bowl 1 magical over, then I think KFC Kumble has got opportunity to win this match. But so far I think the team Matrix are looking in a driver's seat because they got 5 wickets in hand, and at the same time 1 subtle batter, 2 batters out there in the middle. Naushad and Mustafa are very young talented players. Now Chami have to show all his experience in this last over. First ball driven that one. Intelligent cricket, they're running hard looking for the second. What a good placement there by the batter. Absolutely intelligent, isn't it? He knows this. There is no mid on. If you believe me or not, there is no mid on. Once he get past the bowler on his follow through, not a big stroke, just a gentle push, and he got a couple of runs. Now 3 to get from 5 balls. Naushad, what innings is playing for his team? Under pressure, and he batted very well. 3 to get from 5 balls. Sam, batsman drives that one down to square leg region for a single. With that single, Skobar Namuzan to 32 on the board. 2 runs required, 4 balls remaining. Mustafa is a striker. He's batting on 1. 2 to get from 4 balls. Chami, round the wicket delivers. This time a tossed up delivery, but intelligent cricket again for Mustafa. Scores are level. Now just a single required for the victory. 3 balls remaining. Everyone is inside the ring to save the singles here. This test match scenario out here in the SVS cricket ground. 1 required from this time out the correction outside the line of leg stump. So that leg by call by umpire. Victory for Team Matrix by 5 wickets and 2 deliveries to spare. And a very good victory for Team Matrix against a very formidable KFC. Congratulations Team Matrix for your wonderful victory, wonderful performance against KFC. The KFC might be looking that maybe they are short of 5 to 10 runs. They are short as they are not couldn't manage to perform from the bat. Bowler tried their level best, but not quite enough to win the match. Very interesting. So now the match between Bidra Friends versus Ayan Cricketers Kunjaturu. Now it's a time to announce the man of the match.
So man of the match, which is goes to the man just came in and played a very good innings under pressure. When it's more than ball runs required, he delivered one boundary and some couple of runs. It's none other than Nizam. Nizam of Team Matrix, who judged as a man of the match because under pressure situation is release the pressure by hitting a boundary, hitting some couple of runs and takes the match away from the opposition. So that I request Nizam to come and collect your man of the match award from our chief guest. I request Bubit Shetty, the chief guest for today's match, and I request Mr. Bubit Shetty to present this man of the match award for Nizam for his excellent performance from the bat, and he bowled 1 over. He will going to get the medal as well as soft drinks. Bedra Friends won the toss. They elected to field first. So before the match will going to start, Ion Cricketers Kunjattur versus team Bedra Friends. Is going to be one more good match. Ion Friends, of course, they came from our neighboring state Kerala. Wait and see. One team which is already out of the tournament. One team which is still remaining in this tournament from Kerala state. And wait and see how well they're going to perform. It's time to change in commentary box. It's over to Gopi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो यहाँ पर मैच नंबर 8 ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ गोइंग टू बिगिन। अयान क्रिकेटर्स विल टेक्स ओवर बेद्रा फ्रेंड्स, और यहाँ पर बेद्रा फ्रेंड्स ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और उनकी पारी की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट, पहली गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को स्विंग किया, बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर रनआउट का खतरा हो सकता है। अंतिम क्षण में यहाँ पर विकेट उखाड़े गए और अंपायर ने इशारा किया है कि तृतीय अंपायर की मदद यहाँ पर ली जाए। काफी नजदीकी मामला था यहाँ पर। ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त उछालना चाहता, ठीक तरह से उछाल नहीं पाए। बेहतर फील्डिंग वहां पर, थ्रो पहुंचा, देखिए किस तरीके से, काफी ऊंचा थ्रो। और जब तक फील्डर यहाँ पर फील्डर आड़े आ चुके हैं तो देखना यह है कि विकेट चटकाए गए थे तब बल्लेबाज अपना बल्ला क्रीज पर रख चुके थे या नहीं। तो इस वक्त तृतीय अंपायर की मदद यहाँ पर ली जा रही है और खेल है जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है। I request all the players of Team Matrix please report to the stage immediately to make a sign in the official chant for the next match. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಈ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ। ಈ ಪಂದ್ಯದ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ। So no doubt is the call and everything safe for the batsman। और यहाँ पर बल्लेबाज बच चुके हैं, काफी नजदीकी मामला था लेकिन अंतिम क्षण में बल्लेबाज यहाँ पर बच चुके हैं और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। 1 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर प्रगति पर, और इस वक्त गेंदबाज तनवीर गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और सामना करने के लिए तैयार। कुट्टा
और जहां तक कुट्टा का सवाल है, पिछले मैचेस में उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था। यहां पर देखते हैं इस बार रिवर्स शॉट, इंप्रोवाइजेशन, गेंद पहुंचती हुई डीप थर्ड मैन की दिशा में, एक रन मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है इस वक्त स्टंप एंड पर, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का। तो इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का प्रगति पर। मैच नंबर 8 ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर बिटवीन बिद्रा फ्रेंड्स वर्सेस अयान क्रिकेटर्स कुंजतूर, और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। अपनी अगली गेंद तनवीर गेंदबाजी फेंकने के लिए तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, इनफैक्ट ही गेट्स इन अ सिंगल फॉर द स्ट्रोक, डीप मिड विकेट फील्डर आफ्टर इट। और इस बीच एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर, सिर्फ 3 सही गेंदें अब तक फेंकी जा चुकी है तनवीर द्वारा, एक वाइड इस ओवर में फेंक चुके हैं। अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, रिवर्स शॉट, गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, रन्स नहीं मिलेंगे, गेंद कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, और सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा, और स्कोर रुक चुका है 4 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर, तनवीर एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट स्विंग किया खूबसूरती के साथ, बैकवाला स्क्वायर लेग पर 4 रनों के लिए। ऐसा कहना पड़ा, just go on to the front foot and sweep that one well and finds the gap very well between deep mid wicket and the deep backward square leg, and because of that he's got a boundary for that. Have a look at this in the replay. किस तरीके से देखिए गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को स्विंग किया इस वक्त डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दरमियान। फील्डर वहां पर थोड़े स्क्वायर मौजूद थे और गेंद सीधे उनको वंचित करती हुई निकल के डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर चौके गिरी है। बेहतर स्ट्रोक कुट्टा के बल्ले से लगता हुआ, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर। अगली गेंद कुट्टा के लिए, रिवर्स शॉट, यहाँ पर गेंदबाज गिर गए, तो यहाँ पर फिसल कर गिर चुके हैं। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, पिच पर कुछ मिट्टी या कंकड़ आने की वजह से बल्लेबाज वहाँ पर खिलाड़ी फिसल रहे हैं पिच पर, तो यहाँ पर कोई क्षति नहीं, कोई ज़्यादा चोट नहीं आई उन्हें भाग्यवशात, और वो सुरक्षित ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 9 without loss after completion of first over. Pretty good start for Ayan cricketers. Kunjatur after being losing the toss and put it to bat by Bedra friends in the match number 8 of this tournament of JD Boys Trophy 2023. बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जा रहा है यूट्यूब पर, और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा इस स्लोगन के साथ, जेडी बॉयज बंटवाल क्रिकेट फॉर सोशल सर्विस, इस स्लोगन के साथ इस मेगा श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। डे नाइट अंडरआर्म क्रिकेट श्रृंखला आज और कल 2 दिन चलेगी। कल अंडर फ्लडलाइट्स मैचेस खेले जाएंगे, और कल देर रात को इस श्रृंखला का ग्रैंड फिनाले यहाँ पर होगा, और यहाँ पर इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन का 8वां मैच यहाँ पर प्रगति पर, और दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ। सुरजान इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए, फील्डिंग में जमावट करने के बाद सुरजान गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, सचिन सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, और ओवर की पहली गेंद सुरजान, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई स्टार्ट्स ऑफ विद वाइड, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 9 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस इन दिस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए सुरजान, दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, गेंद की लाइन पर नहीं पाई, परिवर्तन के तौर पर पिछले गेंद के मुकाबले कुछ हद तक धीमी गेंद फेंकी थी, और आखिरकार इस गेंद पर स्ट्रोक्स खेलने में सफल रहे, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर रुक चुका है इस वक्त 9 रनों पर। दूसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है, और सुरजान एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए सचिन के लिए अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस, एंड द चांस इज नाउ गॉन इन वेन। गेंद सीधे पहुंची थी मिड विकेट फील्डर के हाथों में, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को इस वक्त अपने दोनों हाथों में
लपकने में असफल और गेंद उनके हाथों से छूटती हुई और बल्लेबाज यहाँ पर जीवदान के साथ साथ 1 रन प्राप्त करते हुए 2 अंकों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है। 10 रन बिना किसी नुकसान के दूसरा ओवर प्रगति पर। सुरजान अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, केम अलोंग द कार्पेट, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद आई थी। इस गेंद पर ऑफसाइड पर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, जगह नहीं बना पाए और गेंद पहुंची बैक टू द बॉलर की दिशा में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। सुरजान एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ड्राइव किया, गेंद को मिड ऑफ की दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले के थ्रो पहुंचे और विकेट पर गेंदबाज गेंद को शाइन करे, उनका निशाना चूकता हुआ बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन ओवर थ्रो के रूप में पूर्ण होता हुआ और इन 2 ओवर थ्रो रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 12 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। शाम का वक्त लगभग 5:30 यहाँ पर बचते हुए धूप का प्रकोप काफी हद तक कम हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मौजूद। सूरज नीलाकाश तले मैदान की दाईं ओर इस वक्त नजर आता हुआ समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है। इस बीच बेहतर गेंद थी इस वक्त, गेंद को उछालना चाहता, ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहता कुट्टा ने, लेकिन गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए। प्रश्नार्थक होकर अंपायर की ओर देखा कि शायद वाइड हो सकता है, लेकिन अंपायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं। स्कोर रुक चुका है 12 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से सुरजान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ड्राइव किया, स्ट्रोक के साथ दौड़ पड़े, नजदीकी मामला, निशाना इस वक्त चूक चुका है और इस वक्त निशाना स्टंप्सों पर सही टकरा था तो निस्संदेह कुट्टा की पारी पर पर्दा गिर सकता था, लेकिन वहां पर गेंद स्टंप से कुछ दूरी पर निकलती हुई और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। तो 2 ओवर की समाप्ति, 13 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 13 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स। हैव अ लुक एट दिस वन इन द रिप्ले। गेंद को इस वक्त गेंद स्टंप्सों पर नहीं टकरा, स्टंप से कुछ दूरी पर शायद गेंदबाज का हाथ स्टंप्सों पर टकराया था और गिल्लियां ऑफ हुए थे, यहाँ पर बेल्स ऑफ हुए थे और इस वजह से बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बच चुके हैं। जस्ट मिस, आई थिंक इट्स जस्ट मिस वाइड ऑफ द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट। और 2 ओवर की समाप्ति, 13 रन बिना किसी नुकसान के। 5 रन इस ओवर में सुरजान ने प्रदान किए। एक बेहतर ओवर अगर बेहतर फ्रेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि समाप्त हो चुका है, जिसमें सिर्फ 5 रन बने हैं। और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए इस वक्त गेंदबाज तनवीर अपना दूसरा ओवर, पहले ओवर में उन्होंने 8 रन प्रदान किए थे, 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया था। अपना दूसरा ओवर शुरू करते हैं, जबकि सुरजान जिनका ओवर अभी भी समाप्त हो चुका है, 1 ओवर में 5 रन प्रदान करते हुए 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया। गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर पर स्वीपर, फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 14 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। और फिर से एक बार तनवीर गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर, और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। तनवीर दाहिना हाथ ओवर द विकेट सचिन के लिए, टॉप एज मौका, फॉलो थ्रू में और बेहतर कैच, एब्सोल्युटली ब्रिलियंटली टेकन बाय विकेट कीपर। हालांकि गेंदबाज के लिए वहां पर कैच हो सकता था, लेकिन विकेट कीपर ने कैच लेना मुनासिब समझा और आगे की ओर दौड़ते हैं। देखिए किस तरीके से गेंद को उन्होंने लपका, बेहतरीन तरीके से, ब्रिलियंटली टेकन बाय विकेट कीपर, जस्ट कमिंग टू हिज फ्रंट साइड एंड बिकॉज ऑफ दैट द फर्स्ट विकेट फॉल इन द फेस ऑफ सचिन एंड नाउ Ayan cricketers Kunjatur are now lose their first wicket. It's 14 for 1. चार गेंदे इस ओवर में बाकी और अब जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का, तो नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए उन्नी कृष्णन, एक और प्रमुख बल्लेबाज, काफी आक्रामक बल्लेबाज के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। तो तनवीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, उन्नी कृष्णन ने गेंद की परीक्षा करने के लिए गेंद की परीक्षा करने के लिए इस वक्त थोड़े से गेंद को उन्होंने मांगी और गेंद को चेक करने के बाद एक बार फिर से अपने गेंदबाज के हाथों में लौटाते हुए, और इस बीच गेंदबाज इस वक्त तैयार। तनवीर दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज उन्नी कृष्णन सामना करने के लिए तैयार। दाहिना हाथ ओवर द विकेट उन्नी कृष्णन के लिए रिवर्स शॉट हवे में, लेकिन फील्डर कोई वहां पर नहीं और शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर जब तक गेंद तक पहुंचे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 15 एक विकेट के नुकसान पर 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस इन द इनिंग्स। तनवीर एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और सामना इस वक्त करते हुए कुट्टा, और इस बीच गेंदबाज
तनवीर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, मच स्ट्रेट लाइन, came along the puck carpet, and this is a fantastic delivery ball by the bowler. No run added to the total in this delivery. डॉट बॉल बाउल्ड और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ अब तनवीर यहां पर गेंदबाजी करते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, ताइना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए कुट्टा के लिए। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद पैरों पर टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े निशाना और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। उन्नी कृष्णन की पारी समाप्त, जोखिम भरा रन चुराना चाहा और इससे पहले कि उन्नी कृष्णन नॉन स्ट्राइकर एंड से स्ट्राइकर एंड की ओर पहुंचे, सीधा थ्रो फील्डर का फेंका गया हुआ स्टम्प्सों को टकराता हुआ। यहां पर देखिए किस तरीके से हुआ था, गिल्लियां बिल्स डिस्टर्ब होते हुए थ्रो टकराने के बाद स्टम्प्सों पर और उन्नी कृष्णन अपने क्रीज से कोसों दूर इस वक्त रह गए और इस बीच एक और विकेट गिर चुका है। 15 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी, नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ, तो इस वक्त वो सामना करेंगे तनवीर की ओवर की अगली गेंद का। शाम के 5:30 इस वक्त बज चुके हैं और धूप का प्रकोप, धूप की तीव्रता काफी हद तक इस मैदान पर कम हो चुकी है और एक बेहतरीन प्रतिष्ठित फैंटास्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट जेडी बॉयज ट्रॉफी 2023 की शानदार प्रगति यहां पर होती हुई इस ढलते हुए शाम में। सूरज नंबर 5 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल फॉर अयान कुंजतूर। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को छाला और गेंद पहुंची डीप मिड विकेट पर और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 रन के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति। 3 overs completed, 16 runs on the board for losing 2 wickets. The equal battle is now continuing here. 2 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में अयान क्रिकेटर्स कुंजतूर के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। तो इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, आज अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम इन द डे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अंग्रेजी में सतीश को आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। आइए सतीश, धन्यवाद, थैंक यू। ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಿ ಮಾಡಲು ಸೈನಿಂಗ್ ಪೆಂಡಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು. Thank you very much, Gopi. It's 16 for the loss of 2 wicket. Just look at it in a screen. Absolutely fantastic view. This is a nature's beauty. You can't get better than this, isn't it? The sun really going to set, and that is a beautiful view. That we can see that sun behind that trees. It's been outstanding view. Thank you very much, King Sports cameraman, by capturing that beautiful nature beauty. So coming back to this match, 16 for the loss of 2 wicket. First ball right arm over the wicket, nicely driven down to deep backward square leg region. Not enough bat onto that from Suraj Jojo, and the batsman got enough time. They're going for the second. This is what you call the presence of mind from the batters, seeing the opportunity. The wicket keeper little bit fumble, and they're grabbing the opportunity to come back for the second. With that, a couple of runs scored, numbers on to 18 for the loss of 2 wicket. Of course, you are talking about Ayan cricketers Kunjaturu, the team which is came from a neighboring state and neighboring district, and a lot of followers, followers watching this cricket tournament was with very interestingly Ayan cricketers Kunjaturu, because some after losing one team is out of tournament, Kumble. Now they are wanted to this Kunjatur to be in the semi-final, but for that they needed to perform very well against Pedra Media. One team which is came from Mudabidri, and one team which is came from our neighboring district, and it's going to be a very good contest between these 2 teams, Ayan cricketers Kunjaturu versus team Bedra friends. This time loose delivery and batsman hammering it down to deep fine leg boundary for a 6. Absolutely taking a full advantage of that delivery. Short pitch on outside the line of leg stump, and the batsman Kutta, and just want to say thank you very much, my dear friend, for this loose delivery, because my team wants some runs here, and it just grabbing the opportunity to hitting the ball down to deep fine leg boundary for 4 runs. Ethan usually is a very good bowler, but sometimes it's happening in cricket. Again, that ball beautifully bowled. This is what you call comeback. I've already mentioned Ethan is a kind of bowler
who got a potential of bouncing back, even though that one delivery which is bowled outside the leg stump short pitch. Have a look at that one delivery. You know exactly batsman will going to repeat the same thing, and he bowled a leg cutter and fantastic piece of bowling here, hitting his leg stump. The wicket number 3 is back into pavilion. Of course, in cricket, anything can be happen. The batsman can go after you, but only the bowler who got the ability of bouncing back, they can pick the wicket very next ball. This is what you call the bouncing back. That's what's really required from the bowler. 25 for the loss of 3 wickets. It's not so easy after a batsman going for a big shot. The level of confidence always is going to be questionable from the bowler. But this time Ethan is know exactly what kind of delivery is required to bounce back, and he bowled beautifully. Ethan bowls outside the leg stump. Batsman going for the drive. White call by umpire. The new batter just came into middle. Shamshid. One more very good recognized batsman in the side of Iron Cricketers Kunjaturu. The very good knowing player in Kasaragod district. He is now facing next delivery, lofted that one, just like I mentioned about. He's a knowing player in the Kasaragod district. He never missed that ball when it's going to be off on his legs. He's very strong, and one of his strongest zone. Have a look at that one, not that much of shot, fractionally short, and Shamshed hammering it down towards a deep mid wicket boundary for a 6. 2 sixes in that over. It's definitely going to becomes a very costly here for team Bedra friends. 32 for the loss of 3 wicket. Going for the big swing of the bat. Going for the single. Directed and is gone. Shamshid is gone. And absolutely perfect throw coming from the fielder at short fine leg. They wanted to grab this opportunity. The ball just absolutely inside the line. And have a look at that fielder in the short fine leg. It's a fantastic throw and hitting the stumps. The wicket number 4, which is back into pavilion. But expensive over which is comes in end. The Ethan bowled expensive over of 16 runs, even though he picked up 2 valuable wickets. But 2 sixes which make a big difference. It makes a big impact in this particular over. 32 useful runs. Their run rate is exactly now 8 runs per over. One stage, Iron Cricketers Kunjaturu struggling to get runs on the board against a disciplined bowling performance by Bedra friends. But unfortunately, the 1 hour which has become very costly. And Iron Cricketers Kunjaturu, they are strongly back into this game. The bowler Iqbal will go into ball 5th and last over of the innings. Right arm over the wicket balls. Starts with the wide. This is the one area that all teams need to be very careful. Can't give that much of extras. Of course, in this particular the match, there is some wides which is conceded by the bowlers of Bedra friends. Again, the same line, the same decision coming from umpire Harish Padil. The bowler a little bit struggling to get his line and land Iqbal, and scoreboard numbers on to 34 on the board for the loss of 4 wicket. The need to restrict the runs, Bedra friends. Right arm over the wicket balls to Imtiaz. Again, really a bad line. 3 consecutive wide deliveries will go into create the problem here for Bedra friends when they're going to chase those runs. All extra will go into play the very important role in the result of this match. You can't do that mistake, isn't it? The Iqbal is the one who really struggling to get the line. His line bowled 3 wide deliveries. 36 for the loss of 4 wickets. One stage is struggling to get runs on the board. Wickets are tumbling. Runs are very hard to combine. But 1 over will really change the complexion of this game. For this time, a lovely delivery. Flum in front of wicket. No doubt at all. The batsman Imtiaz, little bit correction. The batsman Suraj finding himself right in front of middle stump, going for the drive against the line, and Iqbal at last he got the line and he got the wicket. Back foot right in front of mid end of stump, and no hesitation there from umpire Harish Padil to raise his finger.
Scoreboard 36 on the board. 36ಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ನ ಪತನ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 5 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. What a fantastic tournament is in progress here in the name of JD Boys Trophy 2023. That's day number 3, the first day, which is last Sunday. The first day of this cricket tournament, witnessing some fantastic performance in the local pools. The second day is also for local pools. This time nicely placed that one down to deep cover and boundary for 4. And what excellent placement there from Ashwit. Oh, what a shot. Never looks like it's going to be a boundary, but you know exactly where the fielder is. It's a really exquisite extra cover drive. Have a look at that one. Nothing much wrong with the line, but batsman just making room to play the shot and places that one nicely down to deep extra cover boundary for 4 runs. Only 4 fielders outside the circle, and very interesting. Driven that one down to mid-wicket region. And 5 fielders. One fielder I am not observed with, which is in a deep third man region for a reverse sweep. That's where there is a lot of gap is given in that cover point from third man to deep extra cover. Huge gap. That's why Ashwat is so good seeing the gap. Quite easily picked the boundary. 41 for the loss of 5 wicket. Iqbal. Alright, over the wicket balls to Imtiaz. Imtiaz swinging that one, not getting that one from the middle of the bat. Intention to get clear the boundary line down to deep backward square leg. Imtiaz so good in that stroke, slog strip shot, but not really getting that much of proper connection. 42 for the loss of 5 wicket in the over number finally is in progress. 5th time in this over, driven that one up easily but quite safely down to deep. Wide long off, Ashwath wanted a strike. Oh, this is a really, I think Ashwath is the batsman, need to go because the work which is completed in the striker's end before he's crossing, and he is the one is very near to the non-striker's wicket. The one the batsman is of course the batter one who is near to the stumps which is uprooted, that batsman will be out as per the rules and regulation of the cricket is concerned. Ashwit is very close to the non-striker's end wicket, so that umpire rightly so, Harish Padil, saying that out. That was really good number of crowds today enjoying the game of cricket in this holiday. Saturday, the weekend, but tomorrow I think it's going to be a different day. You will never get the place here to watch the cricket. I will promise you that if you want to watch this cricket tournament tomorrow, you need to grab your places morning itself, early morning itself, because you will not going to get the place here to watch the fantastic cricket in the final day of this cricket tournament. Again, nicely driven down to leg by call by umpire, little correction, the leg by call by umpire, and that's it. Over number 5 completed after completion of 5 overs. 43 is a very good score here for Iron Cricketers Kunjaturu, and that might be the very good score in this condition. 46 going to be a target for Bedra Friends, and wait and see how Bedra Friends will going to get this big total, and it's going to be very interesting. Tomorrow I have just mentioned about it's going to be a biggest day of this cricket tournament, final day of cricket tournament, where you can witness some fantastic performance because the top seeded teams from Mangalore will go into contest for the place in the final. So that's it in this innings. Before the innings of Bedra Friends will go into come and see. You can see in the picture is a beautiful view of the school ground, SVS school ground here in Bantwal, and of course it's going to be one of the most beautiful cricket ground, SVS cricket ground, which is covered with the beauty of the natures, the greeneries. We can see the grasses in the ground as well, and I think it's going to be a more interesting. Tomorrow will be the final day of the cricket tournament, and we're expecting more spectators tomorrow as well for this cricket tournament. That's it. Now it's the time to change in commentary box. It's time to ask Mr. Prashant to take over the microphone in our international language, English. It's over to Prashant Bantwal. Thank you. Thanks a lot.
Okay. Harsha and Amit, the opening pair. In between in the bowling mark, Shamshid as regular in the bowling pattern for Iron cricketers. So target is 46 the target in allotted 30 deliveries. Left-handed batsman, the combination of left hand and right hand. Harsha, who played a brilliant knock in the previous match. Oh, striking very well. Brilliant striking in between. No time for the official, Mr. Harish Patel, to get rid of that ball, and it was a single to the scoreboard. Amit at the strike, so a lot of fielding settings will be changed. Fine striking once again, Amit. Towards the offside, strong batting zone of Amit. So lots of fielding changes will be done. So 2 gone, scoreboard is just 2 on the board. Nicely swept. What a presence of mind by the fielder. As soon as the batter wanted to sweep, angling in looking at the angle of the bat, fielder himself made a chase in front of the ball. Good stop by the fielder. I think that was Kutta, the fielder, who had a better presence of mind. Aditi, ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸೈನ್ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೈನ್ ಹಾಕುವ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. So Shamshid in the bowling mark to Amit. 5th time over the wicket. It will be a run for tossing the ball from SOS High School end to right-handed batsman Amit. Going for the reverse sweep this time, and the ball ballooned in there, and it is neatly piercing the ropes for a boundary. Accurate presence of mind, looking at the pace of the delivery. Perfect timing. This time, presence of mind by the batsmen also. It is a vacant area at a deep point region. Twisted bat been producing a boundary. So with that boundary, scoreboard moves to now 7 on the board. So lot of fielding changes will be done. Now extra cover fielder been brought into the circle, and point fielder been positioned to backward point region. So Shamshid continues. Last one to go in the over. The scoreboard is 7 on the board to Amit. Wait and watch. What an excellent delivery. What an excellent delivery. Quick pace delivery. And it was just inside that of the leg side wide. So that resulted in the form of a dot ball. So over number 1 concluded. Scoreboard is 7 for no loss. And Harsha and Amit has to go a big long way and have to find some rhythm in the batting. Minimum of striking a couple of boundaries because a huge target being kept. But nothing is impossible looking at the condition of the ground unless the batsmen have to produce some good knocks. Scoreboard 7 on the board. So 41 still, sorry, that is 39 required in remaining 24 deliveries. Dharma in the bowling mark, taking the card round the wicket to left-handed batsman Harsha. Once again across, shuffles across the line. Ball had a little bit of balloon in between, fielders appealing, but it was from the bat, no signals, so it was a single to the scoreboard.
Now Amit at the striker's end to face the ball of Dharma. Taking a lot of time from high school end. Big way still to go. 8 on the board. Dharma to once again way drifting away, way down the leg stump. Extra to the scoreboard in the form of wide. Might be somewhat a juicy runs, but somewhat good strokes have to be required for better friends. When looking at the total of 46, the target, Dharma continues to Amit. Going for the cross line, big appeal, and the batsman, I think that the bowler was obstacle. Looking at the replay now, bowler himself in the bowling mark after delivering the ball was a really an obstacle for umpire and the stumps. So it was in between. So no decision from umpire. Once again, Ayana. For the team of Ayan. What a delivery, Dharma this time. A brilliant delivery. Look at the pace. Looking at the replay. This delivery after tossing the ball a lot of times with the 2 to 3 yard run up. Amit at the striker's end. Once the ball has been left from the hand of the bowler, it was a quicker pace. Oh, unfortunate. Getting the pad and after that hitting the wickets. So first wicket gone for the side of better fans in the form of Amit. Nema joining the local boy Prithvi, who has been regularly playing in his home ground in the same turf. Has to make a big cameo when looking at the target. Dharma will ball to Prithvi. Over the wicket to right-handed batsman. Once again going for the sweep shot. Oh, that has been lots happening. Lots happening, as I said. It's not one of the examples. Losing the rhythm in the run-up due to some dust being allotted in the ground, slippery zone. But lots been happened there. The fielder gathered the ball and had a shy at the non-striker's end. And it was been a direct hit. Surely there was a trouble for batsman. Sorry, that is a batter, Prithvi. But it was away from the angle of the wicket. So that was at last a single to the scoreboard. Scoreboard moves to double figure 10 on the board. Now Harsha to face the ball of Dharma. Second over in progress. Still setting the fielding according to the bowling mark. Imtiaz behind the stumps having suggestions with the cricketers of his team. 10 on the board. Once again swept the ball neatly, but this time accurate fielder is being appointed there at the backward point region. Little bit wide-ish, and batsman had a premeditated stroke of reverse striking the ball, but just a single to the scoreboard. Scoreboard moves to 12 on the board. Sorry, 11 on the board. 1 to go. Dharma to Prithviraj. Oh, that's been way down the leg stump. No doubt that's a wide call by umpire. So extra's been produced. With that extra's a little bit relief for the batting side. A first runs been provided by the opposition team. 12 on the board. Last one to go. Prithviraj at the striker's end to face the ball of Dharma. Lofted, ball in there, but finding the fielder. Disappointed as the batter struck that stroke because the ball was having air in the lack of pace and it was firmly stuck but not enough to cross the boundary. Underneath the fielder taking a safe hands. Little bit wide-ish cover fielder been appointed. Exactly the ball been traveling in the hands of the fielder. So second wicket gone for the scoreboard of 12. Over concluded. After completion of 2 overs, the scoreboard is 12 on the board after to the loss of 2 wickets.
New bowler Ashweta. And the non-strikers and Tanveer. Little bit now responsibility is higher for the left-handed batsman. Harsha has to play a good knock, a sensible knock till end of this match. Some provide boundaries. Slow and steady. Ashwin this time. Fine striking. What? Look at the ball. Just piercing the two fielders. It was left like a bullet from the trace of a bullet from a pistol. Excellent striking. Two fielders very, very close. Not a big margin between them. Nearly 10 to 15 meters. But it was firmly stuck, bisecting the two fielders. Look at, and the ball was raising like a rocket. Sheer timing and power. A little bit booster for the batting side. Scoreboard moves to 16 on the board. Harsha to face the ball of second time. Ashwit. Ashwit all been once again. Same problem being created a lot of times by the bowler in the landing zone. Light bit of slippery for the bowling. And once again the bowler slipped himself, but not a big trouble. Batsman had to gather only a single run. Scoreboard moves to now 17. Okay. Once again, drifted way away. Once again, that is 18 on the board. Losing the rhythm in the bowling mark. Once again, big appeal, but it has been landed outside the line of the bowling. So once again, single to the scoreboard. So with our single scoreboard moves to now 19 on the board. Gotan. So four time in the bowling mark. Harsha to face the ball of Dharma. Once again, brilliant, quicker delivery. No time for the batsman, have a contact with the ball from his bat. Straight away a dot ball. Once again, big stroke. That's been once again a dot ball. Now last one to go. And last one of a third over. The scoreboard is stuck on 19 on the board. One to go. What a striking! It went like a bullet! Firmly stuck. Look at the timing. This is one of the finest strokes seen in this tournament. Sheer timing, rocket-based delivery, and what a stroke. Scoreboard moves to 25 on the board. Look at that replay. You have to watch that replay lot of time, back to back. Firmly delivered with a sheer pace, little bit awkward bounce at the last moment, and the ball been hit like a football without a goalkeeper, and the ball just sailed away, and the field has been a spectator. ಈಗಾಗಲೇ JD ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ತಿರುಮಲ ದೇವಳ ಮೊಕ್ತೇಸರರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಶೆಣೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ಓರ್ವ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಹಾಗೂ ನವಶಕ್ತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಡಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ಸಂಯಮದಿಂದ ಶಾಂತಿಪೂರ್ವದಿಂದ ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸನ್ನೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಶೆಣೈ ಇವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ JD ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಶೋಕ್ ಶೆಣೈ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಾಸನವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಶೆಣೈ ಓರ್ವ ಅಪ್ಪಟ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೆರಗಿಸಿದಂಥ ಓರ್ವ ಮಹಾನ್ ಭಾವ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವಂತ ಇತ್ತಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಶೆಣೈ ಇವರನ್ನು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ವೇದಿಕೆಯ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Coming back to the match, 26 on the board. Now Harsha, who has played a brilliant 6 in the last over, last delivery, has to make same contribution. What a delivery, and it's been lifted. This has been a big tabal. The man who hit a 6 in the previous match has been a plum in front. Oh, that has been a brilliant delivery. Brilliant delivery. And the ball was just angling straight away to the stumps. Batsman tried. So now it is crucial. New man, John. Just approaching. John to the striker's end. Scoreboard is 26 on the board. Still Jamshed. Second over quota for him. Once again, Jamshed to continue to John. Brilliant delivery. Just keeping along the carpet. Batsman tried to have a contact with the bat, but a quick place delivery neatly gathered by the keeper behind the stump. Now the equation is little bit harder. 9 deliveries to go, 20 runs still to require for better friends. Nothing is impossible. Jamshed to John. Once again, left. Oh, that has been top edge. Outer edge, ballooned behind the stumps, and Imtiaz makes no mistake. He's one of the renowned keeper for the team Iron, not only Iron team, but throughout Bangalore zone, Kasaragod zone. He has been one of the senior most keepers. So now the equation is crucial. 8 deliveries to go, 20 required. New man joining is so new man at the batting zone once again could not produce any run. Once again a dot ball. What a over been commenced by Jamshed. Nishu at the striker's end. 7 to go, 20 required. Big target. Once again across the line, but was the ball away from that of the off-stump line. The ball hit the pad, no chance of any run. Over concluded after completion of 4 overs. The scoreboard is 26. Now 6 balls, 20 runs required. 6 balls, 20 runs required. First ball been dotted. First ball been dotted. Once again, drift. Okay. So, wide call by umpire. Once again, excellent delivery. Look at within that of the offline tag. Quicker place delivery. Completely disguised the batsman using the full crease in the bowling department. Round the wicket. Now it is 4 balls, 19 runs required. Once again, this time Bill's been uprooted. Sheer pace bowling. No time for the batsman to judge the stroke. And the ball in the follow through just uprooted the bails.
What a delivery in the line being bowled by the bowler Achu. Look at that, uprooting the bills of the off stump. What a bowling. New man joining at the strike, and the new batsman at the striker's end. Once again dot ball. Once again dot ball. Okay. Stump out. That's been stump out once again. Yes, looking at the replay, that is easy, easy stump out. Even Imtiaz waited for a very long time. What a strike, but very late. Big six across the line, shuffles, and the ball was offering width to the batsman on the leg side. And batsman, as soon as the stock, brilliantly for a mighty blow of 6 runs. Now it is 1 ball, 13 runs required. 1 ball, 13 runs required. So that concludes the innings. That concludes the innings. And no doubt, I request that players of Team Matrix and Iron cricketers, please immediately have your signing in the signing sheet. Team Matrix and Iron cricketers. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಘಟಕರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಂಘಟಕರ ಮೇರೆಗೆ ಅಯಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಈಜಿಂದ ನಡೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ಸಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ನ ಪಾತೆ ಇರಲಿ. ಅಂಪೈರ್ಸ್ನ ಈಗಾಗಲೇ JD ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಶೆಣೈ, ಶ್ರೀ ತಿರುಮಲ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಓರ್ವ ಅಪ್ಪಟ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ, ಈ ಹಿಂದೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ನವಶಕ್ತಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವರು ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುದತ್ ಕಾಮತ್, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2 ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬಂಗೇರ ಹೊಸಮನೆ, ಇವರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಶೆಣೈ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನೀಡಬೇಕು. ಶಾಲ್ ಹೊದಿಸಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸವಿನೆನಪಿನ ಫಲಕ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಓರ್ವ ಅಪ್ಪಟ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿ, ಓರ್ವ ಅಪ್ಪಟ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೆರಗನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ಓರ್ವ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಅಪ್ಪಟ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಶೆಣೈ ಅವರನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಅವರು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದವರು. ಇದೇ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಜೆ ಆಡುವ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಆಡಿದವರು. ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುದತ್ ಕಾಮತ್, ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಕೆಮ್ಮಟೆ ಅವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನೀಡಬೇಕು. ಗುರುದತ್ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸವಿನೆನಪಿನ ಫಲಕ ನೀಡಿ ಹೂಗುಚ್ಚೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಆಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದವರಂತೂ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಶೆಣೈ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಅವರು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಪ್ಪಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿ. ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಚಲನವಲನೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೇಗೆ ಆಡುವುದಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದಂಥ ಅವರು ಅಪ್ಪಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಶ್ರೀ ತಿರುಮಲ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತಸ್ಥರಲ್ಲೊಬ್ಬರು. ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯಸ್ಸು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಗೌರವ ನೀಡಿದಂಥ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೌರವ ಪಡೆದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಶೆಣೈ ಹಾಗೂ ಗುರುದತ್ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ JD ಬಾಯ್ಸ್ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ
ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಚರಣ್ ದಾದಾಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನ್ಲೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಮಯಗಳಿಂದ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಶ್ರಮ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಇರದೆ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಂದರತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನೋಡಲೇ ಬಹು ಚಂದ. ನಾಳೆಯ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರು ನೇತ್ರಾವತಿ ನರ್ಸರೀಸ್ ದಾಸಕೋಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶಾಸಕರು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಲಿಪಾಡಿಗುತ್ತು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್, ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮಶೇಖರ್ ಜೈನ್, ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಯಿಲಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಶ್ರೀ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿರುವೇರ್ಕುಡ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಸ್ ಸುವರ್ಣ ರೆನಾಲ್ಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುನಿಲ್ RX ಪೆರಿಂಜೆ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು, ಅಕ್ಷಯ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಸುಜಿತ್ ಜೈನ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಪ್ರೀತಮ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಚೌಟ, ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಧನುಷ್, ಸುಪ್ರೀತ್ ಆಲ್ವಾ, MB ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಶಾಫಿ, ಪ್ರಸಾದ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕರೀಂ, ಚಂದ್ರಾಸ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಸುವರ್ಣ, ಸುಲೈಮಾನ್, ಫಾರೂಕ್, ಕಿರಣ್, ಧನುಷ್ ಪುಂಜರಗೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಮಾಲ್ ಪುಂಚಮೆ, ಭುವೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಲ್ಲಮಜಾಲ್, ಭುವನೇಶ್ ಪಚಿನಡ್ಕ, ಹರೀಶ್ ಕುದನೆ, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಅಮೀನ್, ರಾಜೇಶ್ ವೈನ್ ವಗ್ಗ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಜಕ್ರಿಬೆಟ್ಟು, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ದಿನೇಶ್ ಕಾಯರ್ಮಾರ್, ಗಣೇಶ್ ಪುಂಜರಗೋಡಿ, ಮಿಥುನ್ JD ಪುಂಜರಗೋಡಿ, ಲಕ್ಷಣ್ ರಾಜ್ ಪಾಣೆಮಂಗ್ಳೂರ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಬೈರಗೌಡ, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ MRPL ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನ್ ಭಂಡಾರಿಬೆಟ್ಟು, ಸಂದೀಪ್ ದಿವ್ಯಶಕ್ತಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್, ಸುನಿಲ್ ಬಾಲಿಗಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಸ್ಕಾಂ, ಅಶ್ವಥ್ BBMP ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ನಾಸಿರ್ ಫೆನಾಮಿನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಶ್ BC ರೋಡ್, ನೇತ್ರಾವತಿ ನರ್ಸರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಟರಾಜ್ ಅಜಿಲಮಗುರು ಹಾಗೂ ಅಮೋಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರು
Aryan Associates, FT Sports, Ranju Photography, Ara Designs Locus, R. Pujita R, Principal Architect and Co-founder, Phenomen Menswear and Shoes Kaikamba, L&T Constructions Equipment, Shuta Kiran Kumar Deraje, Assistant Manager, Construction Equipment Business, Ajariti IRC Concrete Mix India Private Limited, Sequera Caterers, Shuta Anthony Sequera, Pratap Brahmarshi Earth Movers, Subbalakshmi Auditorium Benjan Padav, Shuta Bhuvanesh Pachinadka, Ajibetu Constructions, Anaga Enterprises and Electronics, Gajalakshmi Crane Services, Bishi Road, Roaring Tigers, Bishi Road, Sri Vijayalakshmi Steel House, Pushpajyoti Group, Bantwala, Divya Shakti Associates, Shuta Deepak Kotiyan. ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆನ್ಯ ದರ್ಬಾರ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದವರು ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಪ್ ಡಿ ಸುವರ್ಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಗುರುದೇವ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿಶಿ ರೋಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿದ್ದಿ ಫಾಲ್ ಸೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನಿತಿನ್ ಒಗ್ಗ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬಯಸುತ್ತಾ